लेकिन जब धूप निकली, पिच विकेट गर्म हो गई। और दोपहर के सत्र में विकास देसाई की बल्लेबाजी शाम को देखने को मिली, मुख्तार कादरी की और विकास देसाई की। क्या शानदार इनिंग खेली दोनों ने। एक बार ऐसा लगा मन में कि विकास देसाई इस मैच को, इस बड़े टोटल को पार कर रहे, चेस कर रहे, ऐसी स्थिति थी मैदान पर। लेकिन उनका आउट होना और उसके बाद एक अच्छा ओवर, अच्छी फील्डिंग और आखिरी गेंद पर मुकाबला समाप्त हुआ। बॉल आउट, और बॉल आउट में रोहन सालगांवकर, मैनफा मसनोडा, जिसने कमाल की, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और उन्होंने अपने टीम को आखिरी 4 टीमों में प्रवेश कर दिया। तो पुनाजी कलंगुटकर, संदेश ठाकुर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से।
हेलो। तो दोनों कैप्टन आ चुके हैं। पहला मैच काकोड़ा बॉयज वर्सेस आसिया क्रिकेटर्स। थैंक यू डीजे। टॉस हो रहा है और टॉस का बॉस काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम। तो टॉस और टॉस का बॉस काकोड़ा बॉयज टॉस जीत चुके हैं। 8 ओवर का मैच है। विकी क्या कर रहे हैं 8 ओवर में? बॉलिंग। 4 ओवर का 5 ओवर का टूर्नामेंट रहा, आज 8 ओवर का। क्या प्लान क्या है? आमचं प्लॅन काय ना फर्स्ट खेळात वयता तसे आम्ही खेळतले तीच लाईनअप असते आम्ही बॅटिंग पण बॉलिंग आणि जिंकपा ट्राय करतले फर्स्ट मैच। सामने वाले टीम के लिए कितने रनों पर रोकना आप पसंद करोगे? 70-65। ओके। कौन से एक दो खिलाड़ी है जिनके ऊपर काफी नजर होगी आपकी टीम की? रुपेश और रजत। बिल्कुल, थोड़ी सी निगाह आपने हटाई है मुख्तार भाई कादरी से। ठीक है। कल का दिन, उनका दिन बहुत अच्छा खेल रहा था। रुपेश, आइए रुपेश, स्वागत है आपको। बल्लेबाजी को मौका दिया है, क्या टारगेट सेट करोगे? क्योंकि अच्छा विकेट है। इस विकेट पर कल विकास देसाई और मुख्तार कादरी ने जो बल्लेबाजी की, वो देखकर ऐसा लगा कि 8 ओवर में 100 रन भी इस विकेट पर सेव नहीं है। क्या कहेंगे आप? काय काय ना 80-85 स्कोर विल बी द गुड स्कोर. आणि त्यांची 2 विकेटीज आहे, विकी आणि पुणाजी. पुन्हा जी तो हमेशा बिल्कुल बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, उसका विकेट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन और भी एक दो खिलाड़ी है, लेकिन तुम्हारी टीम के एक दो खिलाड़ी ऐसे है, कौन है जो बल्लेबाजी जिनके होनी चाहिए? एक तो आप है जो पूरे टच में अब तक नहीं, लेकिन फाइनल में लगता है कि आज बिल्कुल यादगार इनिंग होगी उनकी। क्या कहेंगे? और मुख्तार भाई और रजत. बिल्कुल बिल्कुल, रजत को डालकर एक अच्छा बल्लेबाज है। तो दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्वालिफाई पहला मुकाबला जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। हरीश काकोड़कर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 8 ओवर का मैच है, 2 ओवर पावर प्ले का खेल है, 5 गेंदबाज है। फॉर्मेट दोस्तों बिल्कुल वही है जो 5 ओवर मैच था, वही फॉर्मेट है। स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम का एक बड़ा आयोजन, स्टार बॉयज चैंपियन ट्रॉफी, और इस चैंपियन ट्रॉफी का आखिरी दिन सुपर सिक्सर, बेस्ट कैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच, एवरी मैच, ये ढेर सारी इनामें हैं इस टूर्नामेंट के साथ। और टॉस जीता है। टॉस जीतकर काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, बल्लेबाजी को मौका दिया है एशिया क्रिकेटर्स को। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा, मैच शुरू होगा, 8 ओवर का मैच, और पहले 4 ओवर के लिए आप सुनेंगे माइक्रोफोन पर एक बहुत ही जबरदस्त अंग्रेजी की मीठी आवाज, एक दमदार आवाज सर हरीश काकोड़कर के साथ।
Check. Good morning, everyone. Good morning to all the viewers and listeners. This is the last day of Curchorem Champions Trophy organized by Star Boys, and we welcome Balakrishna Odarkar here in the panel, who will be the guest, special guest for today, full day. And the owner of the vehicle is sitting next to him. This time, here goes the first ball from Goresh Nagwekar, a very good player coming all the way from Pennem. And this is going to be the top of Group A versus top of Group B match between Kakoda Boys and Asia Cricketers. So Goresh Nagwekar starts off with a dot ball. This time going for the switch hit. A reverse hit at just the start of the innings when Rupesh has got so many shots to play. Goresh is not an easy customer. He is the most paciest bowler, super pace that we have seen from this youngster. So it's not an easy customer to go for the switch hits, and he watches the batsman till the last moment, whether is there any moment in the crease. Oh, what a delivery. That's an absolutely scorcher. No chance for Rupesh to get the bat onto the ball. This is the pace that I was talking about, and he strikes off the very first over. And in comes the new batter, left-hander, Babal Zore. So in comes the left-hander, Babal Zore. So the left-hander, now the field changes for the left-hander. Babal Zore has not got a great chance because Asia cricketers, the top outstation players, have performed brilliantly, especially Mukhtar Qadri. And 8 overs format is going to be way different. This is in the air. This might be the second wicket. Nothing short here. Just lifted it in the air and catch taken. So Goresh Nagwekar is striking two big blows in the very first over, getting rid of Rupesh and now getting rid of Babal Zore. आणि योकार करता बालकृष्ण अडारकर इन द कॉमेंट्री बॉक्स. आणि आता आमकां समजलें की पिंटी बाबाक जर तर सामको जर तर कितें उलोवपा जाय खासगी जाल्यार मनसुराक आमी कॉन्टेक्ट करपा जाता. Royal entry from Mansur Mullah directly in Jaguar coming here. It's all the smiles every time. Mansur, whether he's winning the matches or losing the matches doesn't matter. Winning the hearts is more important. Great start from Gaurish.
And this time played sensibly and a good running between the wickets. I think there should be some sensible batting just because 8 overs, Kakoda Boys have very strong outstation bowlers. It's not that one player has performed. All have shared a load amongst themselves and that's the reason they are at the top of the chart. They have not lost a single match till this point of time, whereas Asia cricketers has lost one match in the group stages. And the two big blows in the very first over. Now you require to resurrect this innings. That's the reason when the bowler is in form, you don't go after him. Just play tactfully and just see him off. This time very nicely played. Very correctly played. Watching the ball and just played with soft hand down the leg side for a single. And this is the kind of sensible batting that is required from the batsman at this moment. After completion of 1 is 2 for 2. So once again now Rajat Khudalkar on strike after taking the single of the last ball of the first over. And in comes Sandesh Thakur. Well, White Sandesh not happy, maybe thinking that he is playing the switch hit, but it was a little wide, says umpire Sadgiri, just having a word with Sandesh. Rajat Khudalkar now become the more important here for Asia cricketers. He knows to play both sides. He can play on the offside, he can play on the leg side. He plays in the leather ball, so definitely he is not going to give away his wickets. That's the role at the moment for Rajat Khudalkar. And they need to see this spirit of Sandesh Thakur and Gaurish Nagwekar. Not easy customers to get runs, although this is a power play overs, but they have not got a good start. आम्ही रफिक भाई का वेलकम करता था, मामू का योकार करता था आयज ऑफ फायनल डे आणि मामू हांगा पाविल्लो आसा. ही सगळे फूल दिसाक ज्यो 4 मॅची जातल्यो ताजो आस्वाद घेवपाक बरी एक फर्स्ट मॅच हांगा जे कोण जिखता ते डायरेक्ट फायनलीक पावतले आनी दुसरे आपल्या दुसरो कोण क्वॉलिफायर 2 आसतलो ताका वेट करतले. Once again, they are doing it within singles, carpet shots at the moment, not taking any risk, understanding they have dropped 2 wickets. It's now time to just play around. And that's the tough part. When you lose 2 wickets, you tend to lose your attacking instinct. This was short ball, could have cut away. This was an opportunity asking for a wide. There was absolutely no feet movement from the batter Somesh Dulabani, who is more known for his heroics in bowling rather than batting, but they have sent him a little out of the order. Oh, absolutely no feet movement here. The feet are firmly rooted, cemented onto the ground. The score moves on to 6. They cannot allow the player like Sandesh Thakur and Gaurish Nagwekar. I can understand that they are bowling well, but you cannot allow a loose batting, not taking the singles. This time another dot ball here. So not a good start in the first 2 overs of the batting power play here for Asia cricketers. They are reeling at the moment, 6 for 2 in 2. So they have changed the batting order. They have kept their in-form batter Mukhtar Qadri a little bit lower. Maybe he feels that he needs to be batting somewhere around 5th, 6th, 7th, 8th over, where he can go after the bowlers, especially the loose bowlers, where there is going to be, compared to the top 2 bowlers that are bowling at the moment. Or maybe they might be keeping some overs of themselves for Mukhtar Qadri, the man in form.
So that's going to be the key. Surya and Mukhtar Kadri are going to be the key in this match for Asia cricketers. This time very nicely bowled and very well played, watchfully played. So Rajat is playing sensibly here. At least he's getting the singles and rotating the strike, which is more important. You should not concede too many dot balls. Even if you consider take singles and keep the scoreboard ticking along, just like how Rajat is going at the moment. 4 singles of the first 4 balls that he faced. This time that was an off spinner here, and that's subtle variations. He changes it at the last moment, the grip of the hand when he rolls the finger over the ball. Sometimes the leg cutter, sometimes the off cutter. So you got to gauge it and you got to pick it up early from the hands. If you don't pick it up from the hands, it's going to be difficult when Vicky bowls. This was a quicker one, so he's mixing it well. This is a quicker one. That's exactly very difficult sometimes, and Vicky knows how to bowl on this wicket. He has won so many awards, a highly decorated player from Curchorem, and does very well for most of the times in most of the tournament. Once again, this is a nothing shot here. He was struggling there throughout the course of the innings, Sobesh Todamani, and now the struggle ends after the downfall of his wicket. Third wicket down, and it's 7 for 3, not looking good for Asia cricketers. This time it's a full ball. So Mukhtar Kadri comes onto the wicket. So Vicky, fantastic over. This is piling pressure on more on the batters. Started well from Gaurish Nagwekar, picking 2 wickets, and he is right now at the top of the chart as far as the point ratings are concerned for the star player of the series, along with Mukhtar Kadri, who has won 3 player of the match awards yesterday in the 4 matches that Asia cricket has played. This time, just watches the ball carefully and just taps it around for a single, gets off the mark. This is going to be a good phase here. Good phase for Asia cricketers and important phase for Kakoda Boys as well. As there needs to be a partnership for Asia cricketers, and Kakoda Boys will be hoping that we have to get one of these 2 batters and get Surya quite early into this match. After 3 overs is 8 for 3. Welcome Sachin Narvekar. Sandeep Narvekar, the manager of Asia cricketers. Little late maybe. So a wonderful drive here. They need to play their shots. They cannot bog down. The problem is they started with a defensive mindset once Rupesh was back in the pavilion. And the defensive mindset is hurting them at this stage.
just because this is 8 overs, it sometimes plays into the minds of the batters because tennis ball cricketers are not used to play 8 overs format more often. That's a lovely shot. That's a lovely shot here. Up and over, and the ball finally. Oh, that's a lovely piece of fielding. This is good fielding here. Saved 2 runs for his side. Sachin Desai. Magnificent. That's the kind of effort that is required, and Kakoda Boys will be very happy with that. 2 runs saved here by Sachin. Everyone thought that he's going for 4 runs. Sometimes just because that part on the offside it's little softer, so ball doesn't go quickly across the boundaries for the fours. This time, this is better shot. This is much better shot here. This time he finds the boundary. This time he times it better than the first one. He knew that there was a long gap between the backward square leg and a short fine leg, and he picks it up easily. So little movement coming to the scoreboard in this over. 15 on the board. 7 runs coming off the first 3 balls. Ah, finally we are watching the big hit, and this is one of the biggest switch hits that we have witnessed in this tournament. Magnificent. Once again, this is in the air. Oh, this might go for 4 runs. This might go for 4 runs. He was waiting for the bounce. He should have come in front towards the ball. And this is turning out to be costly over. Good batting skills here shown by Rajat Kudarkar at the right time. And there is a better movement onto the scoreboard. It's moving upwards. They were going somewhere around 3 runs per over. And now with this magnificent batting display from Rajat Kudarkar, they are moving at 6 runs per over. This is in the air. This might be a catch. No! It falls in the gap. This is a really good batting display. He is coming across on the offside and flicking it away on the leg side for boundaries and sixes. So tactful display, and there is a little spike in this over to the scoreboard of Asia cricketers, and that will conclude over number 4. It's 29 for 3. So good start in the this 4th over. So let's see what happens in the last 4 overs, where Rajat Kudarkar has got himself going with lovely crispy shots, and it's certainly going to be the change in bowling, but change in commentary as well. Over to Ashok next, sir. तशेंच स्टार बॉयसाचे जे ऑर्गनायजर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा मातशे जे बाउंड्रीज आसा ते मातशे तुमचे वॉलंटियर्स दवरात, कारण इम्पॉर्टंट मॅचीस आसा. वॉलंटियर्स बाउंड्री रोवपाचेर आसपाक जाय. क्रुशल मॅचीस मागीर कळना समजना की रोपाक टच जालो ना, 6 गेल्या 4 गेल्या, कित्याक थोडे एंगल्स आसात ती कॅमेरान कवर जायनात. सो मातशे नोट करात आनी तुमी मातशे बाउंड्री कडेन लागीं रावात. थैंक यू हरीश सर, धन्यवाद. 4 ओवर का आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ. क्वालिफाई 1 का मुकाबला. टॉस जीता, फील्डिंग करते हुए काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी को मौका दिया. शुरुआत थोड़ी सी नाजुक हुई, लेकिन उसके बाद रजत कुडालकर एक बहुत ही बेहतरीन जो कि बल्लेबाज है, बड़े बड़ी प्रतियोगिता में संकट मोचक, और उन्हीं पर दारोमदार उनका साथ देते हुए मुख्तार कादरी. गेंदबाजी में परिवर्तन. प्रजेश उर्फ अभी की नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर. 5वें ओवर की शुरुआत. स्कोर 29, लॉस ऑफ 3 विकेट. रुपेश गावकर 0 पर, बाबल जोरे जो 0 पर, और सोमेश 2 पर. सामने स्ट्राइक पर मुख्तार कादरी. फुल टॉस गन. इस बार स्वीप किया गेंद को ऑन साइड पर. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 30 पर. टॉस के साथ कप्तान से चर्चा हुई थी, तो कप्तान ने जानकारी दी थी कि 70-75 का 80 टोटल 8 ओवर का मैच है. और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि अगर 80 रन बने
तो एक बेहतरीन मैच मैदान पर, लेकिन वहीं पर जाना पड़ेगा, एक कम से कम 75 के आसपास पहुंचना पड़ेगा आसिया क्रिकेटर्स को, क्योंकि सामने पुनाजी कालंगुटकर है, गौरेश नागवेकर है, तो ये टोटल आपके पास होना चाहिए। फिलहाल अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट हवा में, इस बार गलती कर बैठे, बिल्कुल गेंद को बिल्कुल जमीन पर रखने में असफल रहे। मिड विकेट पर एक सुंदर कैच, और रजत कुडालकर वापस, टीम को लगा एक बड़ा जोर का धक्का, चौथे विकेट का पतन, 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे थैंक यू डीजे कैंडी, डीजे धन्यवाद। 24 रन खुद के व्यक्तिगत, 3 चौके लगाए, एक छक्का लगाया रजत कुडालकर ने, और न्यू बैटर मैदान पर सूर्या गांवकर। 5 ओवर का मैच, 6 ओवर का मैच और 8 ओवर का मैच। दोस्तों फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, 2020 का मुकाबला वनडे का मैच हो और टेस्ट क्रिकेट। 8 ओवर का मैच, आपको ज्यादा समय मिलता है बल्लेबाजी के लिए, सोचने के लिए, आपका गेम प्लान बिल्कुल बदल जाता है, कप्तान की सोच अलग होती है 8 ओवर के मैच में, और उस हिसाब के साथ गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ता है, बल्लेबाजी में बदलाव करना पड़ता है। और देखना होगा सूर्या गांवकर जो लेफ्ट हैंडर बैटर, वो स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का। आते आते अल्टी पल्टी, बिल्कुल एक गलत शॉट था, मैं तो कहूंगा आते आते वहां पर बच गए निश्चित रूप से, क्योंकि फील्डर मौजूद था। शॉर्ट पाइन लेग पर, स्क्वायर लेग पर एक सिंगल, खाता जरूर खोला, एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 31 रन पर, 4 विकेट पर 31 रन। विराट तेंदुलकर हमारे साथ कॉम बॉक्स में स्कोरिंग की जानकारी, सर हरीश काकोडकर और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। सामने एक बार फिर से मुख्तार कादरी, आगे निकले, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़े शॉट के लिए निकले थे, शायद थोड़ा सा दबाव था, वो हटाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। कल शाम के बिल्कुल यादगार मुकाबले रहे, और 2 नाम कल यादगार रहे, विकास देसाई उर्फ भाऊ और मुख्तार कादरी। क्या बेहतरीन इनिंग खेली, यादगार इनिंग खेली इस टूर्नामेंट में इन 2 खिलाड़ियों ने। और इस बार स्लॉग से मिड विकेट पर हवाई फायर, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। स्लॉट में गेंद और मिड विकेट पर बिल्कुल बेहतरीन टाइमिंग, एक लाजवाब शॉट मुख्तार कादरी के बल्ले से, 6 रन 37। कट किया इस बार ऑफसाइड पर, ओ इस बार थोड़ा सा अनियमित बाउंस विकेट पर, और उस बाउंस पर चकमाका गए। ऑफ ब्रेक गेंद थी, खेलना चाहते थे लेग कटर समझकर, लेकिन अंदर आई वहां पर ऊपर जो कि थोड़ी सी हैंडल पर लगी, और एक आसान सा कैच बना। तो ये ओवर बहुत ही अच्छा रहा काकोडा बॉयज क्रिकेट टीम को, क्योंकि 2 बड़ी सफलता मिली। सेट बैटर रजत कुडालकर को आउट किया, और उसके बाद जिनके ऊपर दारोमदार थे, एक बड़ा शॉट लगाया था मिड विकेट पर, उस बल्लेबाज को वापस किया, तो और एक धक्का लगता हुआ चौथे विकेट का पतन होता हुआ, और मैदान पर सूर्या गांवकर, और सूर्या गांवकर का साथ देने के लिए न्यू बैटर और एक मैदान पर जाते हुए। जी हाँ, बल्लेबाजी है टीम के, कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे आदरणीय सर बालकृष्ण ओडारकर, जिनका यहाँ पर हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में आगमन हो चुका है। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। 37 टोटल स्कोर, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 8 रन के साथ लगभग रन बना रही है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि 25-30 रन आपके लिए बहुत जरूरी है इस मुकाबले में। बल्लेबाजी है, देखना होगा, गेंदबाजी सामने हो रही है, फील्डिंग साथ दे रही है। प्रजेश उर्फ विकी नाइक 2 बहुमूल्य सफलता अपने टीम को दिलाते हुए
और गेंद थोड़ी सी अंदर आई। मुख्तार कादरी बिल्कुल अचंभित हो गए इस अनियमित बाउंस पर, और वहीं पर सूर्या गावकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए। गेंदबाजी में परिवर्तन। गौरेश नागवेकर एक अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर तेज गेंदबाजी की आजकल चर्चा होती है तेज गेंदबाजों में, तो ये नाम है कृतेश है, गौरेश नागवेकर है, महेश भाईडकर और मैडी है, जो बड़ी तेज गेंदबाजी, सोमेश है जो इस प्रतियोगिता में खेल रहे, ये तेज गेंदबाजी बिल्कुल उनकी चर्चा होती है हमेशा। इस बीच अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार स्वीप किया, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टाइमिंग, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का, गेंद चली गई 6 रन के लिए। डीजे स्कोर आगे बढ़ा 43 रन पर, 43 लॉस ऑफ 5 विकेट। बहुत ही बेहतरीन शॉट, टाइमिंग था लाजवाब इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, सम्मानजनक खेला। बिल्कुल यही फर्क है 5 ओवर का, 6 ओवर का, 8 ओवर का। आपको अच्छी गेंदों को सम्मान देना ही पड़ेगा 8 ओवर में। और वही क्या सूर्या गावकर ने एक शॉट लगा चुका है, मालूम है अब पीछे उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं है, जो आने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो कि गेंदबाज है, जो प्रमुख बल्लेबाज थे वो आउट हो चुके हैं, जो कुछ है अपने ऊपर जो कि दारोमदार है, जिम्मेदारी है, और यही सोचकर सम्मानजनक खेला। और आगमन होता हुआ गोवा के एक्स रणजी प्लेयर सर अवधूत आमोणकर सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। आइए सर, बिल्कुल बड़े दिल से आपका स्वागत है इस स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल वक्त निकालकर इस मैदान पर आप आ चुके हैं। सर बालकृष्ण ओडारकर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। फिलहाल एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर गौरेश नागवेकर उर्फ गुंगरू, अब ओवर द विकेट, जो शुरू में राउंड द विकेट, अब ओवर द विकेट आते हुए। और इस बार कट किया गेंद को ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं, गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे थैंक यू डीजे। 47 रन पर स्कोर आगे बढ़ा 5 विकेट के नुकसान पर। 2 बड़े शॉट इस ओवर में लगा चुके, एक स्क्वायर लेग पर, एक फाइन लेग पर, सूर्या गावकर। ये बैठक शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल इस शॉट को देखकर समर्थ गावस की याद आ गई, कृष्णा सातपुते की याद आ गई। बिल्कुल ये शॉट हमेशा ये खिलाड़ी लगाते हैं। इस बार पुलर लेन की गेंद, मौका नहीं दिया गौरेश नागवेकर ने। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 47 लॉस ऑफ 5 विकेट, 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का निर्णायक खेल बाकी है। सूर्या गावकर और उनका साथ देने के लिए जियान ख्वाजा ये न्यू बल्लेबाज मैदान पर, और 2 ओवर का खेल, 47 टोटल स्कोर, 47 रन 5 विकेट पर। 2 ओवर का खेल। काकोडा बॉयज की अगर मैं बात करूंगा, इन 2 ओवर में आपको 1-2 विकेट और लेने पड़ेंगे तो दबाव बन जाएगा मैच पर। आप 65 के आसपास रोकने में सफल हो गए, 60-65 के। और अगर ऐसे क्रिकेटर्स की मैं बात करूंगा, आपको इस 12 गेंदों में 20 रन कम से कम बनाने पड़ेंगे। 20 रन बने अच्छी बात होगी, अगर 25 बने तो सोने पे सुहागा होगा। देखना होगा बॉलिंग में परिवर्तन होता हुआ। अनिकेत भाटेकर आ चुके हैं गेंदबाजी पर, और सामने जियान ख्वाजा। बिल्कुल बड़े शॉट के लिए जाने जाता है ये खिलाड़ी, लेकिन परिस्थिति जिस तरह से विपरीत है थोड़ी, लेकिन स्लॉग ओवर है, 12 गेंदों का खेल है, 4 शॉट की उम्मीद होगी अस्या क्रिकेटर्स को इस 12 गेंदों में। अनिकेत भाटेकर एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद, मौका था बल्लेबाज के लिए कट करने का, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। अंपायर ने बाहें फैला दी सर नीलेश नाइक, और वाइड बॉल के साथ 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। एक मौका जरूर था ऑफसाइड पर बड़े शॉट के लिए, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ इस बार गेंद के और बल्ले के बीच में। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, वाइड बॉल के साथ 1 रन, 48 48 रन।
और बढ़िया शॉट इस बार, सुंदर शॉट ऑफ साइड पर, लंग अप बाउंड्री पर, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं निकले दोनों बल्लेबाज। शायद सूर्या गांवकर अपने आप पर स्ट्राइक रखने में बिल्कुल पसंद कर रहे। मालूम है कि जो कुछ करना है, ज्यादा करना है, वो इस मैच में मुझे करना है, क्योंकि 10 गेंदों का खेल बाकी है और 10 गेंदों में अगर 2 भी बड़े शॉट लगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आसिया क्रिकेटर्स को देखना होगा फिलहाल क्या होता है मैदान पर। सूर्या गांवकर स्ट्राइक पर और अपने बॉलिंग बार पर अनिकेत भाटीकर। कल शाम के बॉल आउट के हीरो रोहन सालगांवकर जिनका आगमन होता हुआ, उन्हीं के साथ साहिल वाइंगनकर। आज 4 टीम बहुत ही तगड़ी टीम है इस टूर्नामेंट में। जो इस टूर्नामेंट के साथ जरूर बाहर हो चुके हैं वो भी बहुत अच्छी टीम थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे उन टीम में भी, लेकिन आखिरकार हार जीत तो दोस्तों होती ही रहती है मैदान पर। ओ मिस टाइम शॉट, क्या मौका बनेगा देखना होगा। निकले गेंद के नीचे, मिस टाइम शॉट इस बार बिल्कुल जो कि खेलना चाहते थे, लेकिन टॉप पिच पर लगा गेंद और एक मौका बना स्क्वायर लेग पर। इसके साथ सूर्या गांवकर वापस। शायद ऐसा लगा हुआ कि अब दूसरा रन लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। और क्रिकेट में दोस्तों ये होना चाहिए मैदान पर। ज्यादा भरोसा, ज्यादा अति आत्मविश्वास कई कई बार जो कि धोखा देती है। और वही बात मैदान पर, दूसरा रन था वहीं पर दूसरा रन नहीं लिया और विकेट चला गया। लेकिन ये अलग बात है, ये सोच भी अलग है कि अगर सूर्या गांवकर के बल्ले से 2 शॉट लगते तो टीम भी ठीक ठाक हो सकती थी। लेकिन फिलहाल एक अच्छा विकेट अनिकेत भाटीकर को मिली सफलता। स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 49, लॉस ऑफ 6 विकेट, 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर और न्यू बैटर मैदान पर केदार। एक चौका एक छक्का लगाया, 11 रन बनाकर आउट होकर वापस सूर्या गांवकर। और अनिकेत अगली गेंद लेकर, और बढ़िया कवर ड्राइव, एक लाजवाब शॉट, लेकिन फील्डर है तैनात डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। सिंगल के साथ आसिया क्रिकेटर्स के 50 रन जो कि पूरे हुए 6 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद इस बार, गेंद हवा में, शायद एक लंबी दौड़ लगाई, मुश्किल सा मौका था। एक रन दूसरे के लिए पलटे, थ्रो बहुत बेहतरीन, अंपायर की उंगली आसमान की ओर। और इसी के साथ 7वें विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। थोड़ा सा रुक गए पहले रन के साथ और वहीं पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग के साथ आउट होकर वापस 7वां विकेट चला गया। स्कोर बोर्ड पर टोटल 51, लॉस ऑफ 7 विकेट। डीजे हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न, अभी लेके अपनी लिस्ट उन्हें करूंगा मैं तंग। 51 रन 7 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर आने वाला। 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी है मैच का। और न्यू बैटर मैदान पर दिवेश नाइक। और इस बार फिर से हवा में, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद और बैक टू बैक और एक सफलता काकोड़ा बॉयज को मिलती हुई। 8वां विकेट। डीजे तो हो रहा है मेरा भी लगे टर्न, मम्मी पापा को बुलाना है जल्दी से मेरे साथ, माउंट मेरी के आसपास एक छोटा सा पेंट हाउस, ताकि नाश्ते से पहले ही वो कर ले पूजा पाठ। मुझे अभी जाके बापूजी ने कहा है शाबाश, सारे कागज उनके नाम, हर चीज का ले हिसाब, रोज सुबह उनके पास में करूँ अपने हाथ साफ। दिया है पर पहनते ही नहीं, सोने की वॉच लगा लगा के मैं डांट है की करवाता हूँ जांच, मुझे अवार्ड लेते दे खुशी से भर जाए उनकी आंख, मेरे नाम से ही है बुड्ढा बुड्ढी की पहचान, उन्हें सारी सारी बलाओं से करूँ मैं प्रोटेक्ट, अब नो इंश्योरेंस कॉज अब है नो अनलिमिटेड। हम लकी मुझे जीने का मिला है एक मकसद, मम्मी खुश है पापा कम होते अब अपसेट, हंसी खुशी से भरा है घर मेरा लगभग, फाइनली मैसेज पहुंचा रब तक। कभी ना कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशियों की बारिश, अब सिर्फ बारिश नहीं होती मेरी ऐसी ख्वाहिश, मेरा कोई अब शायद
थोड़ा सा ये भी धोखा आ चुका है मैदान में, क्योंकि 8 ओवर का मैच है, कहीं ऑल आउट ना हो जाए और एक दो गेंदे बाकी न रह जाए, तो ये शायद घाटे का सौदा होगा। अगर एक दो गेंदे रह गई, ऑल आउट हो गया टीम का, तो बिल्कुल मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल खराब क्रिकेट होगा। फिलहाल ऑन हैट्रिक पर अपने बॉलिंग मार पर 7 ओवर, और बिल्कुल रनआउट का जो कि एक विकेट था बीच में, 51 रन 8 विकेट पर अनिकेत भाटीकर अपने बॉलिंग मार पर। सामने न्यू बैटर संदीप मडगांवकर, उन्हीं का साथ देते हुए दिवेश नाइक और संदीप बड़गांवकर। 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी है इस मैच में, ये चालू हो जो कि चल रहा है ओवर, वो है 7वां ओवर। 51 लॉस ऑफ 8 विकेट। फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम की। और बढ़िया शॉट, इस बार सुंदर शॉट कारपेट के साथ, इस बार कवर पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई अनिकेत भाटीकर की, जिस ओवर में उनको सफलता मिली, मैच में पूरी तरह से अपने टीम को खींच लाया, वापसी की काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 52 लॉस ऑफ 8 विकेट, 52 रन 8 विकेट पर, लास्ट ओवर टू गो। छह गेंदों का खेल। शायद 80 क्रिकेटर्स आप सोचते होंगे कि 6 गेंदों में 8 रन बने तो भी अच्छी बात है, 10 बने तो भी अच्छी बात है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अगर मैं बात करूंगा तो ये 6 गेंदों में अगर 2 शॉट लगे तो ऐसे क्रिकेटर के लिए अच्छी बात होगी। और सामने काकोड़ा बॉयज की सोच होगी, अब नहीं मौका देंगे हम ज्यादा। और इस बार उड़ाया गेंद को, लंघन पर फील्डर, और ओवर पिच गेंद पर एक आसान सा मौका बना, सफलता मिली। 90 विकेट का जो चर्चा हो रही थी कि ऑल आउट का धोखा आ चुका है, क्योंकि 5 गेंदों का खेल बाकी है और 5 गेंदों में विकेट बचे सिर्फ आखिरी जोड़ी मैदान पर। डीजे थैंक यू डीजे। आखिरी जोड़ी मैदान पर गेंदबाजी पर अमित सैयद। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट जिस खिलाड़ी ने चटकाए, जिस गेंदबाज ने, फुल टॉस गेंद, लेकिन बल्ले पे लगी, बाद में पैरों पे लगी, भीतरी किनारा लेते हुए अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 52 पर। 52 लॉस ऑफ 9 विकेट। और सामने गेंद को ड्राइव किया, इस बार कैच का मौका बना था, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। गेंद सामने लुढ़कती हुई फील्ड होती हुई ऑफ साइड पर डीप कवर पॉइंट, एक लॉन्ग अप, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। छोटी गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। क्या गेंदबाजी की स्लॉग ओवर में। जो 7वां ओवर था सिर्फ 5 रन बने। 8वां ओवर और टॉपेज लगा, गेंद विकेट कीपर के पीछे, एक सिंगल बन गया, तो पहला रन बनता हुआ ये स्लॉग ओवर में, आखिरी ओवर में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ा 53 पर। और इनिंग की स्पेल की समाप्ति की ओर अमित सैयद, लास्ट बॉल टू गो। टॉस जीता काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया ऐसे क्रिकेटर्स को। 8वां ओवर और 8वें ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। और इस बार दूर से खेलाएगा अपर कट का शॉट, लेकिन फील्डर है मौजूद एक्स्ट्रा कवर पर, एक आराम के साथ कैच को पकड़ा। पूरी टीम ऑल आउट हो गई आखिरी गेंद पर। और इसी के साथ पहले 8 ओवर का खेल, टोटल 53, टारगेट 54 का, 54 रनों का क्वालिफाई 1 का मुकाबला दोनों के बीच में। एक छोटा सा ब्रेक होगा और उसके बाद तुरंत दूसरी इनिंग शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाएंगे आइए सर हरीश काकुड़कर के साथ। डीजे
हेलो, थैंक यू कैनेडी से। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। आइए सर, हरीश काकोडकर के साथ 54 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 54 रनों का। एक बहुत ही बेहतरीन, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 24 रन बनाए रजत कुडालकर ने, सूर्या गांवकर ने 11 रन बनाए, और गेंदबाजी में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही। गौरेश नागवेकर 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 12 रन 2 विकेट। आखिर में अमित सैयद 1 ओवर 1 रन 2 विकेट, अनिकेत ने 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए, और विक्की नाइक ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 10 रन 3 विकेट। थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए संदेश ठाकुर, 2 ओवर में 25 रन बनाए। देखना होगा किस तरह से पावर प्ले का 2 ओवर का खेल होता है। गेंदबाजी, फील्डिंग, बल्लेबाजी, 54 का टारगेट, और कमेंट्री बॉक्स में सुनिए माइक्रोफोन पर सर हरीश काकोडकर का। So now it's time for the toss of the Eliminator. Chris Boys versus Three Brothers. Captains, please report. This is the first call for you. So we are starting off with Mukhtar Qadri. And not a big total. It's just a low total being posted on the board. They could have made somewhere around 70, and it could have been fight on. And still, I feel if at all they need to put a fight on, they need to pick early wickets. Just try and get rid of the outstation players of Kakoda Boys, and just hope that the middle order cracks under pressure. That's a lovely shot here. This might go for 6 runs. No, just landing shot. A boundary here. This was right in the slot, and he goes down the ground. So intent is very positive here from the batsman Punaji Kalangudkar. He knows the target is not much, so there is no need to be subdued at this moment. He can play the shots very well. This is once again he went after Mukhtar Qadri, trying to go maybe in the covers region. Did not get the right ball to play that. This ball went away. He's bowling from round the wicket, Mukhtar Qadri. This is even better shot than the first one. This is going towards the fence and just goes outside the fence for 4 runs. So 2 boundaries in this over. This was little fuller, and he went with the full flow of the bat. Wonderful punch that Punaji Kalangudkar has. One of the best players when he plays down the ground and in the covers region. 2 examples of it already into this qualifier 1. The team wins, enters into the finals. Kakoda Boys looking very, very firm at this stage. A very strong unit. And they are reciprocating that feeling out in the middle with good performances with all-rounders. That's even better. That's even better. That was just a flick shot, and that goes over the fence for 6 runs. So Pulaji Kalangudkar has decided I am in no mood for any chance to be given to Asia cricketers at the moment. That's one of the very good displays of batting I've seen by Punaji Kalangudkar on this ground. This is even better. What do I say about this skillful batting? 1 down the ground, 1 in the covers, then he goes over the mid-wicket region. And the balls are not bad. It's just the sheer class of this man, Punaji Kalangudkar. And he's toying with Asia cricketers at the moment. After completion of 1, it is 18 without loss.
The first over enough must have removed the juice of the bowlers and the fielders. The target is not much, and they are getting 18 runs in the first over. The intent was missing from the openers. They went with the wrong mindset, the defensive mindset after Rupesh gone back in the pavilion, and that is what costing them this match. So Vicky will be playing the mind game. So Vicky is the computer cricketer of Curchorem, and he knows he just has to take the single, go at the non-striker's end, and from non-striker's end he can enjoy the watching of batting of Punaji Kalangudkar. Don't have to go for the big shots. It's not required at this stage. Well, you can immediately see after that 18 runs over, the shoulders and the body language is dipping off Asia cricketers. This is a good ball. This is really good ball here. He's a very skillful player, but I think when you need to bowl well, first over itself soaked whatever hope was there of Asia cricketers. And now it's just showing a little talent here, Surya, what he can do in the important matches when the ball will be there in the hands. Right now bowling the fuller ball, and he can bowl that Yorker length at will. Many a times in even in a light ball cricket tournament, the floodlights, I've seen him bowling these Yorkers consistently, and has got the variations at the left arm, bowling from round the wicket, gets the ball cutting away from the right hander. So that 2-3 deliveries are his forte. Going for the switch hit. So this over has been good so far. This is the batting power play, the second over. They want to go after him, but still not allow them to free their arms. Once again, a slower ball, this time picked up by Vicky. And when you don't have the intention of going for the big shots, I think you can watchfully play and just clip along the leg side for singles and doubles. Score moves on to 21. So far, it's been just 3 singles in this over. So much better over here compared to the first one from Surya. This time also trying to play that same shot in the mid-wicket region. This was a little slower ball. No pace allowed here for Punaji Kalangudkar to flick that on the leg side. So bowling decently here. Surya economically just conceded 3 runs but could not pick up the wickets. At the end of 2 is 21 without loss. This is the second call to Three Brothers captain and Chris Boys captain. You're requested to come here, take the sheet, mark the sheet, and please come for the toss. This time, maybe an opportunity was there. Mukhtar Qadri could not seize on that opportunity and just a single conceded here. So Vicky just doing the thing of getting Punaji Kalangudkar on strike. And Punaji will definitely be looking to go after the bowling of Mukhtar Qadri, just like in the first over. This is a half check shot. He didn't go for the full blade drive. Maybe he thought that he's not to the pitch of the ball to drive it with a full-fledged arms. Doing it in singles at the moment. This time just played a late cut towards the point region for a single. When you got 54 on the board, there's hardly anything left for the bowlers when the first over cost 18 runs. So just going through the formalities, going through the momentum. This time trying his switch hit. And they are going for the single. This might be a chance of a run out and direct hit
Mukhtar Kadri saying you should have thrown it to me. This was not required. Vicky thought that there was an opportunity, and Punaji Kalangutkar was not ready. Actually, he didn't see it at all. He gauged it late that he has to run for that. Vicky maybe was just trying whether Rupesh Gaonkar is quick or not. Rupesh was definitely quick over there. This time he goes for the switch hit. This is in the air and in the hands. Catch taken by Divesh straight into the boundary line, and the first wicket down of Kakoda Boys. The man was kept in the deep for the switch hit, and he places it exactly in his hands. No mistake by the fielder this time. So now is Bala. Oh, that was an outside edge. Rupesh was very late in reacting, trying to cut that towards the backward point region. An opportunity of the second consecutive ball, but missed here by the keeper, and that will be a dot ball. But wicket taking over from Mukhtar Kadri, much better than the first one. At the end of 3, 25 for 1. Requesting the captain of Chris Boys. This is the second call. The captain of Three Brothers is waiting for you. This time might go for 6 runs. Yes, enough power to get over the fence. It was a slower ball tried, but then it was the shot on one knee that gets the power here. A sweep shot. So now takes the score to 31, getting closer towards the target. And Surya is trying the slower leg cutters. He's not bowling the effort, quick balls at this moment. Maybe trying something new so that that can come to be effective and handy in the next match. Even if the team loses here, they will get a second chance, just like the IPL format. This was little quicker here, so he's doing it very well here at the moment. Good fielding from Divesh. Divesh, who has also done a good job of doing the scoring on the first day and takes a good catch today in the deep. Plays regularly in maybe Saturday, Sunday matches. Going for the switch hit. This was a fuller ball. Wrong ball chosen here by the batter Bala. We know that he has the capacity to go for the big ones, and the switch hit, sometimes when he hits it, he quickly gets onto the position and he hits the big one. But not the right ball, the previous ball to be chosen here by the batter. This is good bowling here. This is really skillful bowling. But I think no point in talking about at the moment, as the batters are still there. The depth of batting is there of Kakoda Boys. So they got to be wary of the fact they cannot lose the wickets, and they just can go with a decent momentum. Don't have to go for the big spike at the moment. Asking run rate is well below 6 runs per over. 33 the score.
21 more runs required of 25 balls. This time he was waiting for the slower ball right in the slot and goes out in the school plot. So that's a 6, and that 6 finish that over from Surya. He was getting too predictable with the slower balls, and Punaji Kalangudkar with the class that he has and the form that he takes on in this tournament easily plays that over the mid-wicket region. So Punaji Kalangudkar single-handedly winning this match, and at the end of 4 is 39 for 1. And this will be 5th consecutive wins if Kakoda Boys wins this match. Well, I just put that if, but if was not required because everyone here is a cricketing brains knows the result, what is going to happen. And this is going to be one more big shot from Bala. That's the reason why Vicky was after him in the auctions, and he picked him up in the auctions for a high price. This DJ was missing for last 2 days. Trying that inside-out shot over the covers region fielder. So another single taken. Doing it in style at the moment. No chance given to Asia cricketers by the formidable order of Kakoda Boys. Formidable in both departments, bowling and batting. It's a clinical performance here from Kakoda Boys. And that's it. Once again, short arm jab over the square leg region fielder for 6 runs. Babal Zore has been welcomed here with a huge 6. The score moves on to 52, just 2 runs required. They need to lift themselves up, Asia cricketers, in the next match and lift them very quickly because this has been such a scathing attack on to the bowlers and the batters from Kakoda Boys. They will have to talk among themselves, and somehow they need to be positive, staying positive in the next match. Just flicks it away in style, just gets the single. Just 1 more runs required here to win. Punaji maybe could have finished this off with a big shot, but he thinks that Bala can also do it. This is in the air, but getting the single, and Bala finishes off here, and it's end of this match and comfortable victory for Kakoda Boys. They are storm into the finals with a comprehensive victory over Asia cricketers in the qualifier 1. Now Asia cricketers have to wait who is going to face them in the next match. That match will be played between Chris Boys and 3 brothers. 2 good sides playing against each other. So let's see. Second match of the day. हॅलो हांव आतांची मॅचीचे टॉस सोडोवपाक रिक्वेस्ट करता ऑडी अवधूत बाब आमोणकर हांगा आसा हांव रिक्वेस्ट करता अवधूत बाब आमोणकर गोंय राज्याचो आदलो एक खडेगास रणजी प्लेयर तशेंच एक क्रिकेटीक सदांच हातभार लायिल्लो असो आमचो सगळ्यांचो ऑडी. सो ऑडीक रिक्वेस्ट करता मातसो टॉस सोडोवपाक मातसो यो.
अंजलो आणि हो ना बद्दी ना सांगाल ते का मा सांगा त्या गावी चालला त्या बरोबर त्या का सो प्लेयर ऑफ द मॅच या मॅचीचो जितलो अवधूत बाबा बामणकर. जसो टॉस उडयतलो तसोच मागीर तसोच हांव बालकृष्ण ओडारकर पिंटीक रिक्वेस्ट करता प्लेयर ऑफ द मॅच दिवचो. आनी प्लेयर ऑफ द मॅच दोन प्लेयरां मदीं आशिल्लें. दोगांनी जवळ जवळपास बरी बॉलिंग घाल्ली पूण लास्टाक इम्पॅक्ट कोणालो चड जालो हाजेर प्लेयर ऑफ द मॅच केल्ले आसा. आनी पयल्या ओव्हरीकच दोन ज्यो विकेटी काडल्यो थंयच म्हाका दिसता ह्या मॅचीचो इम्पॅक्ट जालो आनी त्या खातीर प्लेयर ऑफ द मॅच वता गौरेश नागवेकर. हांव रिक्वेस्ट करता बालकृष्ण ओडारकर मातसो यो आनी हो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दी. आनी पिंटीन सांगलां, पिंटीन रिक्वेस्ट केला की ऑडी आसा जाल्यार ऑडीन दिवप सारकें. हांव रिक्वेस्ट करता अवधूत बाबा बामणकरान हो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवचो.
हेलो। जो मैच समाप्त हुआ उस मैच का मैन ऑफ द मैच, पावर प्ले में पहले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही, 2 विकेट चटकाए पावर प्ले में। शायद 2 नाम जरूर चर्चे में थे, लेकिन पावर प्ले में जिस गेंदबाज ने कमाल की, वो मैन ऑफ द मैच का हकदार। और गौरेश नागवेकर, पेरनेम एक्सप्रेस सर, हमारे सर अवधूत अमोणकर, जिनसे हाथों सम्मानित किया जा रहा है ट्रॉफी देकर। अभिनंदन गौरेश नागवेकर, और सर आपका भी, अवधूत सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत जल्द दूसरा मैच, जो कि आखिर में फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम। एक मौका जरूर मिलेगा ऐसे क्रिकेटर्स को मैच के साथ, लेकिन उससे पहले अब मैच हो रहा है आने वाला 2 टीमों के बीच में। दोनों टीम जल्द से जल्द टॉस के लिए संपर्क करें कैप्टन। हेलो, थैंक यू केनेडी जी, धन्यवाद। तो चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए, थ्री ब्रदर्स और क्रिस बॉयज अगला मैच होगा दोनों टीमों के बीच में। दोनों कैप्टन, 8 ओवर का मैच होगा, 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 5 गेंदबाज। हमारे अंपायर जुड़ चुके हैं दोनों कैप्टन के साथ, सर सदगिरी नाइक, उन्हीं के साथ सर अवधूत आमोणकर। तो दोनों कैप्टन क्रिस बॉयज और थ्री ब्रदर्स सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर अवधूत आमोणकर, उन्हीं के साथ मैच के अंपायर सर सदगिरी नाइक। तो टॉस हो चुका है, और टॉस
तो मैच का टॉस हो चुका है और सदगिरी सर टॉस थ्री ब्रदर्स ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले सर विकास देसाई सर टॉस जीतकर फील्डिंग ओके और साहिल वांगणकर और विकास देसाई आपको दिनेश नाइक रिद्धि वॉरियर्स की ओर से विकास आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है इस टूर्नामेंट के लिए और आप दोनों के लिए आपके टीम के लिए तो धन्यवाद। टॉस जीता फील्डिंग करने का फैसला किया है थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने और बल्लेबाजी को मौका दिया है क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम को। 8 ओवर का मैच होगा, 2 ओवर पावर प्ले का, 5 गेंदबाज। पहला मैच थोड़ा सा एक तरफी रहा मुकाबला, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही, खास करके पावर प्ले में 2 सफलता और वहीं से लेकर बिल्कुल बैकफुट पर निकल गई। रजत कुडालकर ने एक में वो बल्लेबाज जिन्होंने 24 रन बनाए, सूर्या गांवकर ने थोड़ा सा प्रतिकार किया, लेकिन अमित सैयद हो आखिर में स्लॉग ओवर में बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी रही। तो थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला रहा। देखना होगा ये दूसरा मुकाबला। फाइनल में प्रवेश कर चुकी है इस प्रतियोगिता में काकोडा बॉयज क्रिकेट टीम। दोनों टीम कैप्टन आइए, दोनों टीम कैप्टन आइए। आपके लिए 2 गेंदे जो निकालने, जो मैच के लिए मैच बॉल वो निकालने हैं आपको दोनों टीमों को। बहुत ही 2 अच्छे टीम है मैदान पर। अब आने वाला मैच निश्चित रूप से उम्मीद होगी कि एक बहुत ही अच्छा मैच होगा दोनों के बीच में, क्रिस बॉयज और थ्री ब्रदर्स, इन 2 टीमों के बीच में। फील्डिंग करने का फैसला किया है टॉस जीतकर थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने और बल्लेबाजी को मौका दिया है क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम को। बिल्कुल काकोडा बॉयज अब थोड़ी सी रिलैक्स हो चुके हैं। मालूम है कि 3 बजे शाम को फाइनल का मैच जो, लेकिन उससे पहले अब बाकी बचे हुए 3 टीमों के बीच में संघर्ष होगा। एक एशिया क्रिकेटर्स, उससे पहले ये जारी मैच, और देखना होगा किस तरह से मुकाबला होता हुआ। दोनों अंपायर हमारे मैदान पर निकल रहे हैं, पुण्य पालकर और सर नीलेश नाइक। कमेंट्री बॉक्स में एक बार विराज तेंदुलकर तीसरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अंपायर सर सदगिरी नाइक, सर हरीश काकोडकर और मैं अशोक नाइक। हमारे AB25 की पूरी टीम, कैमरामैन हमारे राजू, नितेश, भरत अर्कस, हमारे डीजे केनी, ये पूरी टीम जो कि जुड़ चुकी है। और दूसरा मुकाबला आज का मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर रही है थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलती हुई सनेश गांवकर और संजोत, ये जोड़ी मैदान पर। 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का खेल। सामने थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। टॉस जीता और टीम का कप्तान का फैसला फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का। यह बिल्कुल अब मात्र जो कि नॉकआउट का मुकाबला रहेगा। हारने वाले टीम को 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा जो इस कुरचुरेम चैंपियंस ट्रॉफी का, और जीतने वाले टीम का मुकाबला होगा वो होगा एशिया क्रिकेटर्स के साथ। स्कोरर हमारे साथ विराज तेंदुलकर। और कल के दिन में शाम के दौर में बॉल आउट में जिस खिलाड़ी ने, जिस गेंदबाज ने अपने टीम को बिल्कुल इस मुकाम पर पहुंचा दिया, वो गेंदबाज रोहन सालगांवकर पावर प्ले का ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। और ओपनिंग जोड़ी क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम की संजोत और सनेश गांवकर, ये जोड़ी मैदान पर
अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। सर नीलेश गावकर और पुण्या पालकर, नीलेश नाइक और पुण्या पालकर, ये दो अंपायर मैदान पर। और पहली गेंद पावर प्ले की कमेंट्री बॉक्स की ओर से रोहन सालगावकर गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला। विकेट कीपर जब तक जाते गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। दिनेश नाइक जो रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम के सर्वे सर्वा परवरिम से मैच को देख रहे सर दिनेश नाइक, उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है स्टार बॉयज कुरचोरेम आपके लिए। बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपने आयोजन किया है। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। एक शानदार इनिंग खेली पुनाजी कलंगुटकर ने, जो पहले मैच में मैदान पर दोनों और शॉट लगाए, कवर पॉइंट पर, एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑन पर, मिड विकेट पर। क्रिकेट के मैदान पर अंग 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 बिल्कुल जो कि शॉट लगाए पुनाजी कलंगुटकर ने। सुंदर शॉट, बॉलर के पास से एक बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव का। दो फील्डर गेंद का पीछा करते हुए आखिरकार गेंद को रोका। 1 रन, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन बड़े अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। एक अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, बॉलर के बिल्कुल पास से। थोड़ी सी कोशिश की थी रोहन सालगावकर ने, लेकिन ताकत थी शॉट में। ओ ये गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद, ऑफ ब्रेक इन कटर अंदर आती हुई। खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, भीतरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने एक बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा और पहले विकेट का पतन होता हुआ। डीजे न्यू बैटर मैदान पर, 1 डाउन बैटर आदिश। बिल्कुल पहला मैच रहा था क्वालिफाई 1 का, जो फाइनल में पहुंची काकोड़ा बॉयज। और उसके बाद अब ये एलिमिनेटर राउंड, जो को जीतने वाले के साथ मुकाबला जरूर होगा, हारने वालों को रुकना पड़ेगा। रोहन सालगावकर एक बड़ी अच्छी शुरुआत करते हुए पावर प्ले में। ये बिल्कुल मिश्रण हमेशा होता है, जो कि शुरुआत की थी लेग कटर से, इस बार ऑफ कटर अंदर आई और वहीं पर बल्लेबाज। और फिर से अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल ज्यादा गति के साथ नहीं, बिल्कुल कभी जो कि, लेकिन जो उनका कटर होता है वो बिल्कुल जो कि बहुत अच्छा होता है, जो कि बल्लेबाज को हमेशा परेशान करता है। लेग कटर, ऑफ कटर और कभी कभी सीधी गेंदे। अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर आगे निकले, इस बार थोड़ी नीचे रही, पर लगभग शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर, शानदार शुरुआत, टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम का। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट के रूप में आउट होकर वापस संजोत सनेश गावकर एक पर, आदिश को खाता खोलना पड़ेगा। और बॉलिंग में परिवर्तन, जो दूसरा पावर प्ले का ओवर वो शुरू होता हुआ मैदान पर। छोटे गेंद, इस बार हुक किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक बड़ा शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। पहला बड़ा शॉट निकला बल्लेबाजी में क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से। डीजे थैंक यू डीजे।
तो ये तीसरा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में जो 100 रन बनाने में सफल हुए, विकास देसाई, पुनाजी कालंगुटकर और सनेश गांवकर, ये तीसरा नाम जिन्होंने 100 रन बनाए। बिल्कुल आपके लिए बधाई कमेंट्री बॉक्स में से। इसी बीच अगली गेंद, ये गेंद ऑप्टम से बाहर, इस बार थोड़ा सा धीमा भी फेंका था लेकिन लाइन पर बिल्कुल नहीं थे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन पर पहुंचा, डबल फिगर में, एक विकेट के नुकसान पर। इस पर बैकफुट पर निकले, खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा बीट हुए गेंद पर। साहिल वांगणकर गेंदबाजी करते हुए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, खुद का पहला, टीम का दूसरा, जो पावर प्ले का ओवर वो जारी रखते हुए एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और यह पुलर लेन की गेंद, इस बार शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का। एक बड़ा शॉट इस ओवर में जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद गेंदबाज बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक सिंगल और अब स्ट्राइक एंड पर आते हुए सामना करते हुए अगली गेंद का। अच्छी गेंद, थोड़ा सा हवा में बिड़ा पर, लेकिन गेंद को थ्रो किया। देखना होगा बैकअप जब तक होता, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे दोनों बल्लेबाज? जी हाँ, बिल्कुल। थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, एक सुंदर थ्रो और अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर की ओर रनआउट के लिए, जो कि कॉल हो चुका है। और हमारे सदगिरी नाइक वो भी इस स्क्रीन के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दूसरे रन के लिए निकले थे। एक अच्छा थ्रो था, विकेट कीपर ने स्टंप्स को बिखेर दिया था स्ट्राइक एंड पर, और अंपायर का सर नीलेश नाइक जिनका इशारा तीसरे अंपायर की ओर। देखना होगा क्या होता है जो कि इस रनआउट के बारे में। थैंक यू सर। तो नॉट आउट, अंपायर का कॉल नॉट आउट का। इस टूर्नामेंट के साथ एक और टूर्नामेंट का जरूर हम जो कि आपसे लेके जानकारी, 5वां ऑल इंडिया वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय वास्को सीनियर, 8 से 12 मई को ये टूर्नामेंट। इसी बीच में साहिल वांगणकर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, ओवर पिच गेंद इस बार, लेकिन थोड़ा सा स्लो ओवर बनने, लेग कटर गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर टोटल हो चुका है 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का चलता हुआ, क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। सामने टॉस जीता थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने और गेंदबाजी करने का फैसला। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, लेकिन गति में परिवर्तन, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। आज का आखिरी दिन, तीसरा दिन। कल के 2 दिन की अगर बात करी जाए तो आज थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा गर्मी बिल्कुल। और इसी बीच में यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। फिलहाल 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 2 बैटर है मैदान पर, एक 7 पर सनेश गांवकर एक छक्का लगाकर, तो आदिश बल्लेबाजी कर रहे 2 पर। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर गेंदबाजी के बारे में, और आखिरकार शायद बदलाव दिखाई देता हुआ। जो शुरुआत हुई थी रोहन सालगांवकर की, बाद में साहिल वांगणकर के, अब और एक जो कि गेंदबाज, क्योंकि पावर प्ले का जो खेल था वो समाप्त हुआ है, अब फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर हो चुकी है। और कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के लिए आते हुए क्षितिज नाइक, क्षितिज नाइक आ चुके हैं। पावर प्ले के बाद फील्डिंग में परिवर्तन, अब लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। और यह फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए।
थोड़ी सी ऊपर लगी, शायद बल्ले पर ऊपर लगी या हाथों पे लगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ा शॉट होना चाहिए था वो नहीं लगा। एक सिंगल बन गया मिड विकेट पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते और 1 रन इस बीच में स्कोर के खाते में 14 पर पहुंचा, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन के इस एलिमिडॉन की तरफ खेला, एक सिंगल फिर से जुड़ गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ से स्कोर आगे पहुंचा 15 रनों पर। दो बेहतरीन टीम है आमने सामने, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो। तो एक निश्चित रूप से जिस तरह से पहला मैच हुआ, दर्शक काफी नाखुश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि एक तरफी मुकाबला रहा। और ये पुलर लेन की गेंद इस बार पैरों पे बिल्कुल जो कि लगती हुई, टकराती हुई, कोई नर नहीं कोई नुकसान नहीं। 5वें ओवर में मैच समाप्त हुआ, पहला मुकाबला। लेकिन ये मैच उम्मीद है एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। कुरचोरेम चैंपियंस ट्रॉफी, स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम जिनसे ओर से आयोजित, और आज तीसरा दिन, आखिरी दिन और दूसरा मुकाबला मैदान पर जारी इन दो टीमों के बीच में। और इस बार यॉर्कर लेन की गेंद एक ऑफ स्टंप पर, गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन लगातार थोड़े से जो कि बल्लेबाज कहीं ना कहीं वो टच में, लय में नहीं दिखाई देते हुए अब तक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो कि सिंगल डबल के साथ, लेकिन गेंदबाज बहुत ही चतुराई के साथ, जो कि कभी स्लोअर वन, कभी पुलर लेन की, कभी यॉर्कर लेन के, ये गेंदबाजी। ये फुल टॉस अल्टी पल्टी, इस बार टाइमिंग लाजवाब, वाइडिश गली पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन। हेलो, थैंक यू डीजे, धन्यवाद केनी डीजे, धन्यवाद। तो 4 रन बड़ी देर के बाद स्कोर के खाते में जुड़ते हुए। और हेलो, केनी डीजे प्लीज आइए, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। एक स्कोर टोटल हो चुका है 19 रन। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। check. One check this. थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 19 रन 1 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। थोड़ी सी अगर रन रेट की, रन गति की मैं बात करूंगा तो एक धीमी शुरुआत जरूर है, लेकिन एक अच्छी बात है कि विकेट हाथों में है, 9 विकेट हाथों में है, बैटिंग लाइनअप है लगभग 8वें 9वें नंबर पर भी तगड़ी बैटिंग है, और ये एक बहुत अच्छी बात है मैं कहूंगा कि क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम को, क्योंकि बल्लेबाजी शेष है। आने वाले आप 5 ओवर में कुछ आक्रामक बल्लेबाजी जरूर कर सकते। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन और एक दिखाई देता हुआ अनिकेत रेवणकर, वो आ चुके हैं गेंदबाजी पर। और इस बार अच्छा शॉट, हाफ वाली पर लेकर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर संकेत गेंद को उठाते, फील्ड करते तेजी के साथ, एक सिंगल, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, हम कमेंट्री बॉक्स में चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रन गति को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विकेट आपके हाथों में है। और वही क्या, बल्लेबाज ने एक बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर, सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। अनिकेत रेवणकर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने सनेश गांवकर
2 छक्के 1 चौका। ओ इस बार एक सामने थोड़ा सा आगे गेंद को पिच किया था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक वाइडिश गली पर फील्डर है, एक कवर पॉइंट पर, एक शॉर्ट कवर पर, एक लॉन्ग अप पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग पर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने संकेत मोरजकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, पीछा जरूर किया था लेकिन गेंद बहुत दूर थी। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 27 लॉस ऑफ 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का मैच और खेल जारी मैदान पर चौथे ओवर का। छोड़ा फिर से, एक बार फिर से लाइन पर परेशानी हुई, ऑफ स्टंप से बाहर लगातार और एक रन अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में। जो दर्शक थोड़ी सी देरी से इस मैदान पर जुड़ चुके हैं, थ्री ब्रदर्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला और क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। और इस बार बैकपट पर निकले, बहुत ही बेहतरीन एक शॉट कपर कट का, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे थैंक यू डीजे, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा सा कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया था, पटकी हुई गेंद, लेकिन बैटर ने बहुत जल्दी पिक किया। इस बार ये लेग स्टंप पर और एक बार इस बार घुमा दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक नजाकत भरा शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। डीजे अब बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देती हुई क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम, 38 रन 1 विकेट पर, 38 लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 चौके 3 छक्का। अब तक स्कोरिंग में सनिश गावकर। अल्टी पल्टी करना चाहते थे ऑफ स्टंप पर, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद विकेट के ऊपर के हाथों में विकास देसाई के, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 38 रन, 10 रन के साथ लगभग चल रही है क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम। आने वाली बल्लेबाजी शेष है, सनेश गावकर एक ओर से सेट हो चुके हैं मैदान पर और सामने थ्री ब्रदर्स के खेमे में थोड़ी सी चर्चा जरूर होगी कि इस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए। और देखना तो रिटायर्ड आउट बिल्कुल बाहर आ रहे हैं आदिश, और आदिश के जगह पर न्यू बैटर सैयद बद्दी वो मैदान पर। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन साहिल वाइंगन कराते हुए, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार सुनते हैं माइक्रोफोन पर वही आवाज आपकी परिचित जानी परिचित सर हरीश काकोडकर के साथ। आइए सर, आपका एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। So after 4 overs, halfway mark, and now comes the big man. So the previous batsman is retired out, Adish. He was just given a chance, maybe just to see that Buddy comes on time and just ticks up with singles and give company to Sanish. Goes for the switch hit, the very first ball, and he just come onto the wicket. Maybe it was a leg spinner, and they have got Sahil Wangankar to bowl to Buddy. They must have thought about who is going to bowl to Buddy, and maybe they felt leg spinner is going to be their best option. Sahil Wangankar, that's the reason they got immediately Sahil to bowl to Buddy. Right now, misfielding there. They might go for the second run. Buddy is running for the second. This might be a difficult run, and he completes the second easily. He has to scamper at a halfway mark during the second run, but then the throw was little away from the keeper. By the time he collects and throws, he makes it in. So score moves on to 40. Sanish, what a wonderful tournament he's having. He was the icon player chosen by Chris Boyce, and he single-handedly taken them into the qualifiers, and once again he's proving his metal worth. Once again,
was trying to go for his shot in his arc, in his zone. It's not easy when you just come here into your dressing room, the dugout, and just get to back your concentration. The focus needs to be right on the mark. It's not easy sometimes. This is just the first over that he's facing. Once again, this was a little wide, and they really scramble for the single runs. And Sahil Wangankar has been excellent throughout this tournament for this side, three brothers. There is so much of support for three brothers at the moment on this ground. Naresh Wast is the owner, and they have got many brothers joining for this team to support. This time also going for the switch hit. Whenever you go for the switch hit and you shuffle across on the offside, the guideline shuffles, and this was, I feel that return crease becomes the guideline sometimes when batsmen shuffle across too much. Great over here from Sahil. Just 3 runs conceded so far by the Lexi. Ah, that's a good shot. That over turning out to be good one. They wanted a big one, and that's a free flow of the arms to get the maximum result. I think whenever you got a good form, you should continue and score as much runs as possible. Sanesh is showing. Well, we have seen many Australian players coming, not performing here in this tournament. But here is a local hero from Sangam who was chosen as the Australian player. How well he has played. Not only there's an on the offside, but leg side, he's very, very strong. Anything short, close to his body, anything full, he goes for the sweep shot. So, got a lot of shots in his book. In comes Rohan. Once again, little fuller. So Rohan is going to play the back full of tricks here that he has. He can bowl the slower off cutter. He can bowl a little leg cutter and can mix it up with that Yorker and quick ball that he fires in. So you got to see what is coming from the hands. Rohan was the one who hit during the bowl out that got three brothers into these qualifiers. Once again, he goes full-blooded, but just concedes a single. Gets a single here down at the square leg region. Well, everyone is waiting anxiously and patiently here to see Buddy fires. Buddy still to get a 6. So far playing on 4. Once again, they are bowled very good to Buddy. They have not allowed him to swing the bat at the pace that he likes. He likes that long on mid-wicket. And 50 up here for Chris Boys. 6th over in progress. But they need to get somewhere around 75-80. That will be the target in the mind. They were at 38. Oh, great delivery. Great bowling here from Rohan Salgaonkar. Well, he was slightly expensive yesterday, but is way better today. He must have seen what mistake he has done on this wicket the first day. And now he has tried to rectify all those mistakes and getting better here. This is in the air. This is going to be an important catch. Imran Mullah coming underneath. He doesn't drop many and he takes it easily. So Sanesh was looking dangerous and good here for Chris Boys. Perishes after a wonderful innings and that has got his team into a good position. So in comes Mayur Borkar,
who is a last minute inclusion here for this team in the qualifiers. Angelo not fully fit to play here today. So Mayur now needs to play a good knock. Last 2 overs have been pretty good one. Apart from that 6 of the last ball, both Sahil and Rohan have exceedingly bowling well. Mayur going for the big one, not middling the ball, going to the backward square leg region, can get the single. And Rohan Salgaonkar takes the most important wicket in this first innings of Sanesh. And the 3 brothers are coming back into this match. A good performance so far after 6 overs. It's 51 for 3. And now Mayura will be facing Kshitij. Kshitij was slightly expensive yesterday, but now can bowl one good over in these qualifiers. That's a good ball. That's a good start here. He wants Buddy on strike. Well, he should have thrown there. Sanket was with the backup. They could have got wicket of Mayur at this stage. These are 2 good all-rounders. Mayur and Buddy. Buddy is yet to fire in a big way. These 2 overs are going to be crucial. If Buddy can get them to somewhere around 75-80, is going to be a good total, a fighting total here, somewhere around 10 runs per over in 8 overs for 3 brothers. They have got a very strong batting unit. Oh, that's a really good delivery. Absolutely fabulous bowling here. Risking a run out. They have exceedingly bowling well against the Buddy. They are firing it in on his legs and full balls. No free swings of the arm. They must have told directly. I think Vikas must have told what are the weaknesses and strengths of both these men. And that's exactly the plan that has been discussed, has been portrayed here well by the bowlers. Once again, he's bowling little wider. So Kshitij, this has been good over. He exactly knows what the batter wants. They have not bowled where the batter likes. Just 53 at the moment. Still 9 was left. It's been a long time we have seen a 6 or a boundary from these batters. This was in this lot. This might go for 6 runs. It's flat 6. The best fielder was there, but Mayur strikes cleanly. And this was badly required for this team, Chris Boys. They need many more of those to come back in this match. Score moves on to 59 after that great shot down the ground. That was the only ball that missed the arc of a Yorker and was in this slot. This time it was a lower full toss ball and can get only a single. So even if you concede 1-6, I think it's still a good job done here by Kshitij. It's still not expensive. Score moves on to 60. Not gone above the head where 3 brothers would feel uncomfortable. This is well within their batting zone, the caliber of the batters that they have. Oh, this is a really good bowling here. Appealing there, but it's a bump ball, I feel, going to the keeper. So Buddy still struggles here out in the middle, and the completion of 7 overs is 60 for 3. So last over is going to be crucial. He's not known for his heroics in bowling department, Imran Mullah, and has to bowl a crucial over. This over is going to be a make or break over here for 3 brothers. So far up till this point of time, all the bowlers have done well.
This is short ball, but he has not timed it well. Maybe well enough. Maybe well enough. Yes, well enough over the fence. Short ball pulled away in style. Everyone thought for a while maybe it might be a catch, but I think enough power from Mayur to get over the fence. This is the six they were waiting to get. The job is always half done when is not fully completed the innings. And still 5 balls left. This time going down the track and gets a single. Buddy. 67 is the score. Can they get somewhere around 80? 80 is going to be not a match-winning total, but certainly can be defendable. That might be the first target in the minds of both these batters. So maybe both are having a chat. What are the options that Buddy has? Maybe down the ground at long on mid-wicket region. And Imran Mullah knows the strengths of this man. They are definitely going to try bowl a full balls here. This time it doesn't connect well. This might be in the air. Oh, falls in no man's land. Buddy wants the strike, but doesn't get the strike. Good fielding here. Very good fielding. Restricting Buddy for a single and keeping him at the non-striker's end. He has been struggling with his timing so far throughout the day, right from the start. Score moves on to 68. Still 3 balls left. This time it should be a wicket here. And Imran Mullah strikes. Mayur trying to go for the big heave and he departs. It's just 68 on the board at the moment. And this is the 4th wicket that is going back in the pavilion. Mayur Borkar goes back. I think the bowlers of three brothers have done a very good job. All the bowlers must have been a chat in the dressing room or maybe last night how you are going to be bowling to a particular batters, and they had a well set plan and they have went along with the plans and bowled according to where the fielders have been set and weaknesses of the batters. That's the reason they have restricted a very good side to up till this point of time to 68. And this time a wide signal way outside. Score moves on to 69. It's not a bad total that has been posted here. It's not easy to score runs sometimes. Early wickets can put a stranglehold on your scoring. Ghatu going for the big one, and Ghatu commits a suicidal run. No chance, but he wanted the strike, and Ghatu going back in the pavilion with a run out. So this is going to be the last ball. It is 69 at the moment, and Buddy will be on strike. And in goes onto the wicket, Dr. Ganesh, doctor of the bats. This is going to be a wide. So finally they enter into the 70s. So they will be little happy, but not after that start that was given by Sanesh Gaonkar, their icon player, the captain. Also, Buddy, this was in his arc, might get a boundary. No, it's very well fielded. Buddy might be running for the second, but this is a good throw, and Buddy is easily run out here. Buddy tried hard for a 6, but it was not coming throughout the innings for him. They have bowled exceedingly well against him, and job very well done here by most of the bowlers of three brothers. And after completion of allotted quota of 8 overs, they managed to get 71 on the board. 72
A decent total posted by Chris Boys. They got the bowling department well covered. Well, whether the bowlers can do the job and defend the 71 runs, we'll come to know in the next half an hour. The batting of three brothers is a little deep, so they get to be wary of the fact that they need to get wickets from the fielders as well, being in the right positions and taking the chances in the form of run out. So let's see whether it can be chased or it can be very well defended by this team, Chris Boys. So we'll come to back shortly for the run chase. थैंक यू सर। 72 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 8 ओवर में 9 रन के साथ रन गति का जो कि रन रेट है। पहला ओवर लेकर गुरुशन चिखलगी उर्फ मेंडिस, विकास देसाई उर्फ बाहू और उनके साथ साहिल वेंगणकर, ये जोड़ी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम के लिए। एक अच्छा टोटल है। जिस तरह से विकेट है, अगर विकेट की बात की जाए तो इस विकेट पर 100 रन भी सेफ नहीं है। लेकिन अगर दूसरे ओवर की मैं बात करूंगा, आपके पास बॉलिंग है, फील्डिंग है, तो 60 रन भी आपके लिए मैच के लिए आप जीतने के लिए बिल्कुल आप 60 रन पर भी जीत सकते हैं। देखना होगा फिलहाल किस तरह से मुकाबला होता है। 72 का टारगेट, पावर प्ले का ओवर, अंपायर का इशारा और पहले ओवर की गेंद लेकर गुरुशन चिखलगी अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट।
और पहले गेंद पर सामने बॉलर के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे थैंक यू। थैंक यू डीजे। पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत करते हुए विकास देसाई उर्फ भाऊ, 4 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान से। लवली शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर इस बार पुल किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ। दूसरा बड़ा शॉट, स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में 10 पर। डीजे पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मैदान पर। कप्तान है टीम के, 3 ब्रदर्स क्रिकेट टीम के, 10 रन पर खुद के व्यक्तिगत। अच्छी गेंद इस बार, ये बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद थी। गुरुशन चिकलगे वो भी एक बिल्कुल बड़ा नाम है गेंदबाजी में, खास करके नरेश असरोंडर करके बिल्कुल छत्र छाया में ये खिलाड़ी बिल्कुल गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम बड़ा हो चुका है और टीम का एक प्रमुख गेंदबाज है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। आगे निकले इस बार और कवर पर एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, सिर्फ आगे निकले, फुल टॉस पर लिया, कवर पर गेंद को ड्राइव किया और अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। जब तक गेंद को उठाते, थ्रो करते, कोई बैकअप नहीं था। दूसरा रन ये खराब क्रिकेट मैदान पर क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से। 3 रन बनते हुए स्कोर के खाते में और इन 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा 13 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। साहिल वाइंगनकर स्ट्राइक पर सामना करेंगे। पावर प्ले का ओवर, 2 ओवर का खेल, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर दिखाई देती हुई। मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर तैनात है सीमा रेखा पर और दूसरा अब निकलता हुआ जो डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। साहिल वाइंगनकर इस मैच में पहली बार सामना करते हुए। और फुल टॉस, कोई फील्डर मौजूद नहीं। पहले बाउंस पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर यह गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी। थैंक यू डीजे। स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 17 रन पर पहुंचा, 17 विदाउट लॉस। और एक फुल टॉस, क्या मौका बनेगा? नहीं, लॉन्ग अप बाउंड्री पर बॉलर के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पावर प्ले का पहला ओवर और गुरुशन चिखल के बहुत महंगे साबित हुए पहले ओवर में। 21 रन बिना किसी नुकसान से, एक बहुत ही आक्रामक दमदार शुरुआत मैदान पर 3 ब्रदर्स क्रिकेट टीम की। डीजे माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पत्ता से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम। हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। आज भी है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ जो शुरुआत होनी चाहिए थी पावर प्ले में वो दोनों ओपनर बैटर ने मैदान पर कर दी है अपने टीम को। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन और एक पावर प्ले का ओवर बाकी, जो दूसरा, और वो गेंदबाजी पर थोड़ा सा वार्म अप करते हुए बॉलिंग बार पर मयूर बोरकर। ओ ये गेंद देखना होगा, अंपायर का इशारा होगा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और जो कि रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। थैंक यू डीजे। नो बॉल का इशारा, नो बॉल के साथ और 1 रन, यानी टोटल मिले 5 रन। और विकास देसाई के लिए मौका आ चुका है फ्री हिट का, फ्री हिट का इशारा अंपायर का, तो और एक बड़ा मौका बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट के गेंद उड़ाया, मिड विकेट पर एक लाजवाब शॉट,
गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे बहुत ही शानदार शुरुआत एलिमिनेटेड राउंड। इस मैच के साथ एक टीम का सफर तो जरूर समाप्त होगा, अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी मैच बाकी है। एक अच्छा ओवर, 2 विकेट, मैच में वापसी होगी क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम की। राउंड विकेट और बहुत अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन। पहले शायद खेलना चाहते थे, इन वक्त अपने बल्ले को थोड़ा सा अलग किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मयूर बोरकर राइट राउंड विकेट। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर और यॉर्कर लेन की गेंद बिल्कुल ओवर द विकेट शुरू में थे, अब राउंड विकेट आ गए। तो राउंड विकेट आकर लगातार 2 गेंदों पर बल्लेबाज को विकास देसाई को बीट किया। 32 रन बिना किसी नुकसान से। दूसरा ओवर यानी पावर प्ले का ओवर, मैच 8 ओवर का, 72 रनों का टारगेट है 8 ओवर में मैच को जीतने के लिए। और ये गेंद, ये मौका था फिर से एक बड़े शॉट के लिए। नो बॉल का इशारा अंपायर का। मयूर बोरकर अब थोड़ा सा जो कि शायद फिर से यॉर्कर करना चाहते थे, लेकिन बीमर कर बैठे और अंपायर का इशारा नो बॉल का। तो इसी के साथ दूसरा नो बॉल था बिल्कुल, तो अंपायर का इशारा अब रुकना पड़ेगा इस मैच में। दूसरा नो बॉल था तो एक रन भी बन गया और अब थोड़ी सी समस्या बढ़ गई, क्योंकि गेंदबाजी में अब कौन लाएंगे, क्योंकि 8 ओवर का मैच है, जो नियमित 5 गेंदबाज है। अब थोड़ा सा जो कि सामने बिल्कुल कप्तान पर जो कि सोचने को मजबूर किया इस बार क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। डीजे थैंक यू, डीजे थैंक यू। तो बिल्कुल जो तीसरे अंपायर हमारे सदगिरी नाइक वो जुड़ चुके थे और उन्होंने देखा तो नो बॉल। 1 रन मिला स्कोर के खाते में नो बॉल के साथ। तो दूसरा नो बॉल था ओवर में और थोड़ी सी चर्चा हो रही है क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम के खेमे में, क्योंकि जो बाकी के बचे हुए इस ओवर की गेंदें हैं मयूर बोरकर की, उसके लिए किनके हाथों में गेंद सुपुर्द की जाए। आखिरकार चर्चा हुई कप्तान के, सभी खिलाड़ियों के और गेंदबाजी के मोर्चे पर आते हुए सनीश गांवकर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, 35 रन बनाए थे। उनके बाद मयूर बोरकर ने 2 छक्के लगाकर 15 रन बनाए थे। प्रेट का इशारा अंपायर का। विकास देसाई स्ट्राइक एंड पर, फुल फॉर्म में ये खिलाड़ी कल शाम से बिल्कुल इस मैदान पर, टीम के कप्तान और सनेश गेंदबाजी पर। फ्रेड की गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। गेंद को ड्राइव किया, ओ गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर दूर था। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। फ्रेड की गेंद थी और फ्रेड गेंद पर चौका लगा। पावर प्ले का ओवर जारी, टारगेट है 72 रनों का और विराज बिल्कुल आधी मंजिल को तय कर दिया पावर प्ले में ही, दूसरे ओवर में। छोटे गेंद पुल किया इस बार मिड विकेट पर, गेंद हवा में, लेकिन नोमैन्स लैंड में कोई फील्डर मौजूद नहीं था। गेंद लगभग चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। जो पार्ट टाइम गेंदबाज होता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जब सामने से ओपनिंग जोड़ी के बीच में साझेदारी हो चुकी है, विकेट दोनों। और विकास देसाई के हम चर्चा कर रहे थे, विराट तेंदुलकर जानकारी दे रहे, सबसे ज्यादा रन अब तक बना चुके हैं इस प्रतियोगिता में,
स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम, कुरचोरेम चैंपियंस ट्रॉफी, तीसरा दिन और विकास देसाई स्ट्राइक पर। और इस बार फिर से एक स्लॉट में गेंद मिड विकेट पर, हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए, और इन 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। डीजे 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 थैंक यू डीजे, धन्यवाद केनी डीजे। मैच के ऊपर, खेल के ऊपर अगर नजर डाले तो बिल्कुल पगड़ा भारी दिखाई दे रहा है मैदान पर, क्योंकि 36 गेंदों का खेल, 25 रन मैच को जीतने के लिए, एक बिल्कुल किफायती ओवर, जिस ओवर में 2-3 रन, 2-3 विकेट, मैच में वापसी होगी। अगर आने वाले ओवर में 1-2 बड़े शॉट लगे तो ये मुकाबला 19-20 का मैदान पर होगा। साहिल वेंगणकर स्ट्राइक पर, गेंदबाजी में परिवर्तन, पावर प्ले का खेल समाप्त, फील्डिंग में परिवर्तन, 36 गेंदे 25 रन, मैच लगभग थोड़ा सा आसान हो चुका है। लेकिन क्रिकेट है, बात करना थोड़ी सी गलत बात होगी कमेंट्री बॉक्स में, कभी कभी एक एक रन बनाने के लिए 4-4 विकेट भी चले जाते हैं मैदान पर। और अल्टी पल्टी स्विच हिट, साहिल वेंगणकर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 50 रन इसी के साथ 3 ब्रदर्स क्रिकेट टीम के स्कोर बोर्ड पर पूरे होते हुए। 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 स्वागत किया गेंदबाज का जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑन साइड पर खेला गेंद को, मिड विकेट पर फील्डर है, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 54 पर टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 18 रन जीत से पीछे है 3 ब्रदर्स क्रिकेट टीम। विकास देसाई सबसे हाईएस्ट रन बनाते हुए इस मैदान पर, टोटल अब तक उनका व्यक्तिगत स्कोर है 137 रन, 137। फिर से आड़े बल्ले से इस बार भीतरी किनारा लेते हुए शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर, मिस फील्डिंग, लेकिन अब कोई जल्दबाजी नहीं है दोनों बल्लेबाजों को। मालूम है टारगेट जो है, लक्ष्य है, वो बिल्कुल नजदीक है। सामने 72 का टोटल था, और उसके जवाब में ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में बिल्कुल आधा काम तमाम कर दिया। बॉलिंग में एक बार फिर से उमेश पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और फिर से एक बार स्विच हिट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई। थोड़ा सा जायदा ले रहे हैं अंपायर 4 या 6 का, और जो अंपायर का फैसला होगा वो आखिरी निर्णय होगा। तो गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। दोनों बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 72 रनों के जवाब में स्कोर हो चुका है 59। और ये फुलर लेन की गेंद, फिर से अल्टी पल्टी करना चाहते थे, इस बार गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट के पर के हाथों में। तीसरा ओवर जारी, स्कोर हो चुका है 59 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में एलिमिनेटर राउंड में बड़ी साझेदारी, और 13 रन मैच को जीतने के लिए। और बहुत ही लाजवाब शॉट, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, और 100 रन से ज्यादा रन बनाने वाले ये चौथा जो कि खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का, स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम प्रतियोगिता में साहिल वेंगणकर, जो चौथे बल्लेबाज 100 रन से भी ज्यादा रन बनाने वाले। और इसलिए मैं बिल्कुल धन्यवाद दूंगा हमारे स्कोरर दिवेश नाइक और उन्हीं के साथ विराज तेंदुलकर को, यह पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा। स्कोर हो चुका है 65, 65 रन। पहला मैच जो समाप्त हुआ था क्वालिफायर 1 का, वो समाप्त हुआ था 5वें ओवर में। ये अब खेल हो चुका है टोटल जो कि 3 ओवर का। क्या ये मैच भी बहुत जल्द समाप्त होगा, देखने होगा। 65 रन टोटल स्कोर। फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे
थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। चलो ये लगा सिक्सर, मैच का विनिंग शॉट, गेंद मिड विकेट पर सिक्सर। और इसी के साथ चौथे ओवर में मैच समाप्त हुआ मैदान पर। तो अब मुकाबला होगा आशिया क्रिकेटर्स और उन्हीं के साथ 3 ब्रदर्स क्रिकेट टीम का। क्रिस बॉयज, आपको इस टूर्नामेंट के साथ जरूर अब रुकना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला। आपके पूरे टीम को, आपके ओनर को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आप सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी हमारे कमेंट्री बॉक्स में शुभकामनाएं। बहुत अच्छा क्रिकेट दोस्तों आपने खेला इस मैदान पर, आपका धन्यवाद। और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक जरूर होगा अगले मैच के साथ। और मैन ऑफ द मैच इस मैच का, बिल्कुल एक बड़ी इनिंग खेली, 2 रन से दूर हो गए अर्धशतक से, विकास देसाई मैन ऑफ द मैच। सर क्या इनिंग खेली विकास देसाई ने, बिल्कुल कल की इनिंग दोबारा शुरू की उन्होंने, ऐसा लगा इस मैदान पर। बिल्कुल डगआउट से सेट होकर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर निकले, बड़ी इनिंग खेले। और सामने बिल्कुल एक तरफी फिर से मुकाबला रहा। जिस तरह से पहला मैच रहा था एक तरफी मुकाबला, ये दूसरा मुकाबला भी एक तरफी रहा। छोटा सा ब्रेक जरूर है दोस्तों मैच के बीच में। मैन ऑफ द मैच के लिए विकास देसाई, और तीसरे मैच के साथ एक बार फिर से जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में माइक्रोफोन पर सर हर्ष काकोडकर के साथ।
Time for the toss. Requesting both the captains to please come for the toss. Asia Cricketers and Three Brothers. It's the same two teams that played the last match of the second day. What a cracker of a match that was. Maybe we are going to witness once again similar sort of situations here, and a great match is expected by the crowds. Both the teams well balanced. They've got good batters. Rupesh is yet to fire. Maybe he was waiting for this game. Asia Cricketers will be hoping for that, and Three Brothers will be hoping that he doesn't fire at least in this match. रिक्वेस्ट करता नरेश देसाय मातसो टॉस उडय आमचो आयचो गेस्ट नरेश देसाय टॉस उडयतलो ह्या मॅचीचो. So Asia Cricketers have won the toss, deciding to field first. So they'll be happy. So whoever wins a toss nowadays are happy and elect to field first. And now the dugout of the team of Asia Cricketers in a huddle in discussions how to go about the progress. But I think only big hurdle and the only big obstacle in going into the finals is that big man, Vikas Desai. He is going to be the key for all the other teams in this tournament. And the big wicket, let's see, it's going to be a great battle. Everyone witnessed one of the finest cricket matches last night. Three Brothers would have lost it by 1 run, but it was just that 1 run that was the difference between both these teams. So you can witness how close both these teams are. And once again now, the qualifier 2. Let's see who qualifies into the finals to play against the Kakoda Boys. All eyes glued to this match of the qualifier 2 of Curchorem Champions Trophy organized by Star Boys of Curchorem. मनसूर कॉमेंट्री बॉक्सा मातशें गरम जाता मातशें थंड करपाक जाय. मनसूर मातशें मनार घे.
थँक्यू. म्हाका ऑर्गनायजर्स पावना पूण खूब आमगे कुडचडकार जे मोग करतात रोखडो फोन करतात तूं भिनाका आमी आसात अमके अमके ग्राउंडा पोजिशनार तूं यो तुका रावले आमी. देव बरें करूं सगळ्यांक. So now this is qualifier 2. Here it is. The man in form, Vikas Desai, will be on strike. Here comes Mukhtar Qadri. This is an outside edge. Oh, that was almost close. It was a slow leg cutter here bowled by Mukhtar Qadri. This is going to be a great battle to watch between the spearhead of Goan cricket along with a great batsman of Goa. This time uppercut shot. This was short wide and he cut it away for a magnificent 6 runs. तशेंच क्रिस बॉयज हांच्या प्लेयर्सांक सांगपाक सोदता की हांगा जेवण ऑलरेडी रेडी आसा सो तुमी जेवून वचपाक जाता. क्रिस बॉयज प्लेयर्स तुमकां जें जेवण आसा तें ऑलरेडी रेडी आसा हांगा तुमी जेवून वचपाक जाता जर वता जाल्यार. Lovely ball. This is a great battle. What a fight this is. The first one was a slower leg cutter. The second was short wide. It was played nicely as an uppercut by the batsman. Gets the bound 6 runs. And now, after that, he bowls a perfect Yorker. So these are all the mind games. The mind of the batsman and the mind of the bowler. This is also a part of the mind game. Well, this is now in the gap. Might fetch a boundary. No, the ball stops close to the boundary, so it just gets a single. So now it is the same pair, the batter Sahil Wangankar. Got the 6 in the first over, but still Mukhtar Qadri has not bowled badly apart from that first that ball that was short wide. Going for the switch hit. He saw the batsman going for the switch hit, so bowled him on his legs, not allowing to free that bat. So it's going to be all the battle of the mind, application of the mind. How the thought process goes around. They must have witnessed how good form these batters are of three brothers. Once again going for the switch hit. Once again a very good over. Very decent finish here in spite of giving a 6 by Mukhtar Qadri. So that's exactly what I'm going to be talking about this match. Is about how one team fares well compared to the other in the mind. How the changes work, whom you are going to get to bowl against Vikas Desai, whom you are going to get to bowl against Sahil Wangankar, or how the batters are going to be facing against a particular bowler. That all small things are going to matter. And now they know very much that Vikas Desai is going to be the key here in this match, qualifier 2. He is the key wicket. And they have got their key player, Surya, who is a left-arm medium pace bowler and also can bowl that leg cutter to the right-handers. We have seen Vikas Desai playing the switch hits in the second day, in the first or second or third matches, the league matches, but we have not witnessed when that was a crucial encounters, especially against Asia cricketers, the last match, and also in that previous game where they hammered Chris Boyce out of the race. This is really good bowling here, very good bowling. Wide Yorker is always going to be the best bowl to be bowling at this moment to Vikas Desai. They need to be bowling few dot balls to pile pressure on this class act. The man in form. This is short. This is in the air. Might be a catch. No, enough.
Enough from Vikas Desai. He pulled it all the way from the wide outside the off stump, and enough punch to get it over the fence for 6 runs. A great hitting display here from Vikas. This is once again, this is in the air. This might be important catch, and catch taken. Surya gets rid of the most important wicket, and the danger man Vikas Desai. He wanted to play that shot. He did not get the elevation. He wanted to play over the head of the square leg, but it was the best fielder in this side. Somesh Dodamani placed over there, and his hands are full of bucket, and he takes it easily. So now it's the left-hander Sanket Moraskar, a very good batsman. Now, I myself is a very good fan of this boy. He's a really good talent, but he need to come back in form, a little off form lately. Just a matter of one good innings this time, and I think they want him to play the normal game of cricket that he plays. It's not about coming onto the wicket and hitting the ball out of the park for sixes. He's the one who gets set. He can play a good leather innings here. This is a 8-over format, so he has got time. He's got time to play his innings. That's how he plays in leather ball cricket. Played for Goa under 25, so definitely no muck with the bat. This time very nicely bowled, very calculative, very smart. It's all about mathematics. All the permutations and combinations, the angles will come into effect. Well, if you have studied well during that time, maybe that will help you. This time short, very well bowled here. So all tactical ploys, a different approach here from the bowlers of Asia cricketers. They are looking very good at the moment, and I think more than the effort of the bowlers, it's about how the plan to bowl against particular batsmen, and that plan is working, that ploy is working at the moment. So dot ball to finish, in fact a single to finish over number 2 is 15 for 1. Well, three brothers. Actually, the problem was Vikas Desai is, I think the age is catching up. It's not easy to be playing continuous matches in this hot sun. The humidity is so high. So they were playing continuous matches, and Asia cricketers got little rest over there to get the energy back. That might be a small thing, but the body also drains up in quick time in these hotting conditions in the month of May. Cricket is very hard to play, especially consecutive matches.
And Vikas Desai, maybe that was one of the factors that could not get him power to get that 6 over the square leg region. This is really good bowling here. Not an appeal of conviction. It is just sort of excitement here from behind the wicket, and also the bowler. A late appeal from Mukhtar Qadri. He is not the one who appeals little late, so he was very much convinced that maybe there was not an edge over there. So 15, 2 dot balls in a row. How well he has bowled. Just conceded a 6 and bowling decently, bowling dot balls as well. Ah, super bowling. Absolutely stunning bowling here. That's how you need to bowl. All the youngsters need to be watchful. They are afraid nowadays. If a batsman comes and plays the switch hits, they don't know where to bowl the next ball. This is the exact perfect delivery that you need to bowl when somebody goes for the switch hit. Just Yorker down the leg side. It's very difficult to get back into the position. This is in the air. He has timed it well. He has timed it really well. Full flow of the bat, getting the full result here for Sahil Wangankar. So Sahil Wangankar now. This time in the air, didn't time it that well, might be a catch. It is Somesh Dodamani. It is Somesh Dodamani. He has not dropped a single catch so far in this competition. He was placed rightly by Mukhtar Qadri, and one more, the batter, in-form batter who has got 100 runs in this tournament so far, departs. Big wicket by Mukhtar Qadri in his second over. It's 21 for 2. This time just played it down the ground for a single. So I think it's exceedingly good over here bowled by Mukhtar Qadri, and they are doing very good at the moment. They were very happy after winning the toss and electing to field first, and they knew the set plan. Most of the teams nowadays win the toss electing to field first, and they want a target in their mind. And once they know a target, they can set a plan of how to set their batting order, whom to send first, whom to send in the middle order. And they were very happy to win the toss. And so far, in 3 overs, it's 22 for 2, and the bowlers are doing a good job for Asia cricketers. In comes Somesh Dodamani. So now it is Imran Mullah, the highest bidded player of the auctions of Curchorem Champions Trophy by Star Boys at a prize of 31,000. Shot wide. So once again it is the same battle. We have witnessed the same battle in last match, the last game of the second day. Teammates for Sheldon Blasters now up in arms against each other. Battle to watch out here. Shot, very nicely played. Good shot here. Good cricketing shot for just a single.
Sometimes you don't get boundaries for a valuable shot, but if you can get shots like this, that can also raise your confidence. Is a very good player on the offside as well. Plays the shot in the covers, the lifted shot. Also can play the uppercut, can play the sweep shot. So very difficult as a batsman to set the field to Sanket Moroskar, the left and right and combination. Both the youngsters at the moment here in the crease. Sanket, we have not seen a great cameo because most of the job has been done by Vikas Desai and Sahil Wangankar as far as batting is concerned. So here is the chance. Here's a big opportunity here in the big match. They must be hoping they get somewhere around 75, 80. That should be the first target in the mind. Once again, very nicely bowled, and he plays it calmly towards the fine leg region for a single. And he's taking his time. That's a good sign here for three brothers. It's not about the sixes and boundaries of every ball. Tennis ball also has gone a long way. These 8-over matches are not easy. We also saw an era of 3 balls finals. That is gone now. That is out. Three balls, 1 over finals. Now we are witnessing something interesting. A great contest here between bat and ball, and a wonderful concept here by Star Boys. This time left all alone. Don't try to fiddle with that when you are getting an extra run and an extra ball. The single taking the score to 26. This is the 4th over in progress. 2 wides, 2 singles in this over so far in the 2 balls that he has bowled. Once again, little Ori at the moment. He is bowling one side and way to outside. So Mukhtar Qadri must be a plan to bowl short and wide to Imran Mullah. Maybe some sort of a weakness that Somesh Dodabani knows about this player. So 5 runs conceded after bowling 2 balls. 27. 4th over in progress. Still evenly balanced this match. Once again another wide. Very well left here by Imran Mullah. He doesn't want to bowl on his body. He doesn't want to bowl on his wickets. So he's trying to bowl just wide outside the off stump. 6 runs have been scored without any effort by the batters. This is not good bowling here from Somesh. This time also it was slightly out, but he gets the bat onto the ball and gets a single in the deep extra cover region. Zian Khaja fielding in that deep extra cover restricts the batter to just a single, taking the score to 29. So Sanket Moraskar so far watching carefully. They need an innings from Sanket. And he's a very good player in the covers and also can play the shot in the point as well. A good leather buff player, and that's a positive sign that he's on the wicket for three brothers. This is an outside edge, very nicely fielded in the short third man region by Rupesh Mahale. The good fielding, no chance of a single. And that fielding has been applauded by Sandeep Narvekar here. This time, don't know what he was appealing for. There is nothing from behind the wicket. This was a wide Yorker length delivery from the bowler. So now he is bowling in the accurate areas. Sanket trying to just glide it down towards the backward point and third man region, but he could not get a bat onto that. So good comeback here. 2 dot balls after conceding 4 wides in this over. Somesh Dodamani. 29. This time he strikes. This is the caliber of this man, Sanket Moraskar. He just need one good shot and he will come back in form.
that will finish on a high note after halfway mark the first innings. Completion of 4 overs. It is 35. 35 on the board for the loss of 2 wickets. Sanket playing sensibly and Imran Mullah giving him good company. So it will be change in bowling and certainly change in the commentary box. Over to a senior commentator Ashok Naik sir for further updates in his beautiful voice. थैंक यू हरीश सर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 35 रन। जो चौथे ओवर के आखिरी गेंद पर छक्का लगा, नहीं तो थोड़ा सा रन रेट बिल्कुल धीमा था बल्लेबाजी में। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देते हुए सूर्या गावकर गेंदबाजी पर 3 पर इमरान मुल्ला, संकेत मोरजकर एक छक्के के साथ 8 पर, 13 पर आउट होकर वापस विकास देसाई, साहिल वाइनगंडकर 7 रन बनाकर आउट हुए और 5वें ओवर की शुरुआत सूर्या गावकर गेंदबाजी पर अपने बॉलिंग मार्क पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला। ऑफसाइड पर हल्के से गेंद को ड्राइव किया, ऑफसाइड पर कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 36 लॉस ऑफ 2 विकेट। 8 ओवर का मुकाबला है। पहले 2 मैच थोड़े से एक तरफी मुकाबले जरूर रहे, लेकिन देखना होगा, निश्चित रूप से अपेक्षा होगी, उम्मीद होगी कि ये मैच बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला हो। लेफ्ट हैंडर बैटर संकेत मोरजकर के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सूर्या गावकर अपने फील्डिंग को थोड़ा सा सजा रहे, चेक कर रहे, थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे मैदान पर। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी लाइन पर बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे हैं, सम्मानजनक खेला, कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। एक सिंगल बन गया। 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। मुकाबला जारी। क्वालिफाइड सेकंड यानी क्वालिफाइड 2 का मुकाबला। और बहुत अच्छी गेंद इस बार फ्रंट फुट पर बीट किया बल्लेबाज को। 1 रन जरूर मिला स्कोर के खाते में, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ जरूर खेला था। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 38 रन पर टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए हमारे तीसरे अंपायर सर नीलेश नाइक, वो भी इस मैच को बिल्कुल करीब के साथ देख रहे हैं। हमारे साथ विराज तेंदुलकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। फिलहाल संकेत लेफ्ट हैंडर बैटर और उनके लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सूर्या गावकर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। और बहुत अच्छी गेंद फ्रंट फुट पर ड्राइव करना चाहते थे, कवर पर फिर से बीट किया बल्लेबाज को गेंदबाज सूर्या गावकर ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, कोई अब तक बड़ा मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। एक अच्छी लाइन पर लेफ्ट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंडर के लिए राउंड विकेट। सूर्या गावकर अगली गेंद लेकर खेल जारी अभी भी मैदान पर। 5वां ओवर का थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम। इस बार छोटी गेंद मिली, एक करारा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और वहीं पर मौका टाला बल्लेबाज ने। एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए डीजे। अच्छा यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद, स्लिप पर फील्डर
लगभग गली पर गेंद को फील्ड करते हो। तो चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगा था। पांचवें ओवर की पांचवी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा। 5 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ और 5 ओवर के साथ लगभग 9 रन के साथ रन बनाती हुई त्रिभुवन क्रिकेट टीम 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे मान्यवर कक्ष में हमारे और एक बिल्कुल अजीज दोस्त और कमेंटेटर सर सैगी सागर, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। सागर, आपका भी धन्यवाद, स्वागत है। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, एक तेज यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद, गेंद में गति थी रफ्तार के साथ और एक अच्छी लाइन पर एक अच्छा यॉर्कर, बल्लेबाज को बिल्कुल अचंभित करती हुई गेंद, गेंद चली गई विकेट के पर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 44 पर 2 विकेट पर। और ये छोटी गेंद, क्या ये मौका बनेगा? मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे और सफलता मिलती हुई, शॉर्ट पिच बाउंसर लेकिन ऑप्टम से दूर थी गेंद, दूर से खेला इस बार बल्ले पर गेंद और मिड विकेट पर एक अच्छा कैच, तीसरा का विकेट चला गया मैदान पर। डीजे एक अच्छा विकेट इस ओवर में सोमेश जो तेज गेंदबाज और रोहन सालगांवकर मैदान पर कल के बॉल आउट के हीरो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी की जो व्याख्या है क्रिकेट के बारे में, तो बिल्कुल ये नाम बिल्कुल उसके लिए फिट है। वो खिलाड़ी मैदान पर स्ट्राइक एंड पर, लेकिन सामने से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, गेंदबाजी हो फील्डिंग हो ऐसे क्रिकेटर्स का। 5वां ओवर जारी और सोमेश दोड्डामणि बॉलिंग मार्क पर। और 6वां ओवर जारी है दोस्तों, क्योंकि 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पुलर लेन की गेंद बिल्कुल पैरों में टकराती हुई, बल्ला तो घुमाया था लेकिन कोई असर नहीं, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं था। गेंद सामने विकेट के पर मुख्तार कादरी तेजी के साथ आते, गेंद को फील्ड करते और वापस एक बार फिर से सोमेश दोड्डामणि अपने लंबे रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। फिर से अच्छी गेंद निचले हिस्से से लगी, भीतरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के पास गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और अब तक की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही, ठीक ठाक ऐसे क्रिकेटर्स के लिए दिखाई देता हुआ ये खेल। और इस बार टॉप एज लगा फाइन लेग पर, लेकिन फील्डर के ऊपर से कोई मौका नहीं था, बिल्कुल गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ चली गई 4 रन के लिए। डीजे एक चौका, लेकिन वो भी थोड़ी सी फाइन लेग पर गेंद निकली थी। 48 रन 3 विकेट पर, 48 लॉस ऑफ 3 विकेट। और बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से यॉर्कर लेन की गेंद, एक डॉट गेंद, एक अच्छे ओवर की समाप्ति मैं कहूंगा निश्चित रूप से सोमेश का। एक अच्छा ओवर, बहुत अच्छा ओवर, एक सफलता मिली, एक चौका जरूर लगा लेकिन लगभग 2 बार रोहन सालगांवकर के लिए बिल्कुल जो कि खतरा महसूस किया मैदान पर। खेल इसी के साथ और एक ओवर का 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन के साथ रन बनाते हुए 48 48 रन 3 विकेट पर
लास्ट 2 ओवर टू गो। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो अब आने वाले 2 ओवर में कम से कम एक 20-25 रन बनाने पड़ेंगे थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम को, क्योंकि इस मैच की अगर बात की जाए तो 75 के आसपास का टोटल एक अच्छा टोटल होगा। और अगर ऐसे क्रिकेटर्स की मैं बात करूंगा, आपको ये 2 ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रन बनेंगे वो मैच के रन होते हैं और वो रन आपको बाद में चेस करते हुए बनाने पड़ेंगे। तो बॉलिंग में परिवर्तन, रुपेश गांवकर राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने बैटर है संकेत मोरजकर। 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। और स्वीप किया इस बार, एक बैठक शॉट, अच्छा शॉट मिड विकेट पर, फील्डर गेंद को तेजी के साथ ओवरथ्रो के साथ दूसरा रन। यही बात मैं बिल्कुल इस 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टीम के 3 विकेट पर 50 रन, यही मैं चर्चा कर रहा था। क्योंकि ये 2 ओवर है ना, ये 2 ओवर के रन जो होंगे वो मैच के रन होंगे मैदान पर। वो मैच में आपको ठीक ठाक तो कर देंगे, वही के साथ वो मैच आपको बाद में बल्लेबाजी में करने पड़ेंगे। तो ये आने वाली 11 गेंदों का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण। संकेत स्ट्राइक पर, ओह लाजवाब शॉट, संकेत मोरजकर मिड विकेट पर एक गगनचुंबी सिक्सर। डीजे नहीं थी, स्टोक बैटर को दाद देनी पड़ेगी, उसने जगह बनाई शॉट के लिए और शॉट खेला, बहुत बढ़िया शॉट। 56, अब तक 56, 56 लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस बार मिड विकेट पर फील्डर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे अब मात्र थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम ठीक ठाक दिखाई देती हुई। 62 रन, इस बार ऑफ साइड पर गेंद को ड्राइव किया, बढ़िया क्रिकेट, सूझबूझ का क्रिकेट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे देखो, फील्डर को हटाया था एक्स्ट्रा कवर पर, ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर, और वहीं पर संकेत मोरजकर ने हाथ खोला, एक अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, और स्कोर पहुंचा 66, लॉस ऑफ 3 विकेट। और ये गेंद इस बार डॉट गेंद, बल्ले से निचले हिस्से से लगी, थोड़ी नीची रही, थोड़ी सी स्लोवर गेंद, और गेंद चली गई विकेट के पर मुख्तार कादरी के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 7वां ओवर अभी भी जारी, रुपेश गांवकर गेंदबाजी कर रहे, सामने संकेत मोरजकर, और संकेत मोरजकर का साथ देते हुए 4 पर अब बल्लेबाजी रोहन सालगांवकर। फुल टॉस, गैप में गेंद, कोई मौका नहीं, कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
थैंक यू डीजे। थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में रूपेश गांवकर। 22 रन बने, 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन टोटल, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत ही शानदार इनिंग। अब तक 4 छक्के 2 चौके लगाए हैं अपने इनिंग में संकेत मोरजकर ने। 37 रन पर आखिरी ओवर केदार बॉलिंग मार पर। क्या 80 का टोटल, 85 का टोटल, क्या 90 का टोटल, ये बात देखनी पड़ेगी क्योंकि विकेट साथ में हाथों में आई। संकेत मोरजकर बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए। 37 पर बल्लेबाजी, अंतिम ओवर का खेल। और एक और से त्रिबर्दस कम से कम सोचते होगे कि या 2 या 3 शॉट से, और वो रोकने पड़ेंगे आसिया क्रिकेटर्स को। छोटी गेंद इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए डीजे। चौहत्तर पर स्कोर आगे बढ़ा, 74, लॉस ऑफ 3 विकेट। रोहन के बल्ले से दूसरा चौका, 8 पर खुद के व्यक्तिगत स्ट्राइक पर सामना करते हुए केदार की गेंदबाजी का। स्लोवर वन बहुत जल्दी पिक किया, उड़ाया मिड विकेट पर, एक गजब का टाइमिंग, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर डीजे। है 80 पर पहुंचा। हम 70-75 की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब त्रिबदस का सामने लक्ष्य शायद 90 का होगा। स्लोअर वन, लेकिन फिर से बहुत जल्दी पिक किया, मिड विकेट पर उड़ाया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए डीजे। डीजे, स्लॉग ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, गेंदबाजों की परीक्षा होती है और सामने बल्लेबाज बिल्कुल कोशिश में होते हैं जो बड़े शॉट के लिए। राइट, हम ओवर द विकेट। केदार अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुलर लेन की गेंद इस बार पैरों पे जाके टकराती हुई गेंद, गेंद चली गई पॉइंट की तरफ, फील्डर गेंद को फील्ड करते, 1 रन मिला स्कोर में। लेग बाइज का इशारा, अंपायर का एक सिंगल, जो कि स्कोर के खाते में। 2 चौके 2 छक्के अब तक रोहन के बल्लेबाजी में। केदार अपनी बॉलिंग मार्ग पर और 87 टोटल स्कोर। टोटल स्कोर हो चुका है 87, लॉस ऑफ 3 विकेट। सामने संकेत मोरजकर सामना करते हुए केदार की गेंदबाजी का। और स्लॉग से एक गगनचुंबी सिक्सर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर संकेत मोरजकर के बल्ले से डीजे।
स्कोर टोटल 93 और संकेत मोरजकर का 43। लास्ट बॉल टू गो, इनिंग के स्पेल के समाप्ति। ये गेंद वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिला स्कोर के खाते में, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 94 पर। बल्लेबाजी है बाबल जोरे है, रजत कुडालकर है जिनका आज जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कमेंट्री बॉक्स में से। मुख्तार कादरी है, रुपेश गांवकर है। एक को बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक मैराथन इनिंग खेलनी पड़ेगी इस मैच में अपने टीम को जीतने के लिए। यह गेंद इस बार विकेट कीपर के पास गेंद चली गई, रनआउट। और इसी के साथ 8 ओवर का खेल टोटल जो समाप्त हुआ, टोटल स्कोर हो चुका है 94। टारगेट है 95 का। विकास देसाई ने बनाए 13 रन, रोहन सालगांवकर 2 छक्के लगाए 2 चौके लगाए 20 रन। एक बड़ी इनिंग के लिए संकेत मोरजकर ने 5 छक्के लगाए अपने इनिंग में, 2 चौके लगाए और 43 रन एक बड़ी इनिंग खेली। गेंदबाजी में 7वां ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, 22 रन बने। आखिरी ओवर में भी 23 रन बने, तो आखिरी 2 ओवर में बड़ा टोटल बना, 45 रन बने आखिरी 2 ओवर में। वो कहीं ना कहीं मैच में थोड़े से जो कि दबाव बढ़ गया आखिरी 2 ओवर में। उन 45 रनों का रुपेश गांवकर के ओवर में बने 22 रन, 23 रन बने केदार की गेंदबाजी में। फिलहाल देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी है, 4-5 बल्लेबाज है, लेकिन 1 या 2 को तो एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी इस मैच में। दूसरी इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते सर हरीश काकोडकर के साथ।
which team enters into the final to play against them. 95, pretty decent total. It is not that it cannot be chased. We have seen a high-scoring match of 85 runs in 5 overs itself, which was almost chased by three brothers in the last game that were both the teams were playing against each other. So if in 5 overs this strong batting unit can chase almost 80-85 runs, so you can imagine 8 overs 95 is very much gettable. It's very much gettable in this situation because we are almost at 130 and there is quite humidity out in the ground, and the pitch must also be little hot as well. So if the ball definitely will come onto the bat and the ball also will fly across for sixes. So here we go. 95 is the target. Rupesh Gaonkar yet to fire in this competition, and Rajat Kudalkar. This time he watched the ball carefully. He knows that he is an important player of this team and he has to play an important knock in the must-win encounter, the qualifier too. There is no second chance here. The second chance was in the first match. The team that bows out of these has to wait for one more year for their opportunity. Going for the big one. The first was a defensive approach, going for that slog shot in the square leg, but very nicely bowled here by Rohan. Rohan is very good today compared to yesterday. He has been on the mark, on the button today. So very nicely played here, understanding that the bowler is trying to bowl little fuller. So he cannot play that slog shot in the mid-wicket or square leg region. So just gets a single, gets him off the mark, and gets Rajat Kudalkar, who is a very steady player and played a very good knock. After he got out, there was a little collapse of Asia cricketers. The ball clipping the thigh and going to the keeper. So exceedingly good over here. When something like 95 runs are required at around 12 runs per over, you expect them to get somewhere around 8 to 10 in the first over. So Rohan has not given any loose ball so far. That's a good shot. That's a really good shot here. Right in the slot, and this time he times it well. Rajat Kudalkar. These are the power play overs, so the fielding restrictions are definitely into effect, and you need to play it in the air. Aerial route should be taken by the batters, especially in the power play overs when you are chasing 95 runs. Yes, some odd risk will be taken by the batters, and just hope that the risk pays off in their favor. This time he strikes. Rajat Kudalkar strikes. This was in the slot. This was a bad ball here, bowled by Rohan Salgaonkar, and Rajat Kudalkar was up to the task. And well, is the birthday boy, and the birthday boy starts off with the 6 for Asia cricketers. Rajat Kudalkar. A target somewhere around 12 runs per over. If you get 10, 11, 12, I think they will be going smoothly towards the target in the end. But wickets are going to be the key. Very watchfully played. Unusual of Rupesh Gaonkar to be playing a defensive shot. Well, he's waiting for his chance, waiting for his opportunity. He saw the leg cutter. Maybe he felt that this is not the ball to go after. Sometimes even the best of the batters are always under pressure when the things are not going right for you.
Once again, down the ground. Just getting the singles, getting Rajat Kudalkar on strike. I think Rupesh Mia staying on the wicket will have a calming influence, not only on his partner Rajat Kudalkar, but also in the dressing room. And also that will build a confidence for himself. He has been very low scores in this competition so far. Not up to the standards that everyone knows, Rupesh. This is very nicely bowled here. Very nicely bowled here by the leggy Sahil Wangankar. We have seen Sahil has performed and was awarded the best player in Kukulim Premier League. That was of a medium light ball. This time, pretty good over. This is pretty good over from the leg spinner. Ball pitching and just going it away. Not easy to play the shots. This is the same way that Rohan Salgaonkar has started the first over, but the last two over fetched them 10 runs. This time in the gap. It was in the air, but he finds the gap. He was trying to little shaky there, shaky movement in the crease, gives them the width, and he plays a good cut shot. The score to 16. This time it's a 6. Wow, what a result this is. The first over, it was the same. Last two balls costing a boundary and a 6. And once again, it's a boundary and a 6. So after completion of 2, the score has moved on to 22 without loss. So you can see once the opening stand gives a steady stand of 22 runs in 2 overs with 11 runs per over, immediately there needs to be a think process by the captain, Vikas Desai. Well, he needs to think how or and which bowler we have to get at this point of time. Chitish bowled an exceedingly good over in the previous game, bowling Yorkers at will and in the good areas, bowled few dot balls. And they must be feeling at this moment that we need to keep Sahil Wangankar's 1 over, or maybe we need to keep Rohan Salgaonkar a little later on, as the batting is deep of this team. Maybe they must have not clipped in the previous game against Kakoda Boys, but every day is not a Sunday, and today is a Saturday. So Rupesh was waiting for his chance. But it doesn't matter for this man whether the fielding restrictions are inside or outside. No ground is too big for this one. That's a good ball. That's a really good ball here from Kshitij. Bowling full ball onto the toes. Can get at the most a single, Rupesh. But he slowly and steadily must be feeling good here, Rupesh. And you can see the supporters of Three Brothers also very well know what is the caliber of this man. They need Rupesh out, although he is not in great touch in this tournament. It's just a matter of one good connect, and that connect can keep on going. This time there is that's a good shot actually, but he could not find the gap. There are 3 men placed at the point region, one at point, one at in the gully, and one is short third man region. So to find a gap in between the 3 is not going to be easy, especially in tennis ball cricket. Oh, that's a good ball. Maybe that was a ball that he could have gone for the shot in the square leg region. But in the end, the ball going in favor of the bowler. So far, exceedingly good over from Kshitij. 1 single, 2 dot balls. That's been the scenario so far in this run chase. The first 3-4 balls have been good, and the last 2 balls have fetched big runs. That's good over. That's good over here. Kshitij bowling well, just conceding another single.
So once again, the same scenario where the first 4 ball costing 2 runs. Can it be once again a repeat telecast of the first 2 overs? This time it was short ball. There is no fielder there and it should go for. We have to wait for the umpire signal. It's a boundary. Well, short ball, little late to get onto that, but finally he gets at the backward square leg region. No chance for the fielder to cut that off. It was way behind the wicket. So 6 runs have come of the 5 balls. And this is the same story. And if this ball goes for 6 runs, it's the same story. It is a repeat telecast of the first 2 overs. First 4 balls going in favor of the bowling side, and the last 2 balls going in favor of the batting unit. 26 at the moment. 28, beg your pardon. This time it is in the air. This should be a catch. And Rupesh goes back, trying to go for that helicopter shot, but did not get the elevation. And once again, everyone was waiting for a big innings of Rupesh Gaonkar. It is still eluding the fans of Rupesh. So the first wicket goes back in the pavilion, just a boundary for his name, and it's 28 for 1 in 3. So 28. And Kshitij has got a very, very important wicket and a great overboard by Kshitij here at this point of time. So the local talent of Sanwadem region was picked up by Vikas Desai. Definitely performed well here. This time trying to give himself room on the leg side and trying to cut that ball over the extra cover region. Rajat Kudalkar doing a little movement onto the wicket, but Sahil Wangankar knows his job. He has been a very good leg spinner for this team. Not only for this team, but he has been taken his performance higher almost every other tournament that has been performed in Goa. And that's the reason he has been included as an outstation player. He has done the job both with bat and ball. This is way outsides. Leg spinner is a difficult art. Sometimes they might bowl that on or a wide ball outside the off stump or maybe drifting down the leg side. But if the leg spinner can get 3 or 4 consistent balls in the good areas, it's going to be difficult for the batter to get the shots after. This is in the air. This is in the air. This is going to be a difficult catch. Sanket Moraskar is one of the best fielders and he takes it easily. What a good catch. What a good catch here. This is not easy. It's coming all the way from long on region and coming close to Sahil Wangankar. And Sanket has to be applauded here. Exceedingly good catch. He's normally a wicket keeper, but Vikas Desai is doing the job. It's not easy for a wicket keeper to come and field at the long on region, but he performs a great job. A great catch in the contest of this match, and it can be a match-changing one. So in comes Babal Zore.
I think maybe with Sahil was onto the wicket as a leg spinner, they could have sent a left-handed batsman a little bit up the order to play with the spin. But maybe that option was not in tank management of Asia cricketers. And now the Babal Zore comes onto the wicket. This time, what a shot here. Should go for 6 runs. Very good timing here. That must have given and lighted the hopes and spirit of Asia cricketers camp. Score moves on to 35. The match is on. Sahil Wangankar and Babal Zore only knows to go in the 4th or 5th gear. And he does a very good job when he plays in the attacking mode. Now Mukhtar Qadri having a word. This match is definitely going to go right down the wire. We have witnessed 2 one-sided encounters earlier in the day, in the morning. Maybe this match is going to go right down. If Babal Zore can strike 2-3 more, then the match is well on. Oh, Babal Zore! Wow! What a hit this is! This is outrageous, this is humongous, this is big, and this is skillful. The score with this magnificent hit, a big hit, moves on to 41. And 13 runs already coming off this over in spite of a wicket lost here of Rajat Kudalkar. So a huge sigh of relief in Asia cricketers camp after seeing that ball. Well, ball make a huge difference for everyone. And the cricketers especially like to use the same ball that goes for 6 runs. Once again, going for that shot. He likes in that region. Just gets a single this time. So this is a good over here for Asia cricketers. 14 runs of the over so far. And I think that option which was not chosen to go for the left-hander when Sahil Wangankar was bowling, because the ball would have turned into the left-hander, and that was a better angle for the left-hander to go with the spin. They have sent Mukhtar Qadri, they have sent Rajat Kudalkar at the top. Score moves on to 42. This time he gets a single. This is very sensible here. They know that they have to get rid of Sahil Wangankar and don't give any wickets at this stage. And we are still yet to find and predict in which favor the match is going. After the conclusion of 4 overs, it is 43 for the loss of 2. 52 more runs required of 24 balls is the equation. But with the Babal Zore, who is playing so beautifully with those 2 sixes, and if he gets going, he is unstoppable sometimes. And the worry signs for 3 brothers is once Rohan Sargankar's over is bowled, so they don't have the depth in bowling to maybe little pressure on the bowlers, just like how the pressure was on Kedar, who conceded so many runs in the last over. And especially the last 2 overs, they changed the complexion for 3 brothers. It can be the same scenario here. So it's over to Ashok Naik, sir, for updates of the next 4 overs. 52 runs required in 24 balls. A great match. Let's see who enters the finals.
थैंक यू हरीश सर। 4 ओवर का खेल समाप्त है, 4 ओवर का बाकी, 52 रन मैच को जीतने के लिए। पहले 2 मैच एक तरफी रहे दोस्तों, लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल जो होना चाहिए मैच वो हो रहा है मैदान पर। एक मनपसंद मुकाबला दोपहर के सत्र में। रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्विप करना चाहते थे ऑन साइड पर, बल्ले से लगी, बाद में शरीर पे टकराती हुई गेंद निकली सिलिमिडॉप की तरफ। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और सामने एक बार फिर से बाबुल जोरे जो स्ट्राइकर पर। 2 आते आते बड़े आगाज किया मैदान पर, 2 शॉट के साथ 13 पर खुद के व्यक्तिगत। सामने 2 रन पर 2 बैटर आउट होकर वापस। रुपेश गांवकर 7 पर, बड्डे बॉय रजत कुडालकर 21 रन बनाकर एक बहुत ही शानदार इनिंग, 2 चौके 2 छक्के लगाए। और रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 5वां ओवर मैच, मैं अभी भी कहूंगा बिल्कुल जो जिस तरह से मैदान पर मुकाबला जारी है, 50-50 का मुकाबला है मैच का। ये मिस टाइम शॉट, ये गेंद खड़ी हो गई अपने फॉलो थ्रू में, गेंद के नीचे रोहन सालगांवकर, और इसी के साथ बाबुल जोरे आउट होकर वापस। सामने देखो बिल्कुल सेलिब्रेशन हो रहा है सामने, जो कि दर्शक जुड़ चुके हैं, 3 ब्रदर्स क्रिकेट टीम के सपोर्टर, वो काफी खुशी के साथ सामने दिखाई देते हुए। एक बड़ी सफलता, बाबुल जोरे आउट होकर वापस, और उनकी जगह पर न्यू बैटर सूर्या गांवकर डीजे। तेज गेंद थी, थोड़ा देरी से बल्ले पर खेले, और रोहन सालगांवकर को तो दाद देनी पड़ेगी। एक अच्छा कैच लपका। न्यू बैटर मैदान पर सूर्या गांवकर, सामने मुख्तार कादरी। मिडिल ऑर्डर पर निश्चित रूप से थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि जो रन रेट था वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है, खेल अभी भी बाकी है मैच का। टारगेट जरूर बढ़ा है इस मैच में, मैच को जीतने के लिए 95 रनों का। और रोहन सालगांवकर राइट आर्म राउंड विकेट। सामने नए बल्लेबाज न्यू बैटर सूर्या गांवकर सामना करते हुए। 5वां ओवर मैच का जारी, और इस बार बैकफुट पर निकले, थोड़ी से फिर से हवा में गेंद, एक ऑफ ब्रेक इनकटर गेंद, मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, 1 रन। आते आते सूर्या गांवकर ने एक सिंगल के साथ खाता खोला। सामने बैठ रहे मुख्तार कादरी, जो 2 रन पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर टोटल 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 50 रन यहां से लेकर चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद, एक बढ़िया कवर ड्राइव, इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, और सामने बिल्कुल गेंद को फील्ड करते फिर से 1 ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी रही, खास करके शुरुआत अगर बात की जाए तो उनके बाद साहिल वाइंगणकर ने, क्षितिज नाइक का ओवर बहुत अच्छा रहा, किफायती रहा, 5 रन 1 विकेट चटकाया क्षितिज नाइक ने। रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर सूर्या गांवकर के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंद, ऑफ ब्रेक इन कटर, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ नीची भी रही। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई रोहन सालगांवकर के, जिस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, एक बहुमूल्य विकेट चटकाया। खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो थ्री ब्रदर्स का 6 ओवर में बना था टोटल 48 रन, और उसके जवाब में 6 ओवर में बनाए हैं 46 रन, तो 2 रन सिर्फ पीछे है। लेकिन आखिरी ओवर में 2 ओवर में जो 45 रन बने, वो बहुत ही निर्णायक मैच के लिए दिखाई देते हुए। 2 ओवर में आखिरी 45 रन बने, 7वें ओवर में बने 22 रन, 8वें ओवर में बने 23 रन, और वो उस हिसाब से एक बड़ा ओवर निकालना पड़ेगा बहुत जल्द मैच में। 80 क्रिकेटर्स को एक बड़ा ओवर अगर 20-22 रन का बन जाए तो मैच में कमबैक हो जाएगा। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, और सामने बैटर है मुख्तार कादरी। क्षितिज नाइक,
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक पुलर लेन की गेंद, गेंद जाके पैरों पे टकराती हुई 1 रन के लिए निकले, गेंद चली गई गली की तरफ, एक सिंगल, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। और सामने आ चुके सूर्या गांवकर सामना करेंगे क्षितिज नाइक की गेंदबाजी का। पिछला और बहुत अच्छा रहा, 5 रन, 1 विकेट चटकाया बहुमूल्य। एक जो बीच में ब्रेक थ्रू था वो क्षितिज नाइक ने दिलाया और अपने बॉलिंग मार्ग पर अपने रनअप को नापते हुए राउंड विकेट, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटर सामने और उनके लिए राउंड विकेट। टीम के विकेट कीपर कप्तान अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं, विकास देसाई उर्फ भाऊ। और आगे निकले, बड़ा शॉट इस बार सामने, बॉलर के ऊपर से एक नजाकत भरा सिक्सर, 6 रन के लिए। साथ पूरे होते हुए ऐसे क्रिकेटर्स के टोटल 53, लॉस ऑफ 3 विकेट, 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 42 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। एक बड़ा ओवर मैच को वापसी कर देगा। इस बार ड्राइव किया गेंद को, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छी फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया पिछले गेंद पर, सामने बॉलर के ऊपर से एक तगड़ा शॉट, 6 बहुमूल्य रन स्कोर में। और बाबल जोरे से चर्चा थोड़ी सी मुख्तार कादरी, बिल्कुल क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव, कि किस तरह से ये मैच सूर्या गांवकर के लिए बिल्कुल जो कि जानकारी देते हुए कि किस तरह से ये इस मैच में अब आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर क्षितिज नाइक, राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने इस बार ऑफ साइड पर बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, थ्रो पहुंचा जब तक, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। 55 रन टोटल, बहुत ही अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छी फील्डिंग और टूर्नामेंट का बेस्ट कैच के लिए 3-4 नाम जरूर लिखे विराट तेंदुलकर ने। आज इस मैच के साथ एक नाम तो जरूर जुड़ चुका है, वो है संकेत मोरजकर का। क्या शानदार कैच पकड़ा, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, कैचेस विन मैचेस, वो बात मैदान पर। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते, बिल्कुल बिल्कुल 3-4 कैच जरूर है इस टूर्नामेंट के साथ। फिलहाल सिंगल, लेग बाइज, स्कोर बढ़ गया 56, 56 रन 3 विकेट पर। राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी, सामने बैटर है मुख्तार कादरी। कल शाम के एक यादगार इनिंग इस मैदान पर। इस बार जोरदार अपील अंपायर की और एक फुलर लेन की गेंद, लेकिन बिल्कुल उस अपील को नकारा। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। क्षितिज नाइक का ओवर, एक छक्का लगा इस ओवर में। खेल इसी के साथ 6 ओवर का समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 56, लॉस ऑफ 3 विकेट। लास्ट 2 ओवर, 12 गेंदों का खेल बाकी। 12 गेंदों का खेल, 2 ओवर का, 12 गेंदों में 39 रन। अगर सामने मैं 3 ब्रदर्स की बात करूंगा, 12 गेंद में आखिर में 45 रन बनाए थे, वो मैच में कहीं ना कहीं फर्क करके गए। और अब मात्र चाहिए 12 गेंदों में 39 रन। क्या मुकाबला, बिल्कुल किस तरह से होगा, कौन जो कि मुकाबला करेगा काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम में फाइनल के मैच में। लेकिन अभी भी मैच बैलेंस है मुकाबला, क्योंकि सामने टीम ने 12 गेंदों में बनाए थे 45 रन, अस्या क्रिकेटर्स को 12 गेंदों में चाहिए 39 रन। एक मैच का महत्वपूर्ण ओवर जो 7वां ओवर, और वो लेकर
इमरान मुल्ला। बिल्कुल ये ओवर काफी निर्णायक है। इस ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी रही, कम रन दिए, एक सफलता मिले, मैच में हावी होगी 3 ब्रदर्स। अगर इस ओवर में 2 बड़े शॉट या 3 शॉट लगे तो मैच आगे बढ़ जाएगा। फुल टॉस और इस बार वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए हवा में गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर के लिए मौका नहीं बना। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और इस चौके के साथ 60 रन। दो शुरू के मैचेस एक तरफी रहे थे, बिल्कुल मजा नहीं रहा था, दर्शक भी काफी नाराज थे, नाखुश हुए थे। लेकिन ये मैच दोस्तों बिल्कुल वो मैच हो रहा है। सफल हुए फाइन लेग बाउंड्री पर एक गगनचुंबी शॉट डीप फाइन लेग पर सिक्सर। 6 रन के लिए डीजे। डीजे 10 गेंदों का खेल 29 रन, 10 डिलीवरीज 29 रन। बिल्कुल कांटे का मुकाबला अब मैदान पर। 10 गेंदों का खेल 29 रन मैच को जीतने के लिए। इस बार ऑफ साइड पर अच्छी कोशिश थी, अगर टाइमिंग अच्छा होता तो निश्चित रूप से रन और बन सकते थे। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, स्ट्राइक पर आ चुके हैं मुख्तार कादरी। 1 रन और बना, 28 रन चाहिए। 9 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 9 गेंदों में 28 रन, 9 डिलीवरीज 28 रन। दोपहर के सत्र में बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला मैदान पर दोनों टीमों के लिए। काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम के साथ फाइनल में कौन भिड़ेगा, किसका मुकाबला होगा, बस थोड़ा समय बाकी है दोस्तों इस मैच के साथ। मुख्तार कादरी स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से इमरान मुल्ला और स्लॉक सिप मिड विकेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मुख्तार कादरी के बल्ले से लगा ये छक्का, सिक्सर डीजे। इस रन चाहिए क्या सर? ये ओवर है जो जिस ओवर की हम चर्चा कर रहे थे, एक बड़े ओवर के, और वो ये ओवर शायद दिखाई दे रहा है जो 7वां ओवर। 22 रन चाहिए अभी भी, 22 रन मोर टू विन दिस मैच। और सामने मुख्तार कादरी, बहुत एक नजाकत भरा शॉट सामने, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर, वो भी बिल्कुल तोड़फोड़ कर रही है। 2 छक्का 1 चौका, सूर्या गांवकर। और अगली गेंद ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। पीछा किया था जरूर मुख्तार कादरी ने, मालूम था कवर पर पॉइंट पर कोई फील्डर नहीं था, और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिला स्कोर के खाते में इस वाइड बॉल के साथ। 74 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट। 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 74 लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस बार गेंद गैप में, बाउंड्री लाइन पर गेंद। 4 रन के लिए गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे स्कोर हो चुका है 78। इमरान मुल्ला थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। 78 रन टोटल स्कोर, 17 रन चाहिए अभी भी। और ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है मैच में। ये गेंद डॉट निकालने में सफल रहे तो आखिरी ओवर में मजा आ जाएगा, और इस गेंद पर शॉट लगा तो मैच स्वीप करना चाहते थे। डॉट गेंद निकालने में इमरान मुल्ला। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 7 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 78, लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी ओवर 6 गेंदे, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 17 रन। लास्ट ओवर टू गो, और 17 रन
आखिरी ओवर की मैं बात करूंगा। थ्री ब्रदर्स ने बनाए थे 23 रन आखिरी ओवर में केदार की गेंदबाजी पर। अब चाहिए 17 रन 6 गेंदों में। मैच कहां था कहां पर आ गया। बल्लेबाजी बहुत ही दमखम की, 13 रन बाबल जोरे, लेकिन उसके बाद दो बड़े शॉट मुख्तार कादरी और सूर्या गांवकर के दो छक्के। मैच में वापसी करते हुए एशिया क्रिकेटर्स को देखना होगा। फिलहाल अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर कमेंट्री बॉक्स में से मैं बात करूंगा तो 50-50 का मुकाबला अभी भी जारी है। थैंक यू डीजे। 50-50 का इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अगर दो गेंदें लगातार डॉट रही तो बल्लेबाजी पर जो कि प्रेशर होगा, दबाव होगा बल्लेबाजी पर। अगर पहले 3 गेंदों में अगर एक बड़ा शॉट लगा तो गेंदबाज पर दबाव होगा। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर अनिकेत रेवणकर। 6 गेंदे, आखिरी ओवर का खेल। इस बार पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर एक जोरदार अपील, लेकिन कोई असर नहीं। गेंद अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सफल हुए थे गेंदबाज ने। अनिकेत ने बल्लेबाज को पिक किया, बिल्कुल रीड किया। और 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 17 रन मैच को जीतने के लिए। 5 गेंदों में 17 रन मैच को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार मैच। ओ ओ, ये मौका गया, बिल्कुल कैच है कवर पर। फुल टॉस गेंद, शायद ज्यादा सफल हुए, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और ये मैच का शायद टर्निंग पॉइंट लग रहा है मैदान पर। एक मौका था बड़े शॉट के लिए, लेकिन ज्यादा सफल हुए ऑफ साइड पर। कवर पर खेलते तो सही था, ऑन साइड पर पहला मन बनाया था और वहीं पर एक्स्ट्रा कवर पर एक बहुत ही सुंदर कैच। और मैच फिर से थोड़ा सा मैं कहूंगा अब 19-20 का। 4 गेंदे अभी भी बाकी इस मैच की। अनिकेत और सामने मुख्तार कादरी उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। और स्लॉग से गेंद हवा में, ओ थोड़ी ताकत कम पड़ गई। मिड विकेट पर एक सुंदर कैच रोहन सालगांवकर के हाथों और सफलता मिलती हुई और एक 5वां विकेट वापस डीजे।
बिल्कुल मुख्तार कादरी वापस आउट होकर और सामने दिवेश नाइक न्यू बैटर। आखिरी ओवर का खेल जारी, अनिकेत रेवणकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। प्रेशर मुकाबले में, दबाव में गेंदबाजी करना आसान बात नहीं दोस्तों। बढ़िया शॉट इस बार हाफ वाले पर लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर एक सिंगल। एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है 80 रन। तो मैच की समाप्ति की और यार्कर लेन के गेंद और सिंगल। तो इसी के साथ देखो सपोर्टर देखो कितने, थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम के एक बहुत ही अच्छा मैच रहा दोनों के बीच में। अच्छी गेंदबाजी रही, गेंदबाजी अच्छी रही आखिरी स्लॉग ओवर में, और खास करके जो शुरू का 2 ओवर का खेल रहा वो थोड़ा सा जो कि बड़ा टोटल नहीं बना। पहले के ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में बने 22, तीसरे ओवर में 6 रन। तो चलिए बस 3:15 रिपोर्टिंग टाइम, टॉस, और 3:30 को फाइनल का मैच शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए जानकारी और मैन ऑफ द मैच इस मैच का, मैन ऑफ द मैच इस मैच का बिल्कुल एक शानदार इनिंग, 43 रनों की, बस कोई शक शंका नहीं, संकेत मोरजकर प्लेयर ऑफ द मैच। और पहले मैच का मैन ऑफ द मैच विकास देसाई। आइए विकास देसाई आप भी आइए, आपके लिए सुंदर ट्रॉफी है इस टूर्नामेंट के साथ। विकास देसाई और संकेत मोरजकर आइए। 3:15 दोस्तों, दोनों टीमों के लिए जानकारी, रिपोर्टिंग टाइम, टॉस, और 3:30 को फाइनल का मुकाबला कुरचरेम चैंपियंस ट्रॉफी का शुरू होगा। समीर वस्त आमगेलो यम देव आसा आमचो कुडचड्या वयलो समीर वस्तान 5,000 रुपयाचे इनाम घोषित केला अनिकेत रिवणकर बॅक. सो जबरदस्त एक बॉलिंग परफॉर्मन्स केल्ले त्या खातीर समीर वस्तान 5,000 रुपयाचे इनाम घोषित केल्ले आसा. सो ग्रेट बॉलिंग बाय अनिकेत रिवणकर.
हेलो हेलो। हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय सर प्रसन्न प्रसन्न बेंडे सर। आइए सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे मान्यवर कक्ष में आप आइए प्लीज सर। प्रसन्न बेंडे, और यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं विकास देसाई और संकेत मोरजकर। विकास देसाई और संकेत मोरजकर, आप भी आए। आपके लिए मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी है जो दी जाएगी हमारे आदरणीय सर श्री प्रसन्न बेंडे जिनसे आते हो। हेलो, चलिए विकास देसाई और संकेत मोरजकर, हमारे सम्मानीय आदरणीय सर श्री प्रसाद प्रसन्न सम्मानीय सर प्रसन्न बेंडे जिनसे हाथों आपको ट्रॉफी दी जाएगी प्लेयर ऑफ द मैच की। विकास देसाई और संकेत मोरजकर। तो फाइनल मैच के लिए जानकारी दोनों टीमों के कैप्टन और टीम के लिए 3:15 का आपका रिपोर्टिंग टाइम टॉस, और बराबर ठीक 3:30 फाइनल का मैच शुरू हो जाएगा। स्टार बॉयज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का मुकाबला होगा। 3:15 को रिपोर्टिंग टाइम टॉस और 3:30 फाइनल का मैच। सर आइए प्लीज, सम्मानीय सर प्रसन्न बेंडे, आपसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। और हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय सर ओमकार वस्त। सर ओमकार वस्त, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे हाथों ट्रॉफी दी जाएगी। आइए सर प्लीज, सम्मानीय सर ओमकार वस्त। इससे पहले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे विकास देसाई। अभी अभी जो मुकाबला समाप्त हुआ उस मैच के संकेत मोरजकर 43 रन एक बड़ी इनिंग खेली। इससे पहले 48 रन बनाए थे विकास देसाई उर्फ बाऊ ने। तो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। सर आइए ओमकार वस्त, सर आइए प्लीज। सर ओमकार वस्त आइए प्लीज, हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से संपर्क करें। तीन बजकर 15 कैप्टन नोट कीजिए, रिपोर्टिंग टाइम टॉस, और 3:30 को फाइनल का मैच शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए जानकारी।
तो मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी के हकदार रहे संकेत मोरजकर। उनके साथ जो इससे पहले मुकाबला समाप्त हुआ था, उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच विकास देसाई उर्फ भाऊ। तो छोटा सा ब्रेक है दोस्तों, फिर से जुड़ जाएंगे कॉम्बॉक्स में सर हरीश काकोड़कर के साथ। मैं अशोक नाइक। 3:15 का रिपोर्टिंग टाइम होगा, टॉस होगा और 3:30 को फाइनल का मैच शुरू होगा। थैंक यू, धन्यवाद।
both the captains and the teams to get ready for the grand finale. दोन्ही टीमी काकोडा बॉयज आणि थ्री ब्रदर्स रिक्वेस्ट करता मातशें लायन अप करात. जे टीम्स आसा काकोडा बॉयज आणि थ्री ब्रदर्स हांकां ग्रीट करया. बेस्ट विशीज फॉर दी फायनल्स. रिक्वेस्टिंग ओनर बबलू मातसो यो. रोहन सध्या अवेलेबल ना, रोहन ना, सो रिक्वेस्ट करता बबलू मातसो मुखार यो. राम यो. आमचो आयचो दिसाचो चीफ गेस्ट मुखेल सोयरो श्री प्रिंटी बालकृष्ण होडालकर हांगा पाविल्लो आसा.
रिक्वेस्ट करता तुका यो सारको पावलो. कॅमेरा चड मोठी टीम थ्री ब्रदर्स. म्हाका नाव दिला थ्री ब्रदर्साचे पण म्हाका दिसता जवळ 100 ब्रदर्स आसा हांगा. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचो आयच्या दिसाचो मुखेल सोयरो बालकृष्ण ओडारकर आणि आमच्या कॅप्टनाक पयलीं ग्रीट करचे आनी बेस्ट विशीज दिवचे. स्टार्टिंग फ्रॉम विकी. So owners and co-owners of Kakoda Boys, तशेंच विराज तेंडुलकर, निलेश नायक, सदगिरी नायक, अशोक नायक, असलम शेख आणि ह्या थ्री ब्रदर्साचे ओनर 3 ब्रदर्स नरेश वस्त, समीर वस्त आणि उत्तेश. So now the guest greeting and be seeing both the teams for the finals. सो आता आम्ही नॅशनल एंथम प्ले करतले. ओ मातशें सद्या बंद कर बाब, मातशें बंद कर प्लीज. नॅशनल एंथम प्ले करतले. रिक्वेस्ट करता सगळे जे हांगा आमचे भाव आसात तांकां रिक्वेस्ट करता मातशें आसा थंय उबी रावात. तशेंच कॅप कोणें घाला जाल्यार मातशें कॅप काडात. सो आमी आतां नॅशनल एंथम प्ले करतले. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट. येस, इट्स टायम फॉर दी नॅशनल एंथम. येस DJ 5 4 3 2 1 गो.
बोलो भारत माता की जोरान. कुर्चोरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीची ग्रँड फिनाले आणि म्हाका दिसता थ्री ब्रदर्स आणि काकोडा बॉयज जरी नाव असले जाल्यार आता फायट जातली ती कुडचडे आणि काकोडेचे, कारण सारखे आणि हे सगळ्या पडटा, कारण बरी जातले, बरी दिसतले की क्राऊडय बरो आसतलो आणि दोन गडगंज अशी टिमी हांगा सध्या फायनलीक पाविल्ले आसा आणि दोन बऱ्यो टिमी जांचे बॅलन्स आसात. हांव रिक्वेस्ट करता दोन्ही कॅप्टन मातशे मुखार येयात आणि आमचो मानेस्त बाब बालकृष्ण ओडारकर आसा जो स्वता एक बरो क्रिकेटर जावन आसा. सो नाव इज टाइम फॉर द टॉस. दोगांय कॅप्टन विकी. Heads is the calls. Heads it is. भाऊ कितें? विल फील्ड फर्स्ट. सो यू आर फिल्डिंग फर्स्ट. जो सगळो ट्रेंड आसा हाली की टॉस जिखून फिल्डिंग घेवपाची, होदो तुमी बॅटिंग केली आणि जबरदस्त बॅटिंग परफॉर्मन्स करून एक बरो व्हडलो टोटल स्कोर केलो. सो आतां तुका दिसता की फायनलीक भितर टॉस जिखून फिल्डिंग घेवप योग्य आसा? ही व्हडली गेम, सगळ्या प्लेयरांचे मातसो प्रेशर आसता आणि अशी टिमा दोन्ही वेल बॅलन्स टीम आसा. 8 ओव्हरीची गेम. 1-2 विकेट पयली पडल्यार मातसो प्रेशर येता, मातशी बॅटिंग पयली करता आसतना मातसो त्रास जाता, मातसो तुगेले रिकन्स्ट्रक्ट करचे पडटा इनींग. आणि ऑलवेज गूड टू हॅव अ टार्गेट ऑन द मायंड. ताका लागून चेजिंग करपाक मातशें बरें पडटा. बरोबर. आणि जर फॉर्म पळयलें जाल्यार तुमचे बॅटिंग जी आसा स्किल्स ती चड पावरफूल आसा कंपेर्ड टू दॅट टीम आनी तांची बॉलिंग आसा. सो ही फायट बॅटिंग ऑफ थ्री ब्रदर्स वर्सीस बॉलिंग ऑफ काकोडा बॉयज अशें म्हणपाक जातलें? हय, जो कोण बरो खेळटलो, दोन्ही टिमीन बरे प्लेयर आसा. ज्याचो दीस बरो आसा तो बरो खेळटलो आणि ती टीम जिखतली. Very good. And really good words here from the most experienced cricketer of Curchorem. So now I'm going to have word with Vicky. Vicky, टॉस हल्लो, तू टॉस जिखल्यार तू फिल्डिंग येता, फिल्डिंग येता टॉस जिखल्यार. आतां बॅटिंग पडिल्ली आसा. सो तुका कितें दिसता कितलो स्कोर बरो आसतलो ह्या येदे व्हडल्या टुर्नामेंटाक, येदे व्हडल्या फायनलीक? 80 to 85 स्कोर. 80 to 85. कारण जे जशें तांकां पळयलें आमी तांची बॅटिंग ऑर्डर बरी स्ट्रॉंग आसा आणि तुमचो बॉलिंग डिपार्टमेंटूय वेल कवर्ड अप आसा. जर तूं ह्या दोन प्लेयरांचे ऑपोजीट टिमीच्या प्लेयराचे जर नांव घेतलो जे इम्पॉर्टंट आसा, ताचेर तुमकां बेगीन विकेट काडपाक जाय नाल्यार तांकां तूं टार्गेट करतलो एज अ बॉलर म्हणून, जाल्यार दोन नांवां कोण? विकास आणि साईर. विकास खऱ्या रित्यान टॉप बॅटिंग परफॉर्मन्स जाल्ले. आणि विकी, तूं एक्चुअली कुडचडेचो पूण तूं आतां खेळटा काकोडा बॉयसाक. कोण जिखचे? काकोडा बॉयज. काकोडा बॉयज. हो क्वेश्चन सारको आशिल्लो पूण विकीन बरे तरेन आन्सर केलोय. पूण म्हाका दिसता क्रावड सपोर्टूय तितलोच हांगा मेजर रोल प्ले करतलो. उदचे मॅच पळयलें हांवें की समीर वस्ताचो जो आवाज आशिल्लो तो एकटोच म्हाका दिसता की कुडचड्यार सगळ्या भोंवतालो आवाज, आणि त्या एका आवाजान म्हणलें मॅच चेंज केल्ली वदरची. सो आतांय म्हाका दिसता कितें तरी एक बरो क्रावड सपोर्ट काकोडे सायडीच्यान पळोवया कितें क्रावड सपोर्ट येता तो. बट द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर इज टॉस वन बाय थ्री ब्रदर्स विकास देसाय एंड इज इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. सो दॅट्स आउट फ्रॉम द मिडल. म्हणल्यार म्हाका आतां टायम आयिल्लो आसा. आमचे 5 ब्रदर्स हांगा आसा, 2 काकोडेचे आनी 3 कुडचड्या वयले. सो तांचे बारीकसो एक इंटरव्यू घेवया हांगा. सो आतां आमचे जे 5 ब्रदर्स म्हणपाक शकता आमी काकोडा बॉयसाचे 2 जाण, राम आनी बबलू, तशेंच हांगा नरू, समीर आनी उत्तेश आसा. आतां तांकांय थोडें कितें विचारया. सो आतां तुमी फायनली खातीर स्पेशल अशें कितें केलां? स्पेशल बँजो हाडला, बँजो फायनली बँजो हाडला आणि ओदोळे आमकां दिशिल्लें की क्रावड भरपूर आसा. सो आतां आनी फायनली क्रावड चड जातलो काय कितें? फूल कितलो आनीकूच चड जातलो हांगा, आनी चड जातलो क्रावड, इतलो जातलो
सामको हे दोगांय आमी भाव भाव काकोडा बॉयज आणि थ्री ब्रदर्स. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हे खरी गजाल की दोगांय भाव भाव आनी त्या स्पिरिटान गेम खेळपाक जाय. उद्देश टॉस जिखले क्रुशल आशिल्ली फायनलाक. सारकी ही आतां आमकां खातीर बरी क्रुशल मॅच आहा पूण आमी तुका मेन एक सांगूं सोदता आमी नांव तर थ्री ब्रदर्स इला आसतलें पूण ही आमची फूल आख्खी गांवची टीम. हे फूल आमगेले गांव भाव आनी गांव भावची आमची टीम. सो गांव भावचे गांवची टीम. नोरू तूं हय नोरूक कित्याक घेता हांव कित्याक नोरू हरशी सहजासहजी कांय उलयना आनी तो चड दिश्टी पडना. उत्तेश आनी समीर मुखार आसता. सो आतां म्हाका एक सांग फायनल आनी थ्री ब्रदर्स म्हणटा ती टीम फायनलीक पाविल्ली आसा. बरें दिसता की आमचे जे लोकल जे तुमी ओनरशीप घेतिल्ली आनी लास्टाक तुमी फायनलीक पाविल्ली आसा. कशें दिसता एक फायनलीक जेन्ना तुजी टीम पावता? बरें दिसता. फर्स्ट टायम फायनली पावले म्हणटगीर पयली टीम घालता बरें दिसता आनी मन जावन हें जाता गांवची टीम म्हणटगीर बरो येता. आनी चड उलयना ऑलरेडी तो म्हाका दिसता तो दोळे दाखयली सामके व्हांवता. सो चड उलयना. सो हांगा बरें एक स्पिरीट आसा. राम कितलो सपोर्ट आसतलो काकोडा बॉयज कारण काकोडा म्हणटकीर एक गडगंज अशें फामाद आमगेलें आनी म्हाका दिसता सपोर्ट आसपा जाय. आसतलो? ऑब्वियसली आमकां ऑलरेडी अर्दो सपोर्ट पावला. आतां मॅच स्टार्ट जालो म्हण आमकां आनीक फूल सपोर्ट येतलो. जे थ्री ब्रदर्सान म्युजीक सिस्टम हाडप पूण तोय आमगेलो सिस्टम. आमकां कांयच ना कोणूय जिको कळना आमकां काय ना कोण जिखता तो चॅम्पियन न्हू. आमकां कांयच टेन्शन ना. सारकें बरोबर आसा. जिखता तो कोण कुडचडकार आमचे भाव कोण तरी जिखतलो. बबलू रोहन ना पूण ताज्या निमतान तूं आज ओनरशीप म्हणून आसा. सो तुजी ओनरशिपीन टीम फायनलीक पाविल्ली आसा. तुका कशें फिलींग आसा? खूब बरें दिसलें आमकां रोहन देसायान सपोर्ट केलो आमची टीम घेतली आनी बरे भशेन खेळोन येयले आसा आमचे प्लेयर्स आनी आशा बाळगिता की आतां फायनल बी जिखतली म्हणून. बरोबर आसा आनी बरें दिसता. हांवें म्हाका दिसता थोडे ओनर्स जे हरशे हांगा टीम घाल्ले जो सोपी आसा तोय बी बरें दिसता की काकोडा बॉयसाच्या कॅम्पान खूब जाणां ओदोळ आशिल्ले आनी बरें दिसता की सगळे सपोर्ट करतले एकामेकाक आनी बरी क्रिकेट पळोवपाक मेळटली. सो तुका दिसता की स्कोर कितलो जातलो जवळपास तुजी टीम कितलो स्कोर करतली? आमची टिमीक एक 3 जाण बॅट्समॅन बरे आसा आनी आमी एक 90 तरी रन टार्गेट दिवपाक जाय तांकां. आनी जशें सांगिल्लें की ताणें बँजो हाडला. तुमी कितें हाडला स्पेशल? काकोडा बॉयसाचो आवाज तितलो पुरो जातलो. काकोडा बॉयसाचो आवाज पुरो जातलो. आतां आमचो बालकृष्ण ओडालकर रावला बॉल फेस करपाक. सो आतां एक बरी फायनल सारकी 4 हांव रिक्वेस्ट करता फिल्डिंग सायड जी आसा थ्री ब्रदर्स तांणी फिल्ड घेवची. तोपर्यंत आमचो जो चीफ गेस्ट आसा तो बालकृष्ण ओडालकर जो एक बरो क्रिकेटर जावन आसा. सद्या आपल्यालो बरो जो टायम आसा हांगा क्रिकेटीन घालयता. बरी पुल शॉट. तशेंच आमकां ह्या टुर्नामेंटाक हो येदो व्हडलो टुर्नामेंट घडयता आसतना खुबश्यो घडामोडी आसता जशें ओनर्सांनी आमकां हेल्प केल्ले आसा. तशेंच तुमकां खबर आसा की खूब एक्सपेन्सीस आसता ग्रावंड एक्सपेन्सीस तशेंच ट्रॉफीज प्लेयर ऑफ द मॅच एवॉर्ड्स अंपायर्स स्कोरर्स कॉमेंटेटर्स पेंडाल अशे कितलोसो एक्सपेन्सीस तशें लायव्ह यूट्यूब AB25 चलता. खूब एक्सपेन्सीस आसा ते कवर करपाक जाय टुर्नामेंटाचे. म्हणून जितले जे स्पॉन्सर्स आसा तांकां मनकार्जांतल्यान आमी उपकार आठयता. सगळ्यांत पयलीं गोंय राज्याचे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री कायदा आनी पर्यावरण मंत्री भौमानेस्त निलेश बाब काब्राल आनी कुडचडेचे आमदार आतां फुडले सुवातेर एक्स CCMC चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर ऑफ CCMC बालकृष्ण बाब ओडालकर तशेंच GCAचे मानाधीक सचिव रोहन बाब गांवस देसाय वरुण बाब कुडचडकार योगेश बाब कळकर ओमकार वस्त
शेखर बिलकर आणि बॉल स्पॉन्सर केल्ले आसा राज नादिगेर, सुंदर नायडू, गौरेश बोरकर, महेश विल पॉइंट, रमेश फिले, रसिक बाब काकोडकर आणि बेस्ट बॅट्समॅन प्राइज दिल्ले आसा रोहित चारी आणि बेस्ट बॉलर ट्रॉफी दिल्ली आसा बाहुलाल मोमीन, तुकाराम, इस्माल सय्यद, भाई मडगांवकार, भावरिया नीरज शर्मा आणि एक वेल विशर रुपेश महालेन दिल्ले आसा किशन सावंत विनर्स अँड रनर्स अप ट्रॉफी धिल्लन सावंत आणि हायस्ट सिक्सीस रसिक काकोडकर आणि बेस्ट बॅट्समॅन ट्रॉफी रोहित चारी बेस्ट बॉलर ट्रॉफी अमृत चारी अँड दिलीप सावंत मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी जय भवानी रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग इंजिनियरिंग स्टार कमाल कॅचीचे जे प्राइज आसा हे आणि स्पॉन्सर केल्ले आसा सो सगळ्या स्पॉन्सर्साचे आमी मन काळजांतल्यान उपकार आठयतात आणि एक बरे फायनल आमकां पळोवपाक संद मेळटली अशें आशा धरया बरी स्पिरिटेड गेम इन द स्पिरीट ऑफ द गेम सो बरे तरेन खेळा पळोवया एक बरी टीम आसतली ती फायनल जिखतली सो स्टार बॉयसाची ही जी फायनल मॅच आसा ताका सगळे लोक कुडचडकार आतुरतेन वाट पळयतात तशें अख्खे गोंयभर कारण हांगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आसात जे सांगे केपे कुडचडे केपे वाठारांतले अशे आसात आनी तशेंच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अख्खे गोंयचे आसात सो ह्या खातीर म्हाका दिसता खूब फॅन फॉलोईंग आसा ह्या टुर्नामेंटाक जे ऑलरेडी लायव्ह व्हिवर्स हांगा जॉइन जाल्ले आसा सो एक बरी फायनल पळोवपाची संद आमकां मेळटली ओवर टू कमेंट्री बॉक्स टू अशोक नायक सर हेलो 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 थैंक यू सर हरीश सर धन्यवाद तो फाइनल का मुकाबला स्टार बॉयज ऑफ कुरचरे में आयोजित स्टार बॉयज चैंपियन ट्रॉफी का ये आखिरी मुकाबला मैदान पर टॉस जीता टॉस जीतकर थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम का फील्डिंग करने का गेंदबाजी करने का फैसला और बल्लेबाजी को मौका दिया काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम को आज शुरू के दो मैच एक तरफा रहा उसके बाद का मुकाबला बहुत ही अच्छा मैच रहा आसिया क्रिकेटर्स के ओवर के साथ और उसके बाद दो बेहतरीन टीम आमने सामने अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों ने खेला है बहुत बढ़िया जो कि ये टूर्नामेंट रहा सभी अच्छे टीम इस ओवरसीज खिलाड़ी वो भी देखने को मिले इस टूर्नामेंट के साथ एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जुट जाते जो कि मैदान पर इस फाइनल के मुकाबले के साथ फील्डिंग मैदान पर सेट हो चुके हैं थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम के पावर प्ले का ओवर लेकर रोहन सालगांवकर वो भी दिखाई देते हुए और देखना होगा काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से ओपनिंग जोड़ी मैदान पर कौन निकलते कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ विराज तेंदुलकर AB25 भरत अर्कस नितेश राजू कैमरामैन हमारे डीजे केने तीन अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ सदगिरी नाइक पुण्या पालकर और सर नीलेश नाइक स्कोरिंग की जानकारी विराज तेंदुलकर और मैं अशोक नाइक और मेरे साथ सर हरीश काकोडकर और हमारे कैमरामैन आनंद दिवजीकर उनके साथ ही योगेश आप सभी का स्वागत है जो दो खिलाड़ी अपने एक टीम के साथ खेलते हैं पुनाजी कलंगुटकर और रोहन सालगांवकर असलोड़ा क्रिकेट टीम के साथ आज मात्र बिल्कुल आमने सामने दोनों टीम आपका अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें चलो ओके थैंक यू भरत अर्कस AB25 तो खेल शुरू होता हुआ मैदान पर फाइनल का मुकाबला शुरू होता हुआ अतिरिक्त खिलाड़ी आइए तो आ चुके अतिरिक्त खिलाड़ी कंपलसरी है दोस्तों आइए प्लीज और काकोड़ा बॉयज तो रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग बार पर सामने पुनाजी कलंगुटकर फाइनल का मैच 8 ओवर का मैच और पहली गेंद पावर प्ले की रोहन सालगांवकर बॉलिंग बार पर बिल्कुल बिल्कुल हरीश सर अच्छा मैच होगा ओह बहुत ही बढ़िया शॉट हाफ वाली पर लेकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर पुनाजी के बल्ले से गेंद सीमा रेखा से बाहर सिक्सर डीजे
ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर पुनाजी कलंगुटकर का बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। बाहरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ, एक सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। शॉट थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 7 पर। दोनों टीमों के बहुत सपोर्टर और उसी के साथ बेंजो की धुन, बहुत मजा आ रहा है इस मैदान पर कमेंट्री बॉक्स में। और दो बेहतरीन टीम है आमने सामने। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला, बैकफुट पर निकले, मिड ऑफ पर फील्डर, ओ करीबी मामला बन सकता था, पुनाजी के लिए खतरा था। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, हल्के से गेंद को पुश किया था लेकिन सिल मिड ऑफ पर बहुत ही चौकरनी फील्डिंग और रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 7 रन बिना किसी नुकसान से। पावर प्ले का पहला ओवर जारी मैच का। आड़े बल्ले से खेला, इस बार ऑन साइड पर और फील्डर है मौजूद, संकेत मोरस्कर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल, अपना खाता खोला प्रजेश उर्फ विकी नाइक ने और स्कोर आगे बढ़ा 8 रन पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान से। अच्छी गेंद, हल्के से कलाई का उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर, फिर से एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बिल्कुल पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद एक सूझबूझ की बल्लेबाजी दोनों टीमों बल्लेबाजों की ओर से। कप्तान ने चर्चा की थी एक 80, 85, 90 का टोटल का, और सामने देखना होगा थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मैदान पर। रोहन सालगांवकर पावर प्ले का ओवर जारी रखते हुए। इस बार दूर से खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर यह गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। पावर प्ले का रोहन सालगांवकर जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान से। पावर प्ले के पहले ओवर की समाप्ति के बाद बॉलिंग मार्ग पर आ चुका है साहिल वांगणकर, सामने पुनाजी कलंगुटकर, नॉन स्ट्राइकर रन पर प्रजेश उर्फ विकी नाइक। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ और दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। अल्टे पलटे इस बार पुनाजी कलंगुटकर, वाइड गली पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे स्कोर आगे बढ़ा 15 पर। दूसरा बड़ा शॉट पुनाजी के बल्ले से निकलता हुआ, साहिल का स्वागत किया एक अल्टी पल्टी के शॉट के साथ और राइट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर साहिल वांगणकर, छोड़ा जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इस बार थोड़ा सा लाइन पर ऑफ स्टंप से दूर गेंद, वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 16 रनों पर। और थोड़ा सा हवा में शॉट, लेकिन लो मैच लैंड में गेंद गिरते हुए संकेत आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन, एक अच्छा थ्रो सामने विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस टाइम कर बैठे थे। एक यॉर्कर लेन की गेंद थी पुनाजी, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बिल्कुल दूर थे फील्डर और इसी बीच में फिर से 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। विराट तेंदुलकर बिल्कुल चौकरनी निगाह स्कोरिंग के साथ
स्कोर की जानकारी बीच बीच में देते हुए 17 विदाउट लॉस। फुल टॉस गेंद इस बार स्वीप किया मिड विकेट पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। एक अच्छी शुरुआत काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम के इस फाइनल के मैच में। ओ अच्छी गेंद, रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज उससे भी होशियार निकले। एक अच्छी गेंद ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन के बल्लेबाज को बिल्कुल मजबूर किया रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर प्रजेश और विक्की नाइक उनके साथ पुनाजी कलंगुटकर ये जोड़ी मैदान पर। फुल टॉस गेंद इस बार ऑफ साइड पर खेला, गेंद को कवर पॉइंट की तरफ, दो फील्डर गेंद के पीछे, देखना होगा गेंद लगभग बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे थैंक यू डीजे। और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। और एक बार गेंद जो चली गई वाइडिश गली पर 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले में जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो कर दी ये दो बैटर ने। प्रजेश और विक्की नाइक पुनाजी कलंगुटकर 2 छक्के के साथ 15 पर, 2 चौके, 1 छक्का लगाते हुए 15 पर विक्की नाइक और टोटल स्कोर 2 ओवर के बाद 31 रन। फील्डिंग में तब्दीली पावर प्ले के समाप्ति के बाद और गेंदबाजी में परिवर्तन थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से। क्षितिज नाइक जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी वो आ चुके हैं और सामने दोनों बल्लेबाज 15-15 रन पर अपने खुद के व्यक्तिगत। पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राइक पर। और बहुत अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत, यॉर्कर लेन की गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद जाके पैरों पे टकराती हुई सामने लुढ़कती हुई अपने पॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर क्षितिज नाइक गेंदबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर मैच का मैदान पर शुरू हो चुका है। और ये मिस टाइम शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर दूर है, फील्डर नो मैच लैंड में गेंद गिरते हुए और 1 रन इसे बीच में स्कोर के खाते में। पुनाजी कलंगुटकर दूसरी बार बिल्कुल जो कि थोड़ा सा मिस टाइम कर चुके थे शॉट, इससे पहले मिड ऑन पर मिड विकेट के बीच में और अब अभी अभी जो कि स्क्वायर लेग पर जो कि गेंद नो मैच लैंड में गिरती हुई और एक सिंगल बन गया ऐसे बीच में स्कोर के खाते में। स्ट्राइक पर एक बार फिर से प्रजेश विक्की नाइक और क्षितिज नाइक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर रुका हुआ 32 विदाउट लॉस, 32 रन, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। फुल टॉस गेंद स्विप किया इस बार मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर, एक शानदार शुरुआत। 36 टोटल स्कोर। और एक बैठक शॉट स्लॉग से
विकी नाइक के बल्ले से और एक बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर 6 रन के लिए। आक्रामक बल्लेबाजी मैदान पर काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम की, और हम कॉल कर रहे हैं, आइए सर हुजैब कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। सर हुजैब आइए प्लीज, कॉम बॉक्स से संपर्क करो। 42 रन टोटल, 42 विदाउट लॉस। दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट बिल्कुल लगा रहे मैदान पर। टॉस जीता थ्री ब्रदर्स ने, फील्डिंग करने का फैसला, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है ये जोड़ी, एक विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम को। अल्टी पल्टी करना चाहते थे इस बार, एक अच्छी गेंद पुलर लेन की गेंद, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया इस बार गेंदबाज क्षितिज नाइक ने। विकास देसाई विकेट के पर जो कि आते गेंद को फील्ड करते, और वापस एक बार क्षितिज नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील अंपायर की और विकेट के पर, और गेंदबाज का एक जोरदार अपील। गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर विकी नाइक, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, और गेंदबाज और विकेट कीपर का एक जोरदार अपील जरूर हुआ। और अंपायर की उंगली ऊपर आउट, आउट करार घोषित किया। तो पहली सफलता मिलती हुई थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम को। डीजे पहले विकेट के रूप में विकी नाइक आउट होकर वापस। 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए अपने इनिंग में। एक बहुत ही शानदार इनिंग खेली विकी नाइक ने, जो शुरुआत दिला दी टीम को होनी चाहिए थी वो खुद देते हुए, जो कि 25 रन बनाकर आउट होकर वापस। पुनाजी कलंगुटकर मैदान पर, और क्षितिज नाइक जो थोड़े से, जो कि इस ओवर में कहीं ना कहीं एक बड़े शॉट के साथ जो परेशान थे, वो सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। रोहन सालगांवकर आ चुके हैं फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर। 3 ओवर का खेल, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 42, 42 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 16 पर 2 छक्के के साथ पुनाजी कलंगुटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहन सालगांवकर गेंदबाजी पर, और पुनाजी का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर शंकर गांवकर उर्फ बाड़ा। चौथे ओवर की शुरुआत, 42 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑफ स्टंप पर ये ओवर पिच गेंद, ऑफ कटर, लेग कटर, ये हमेशा मिश्रण है रोहन सालगांवकर का। पुनाजी कलंगुटकर एक डॉट गेंद के साथ गेंद चली गई विकेट पर के हाथों में। अच्छी गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड पर सिलिमिडॉप की तरफ। एक सिंगल बना स्कोर में, बल्ले से लगी, बाद में बल्ले से लगने के बाद पैरों पे टकराती हुई। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड पर। एक सिंगल बना, और सिंगल के साथ स्कोर 43, 43 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, थोड़ा सा खींचकर खेला हुआ, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, एक सिंगल, अपना खाता खोला इस एक रन के साथ से शंकर गांवकर ने, और स्कोर पहुंचा टोटल 44 रनों पर। एक विकेट पर 44 रन, खेल जारी। चौथे ओवर का थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला, काकोड़ा बॉयज को बल्लेबाजी को मौका दिया। सामने पुनाजी कलंगुटकर बैटर। फिर से एक वही तलाउन दी कारपेट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, फिर से सिंगल स्कोर में। इस ओवर में एक बिल्कुल सूझबूझ के बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज रोहन सालगांवकर के सामने। मालूम है ये बिल्कुल गेंदबाज है, मैच विनर,
तो उनको बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं, सिंगल बनाकर बिल्कुल संतुष्ट हो रहे दोनों बल्लेबाज। शंकर गांवकर एक बार फिर से स्ट्राइक पर। अल्टी पल्टी, इस बार टाइमिंग लाजवाब, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकली, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम के। इस बार कारपेट के साथ हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर साइल वाइंगनकर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक रन इसी बीच में आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 52 रन पर, एक विकेट पर 52 रन, 25 रन बनाए विकी नाइक ने। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक ओवर से 2 छक्के अब तक पुनाजी के बल्लेबाजी में, शंकर गांवकर के बल्लेबाजी में 1 छक्का। 4 ओवर का खेल, 52 लॉस ऑफ 1 विकेट। 5वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन। और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोड़कर के साथ। So here is the leg spinner, big appeal there, and he's back to pavilion. He's not happy. There was a big appeal from behind the wicket, convincing appeal from Vikas Desai, and also a leg spinner. So Bala is also back in to the pavilion, and it's 52. Well, Banjo is making more noise than our DJ. And right now the Banjo is running wild because they've got 1 wicket, and that's the important wicket of Shankar Gaonkar. Bala was looking good with a switch hit. 1-6 is already played. And Kakoda Boys still in a comfortable position at this moment. They have got pretty good batting depth. And in comes Sandesh Thakur. Needs no introduction. Big match player. He knows how to play in the finals and win the big finals. So I think this change to get him against Sahil Wangarkar, because he is going to bowl the leg spinners, which is going to be off spinners here for the left-handed Sandesh Thakur. So now he has not opted for that leg spin, but in fact he has bowled that off spinner. So that's the smart thinking here from Sahil. And that's exactly what is going to make the difference between the smartness of these two teams. Vikas Desai is an exceedingly good captain. The captaincy in the previous game against Asia cricketers was outstanding. He managed to tell his bowlers, convince the bowlers, give them confidence, instill the power within that yes, we can defend this total against the strong batting order of Asia cricketers, and they defended it. And it was from the local lads that shine brightly in that match as far as bowling was concerned.
This is in the air, but it has gone out of the reach. Might go for more runs. Might be a 6, and 6 it is. What a batsmanship here from this player. Punaji Kalangudkar. So Vicky has got himself going, and once Vicky got out, Punaji has taken that leadership that he needs to play till the end. And he's playing the shots, playing his shots and playing it well. He exactly knows where the fielders are placed and finding the gaps to perfection. Once again, that's good shot. That might fetch a boundary. Yes, it is. That's a good boundary. He played with the spin. He bowled an off spinner, but he played with the spin with a wonderful pivot towards the backward square leg region. Imran Mullah tried hard. Maybe Sahil expecting a little bit more effort here from the fielders. Score rapidly moving on to 63. In spite of losing wickets, there is no dip down in the run rate here from Kakoda Boys. You can imagine Sandesh Thakur, Punaji Kalangudkar playing in one team. Oh, this is the gracious shot. Graceful, elegant, class personified from Punaji Kalangudkar. This is undoubtedly one of the best shots that we have witnessed. Everything to perfection. This time in time. Oh, lucky there. Lucky Punaji. So lucky slowly going in favor of Kakoda Boys. This could have gone straight in the hands of Sahil Wangankar. But at one run, taking the score to 68 at the moment. This is a big total. 68 in 5 overs. So still 3 overs remaining. So let's see how much more big hitting we are expecting from these two players. And also there is Gauresh Nagvekar. The Ghungru as they call him. And he will be up next. डीजे वाले बाबू थोड़ा गाना बजाओ. So now in comes Kshitij Naik. First over was 1-6 and a 1 boundary, but also took up a wicket. He bowled really good in this previous match. Certainly no shot of confidence. An appeal there, and Pulaji Kalangudkar goes back in the pavilion. He was not even waiting for the umpire's signal here. He very well knew that it was inside edge, taken cleanly by Vikas Desai behind the wickets. So Kshitij strikes at the right time here for Three Brothers. And now in comes one of the contenders of the player, star player of the tournament, Gauresh Nagvekar.
Once again, whipped it with power in the mid-wicket region for a single. Well, I think he is, you can say the way he is walking, little injury niggle here, little scare, and he required that physiotherapy which he got in the morning. So I hope that he is all right. They need his services not only in batting but also in bowling department. He is a key player for this Kakoda Boys side. This is really good bowling. Top class bowling here from Kshitij. He is continuing from where he ended in the last match. He bowled really a good over where he was back was against the wall. If he had done anything wrong, then all the eyes would have been onto him. But he did a great job against Asia cricketers in the previous game, the qualifier too. This time, this was little quicker. He wanted to play that full shot, hurried on to him, and just getting the single. So there is a deep down in this run rate at the moment for Kakoda Boys, although there are good batters onto the wicket. Score moves on to 70. And we have witnessed how the match is turned around in the last 2-3 overs. The previous game was lost because of the last 2 overs considered almost 45-47 runs by Asia cricketers bowlers. They bowled 6 good overs. That's a good shot. That's a really good shot down the ground for a single. So he's finding the timing, finding the punch really well here, Gauresh Nagvekar. But so far, Kshitij is not allowing the batsmen to free their arms. He is bowling right on to the toes where you can get at the most a single. That's a Brahmastra of cricket, the Yorker, which can come to your rescue at any position, any time. This might be a catch. This is taken. Kshitij has struck once again, and Kshitij has performed way above his skillful performance in the finals. Second wicket in this over, and both are top class players, Punaji Kalangutkar, and now he gets rid of Sandesh Thakur and just concedes 3 runs in this over, keeping the hopes alive of 3 brothers. 71 for 4 in 6. So now in comes Aniket Rivankar. That's really good ball right in the block hole. He bowled in the same area, so where the batsman could not swing the bat. He needed to defend 16-17 runs in the previous game, defended it very well. Not gave any loose balls to Surya and also Mukhtar Kadri. And that's the reason was he was awarded 5,000 cash prize from Samir Wast. This time it's a good shot. This is finals. Finals somewhere around 80-85 is going to be a very good total for both the teams. It can be defended, it can be chased. Kakoda Boys were going great guns when Punaji Kalangutkar was batting. And then Punaji gone back quickly. Sandesh Thakur also went back in the same over. This time just an outside edge going to get a single. So 3 brothers are not going to be worried about the singles being taken. These are the fag end. These are the last 2 overs. You need to get the big ones. You need to up the ante here as Kakoda Boys supporters. But here the bowlers are not giving anything. They are just tightening the screws, strangled hold on these batters at the moment. No loose balls whatsoever. This is a great shot, but might be in the air. Might be a catch. Catch taken.
Gungru also goes back in the pavilion. Aniket Trivankar strikes, and three brothers are taking wickets on a continuous and regular intervals, which is getting them back in these finals. One epic turnaround. The wickets are falling. It looked as if 1995 is going to be scored easily here by Kakoda Boys at one point of time. But cricket it is. There is always a slip between the cup and the lip. This time he struck it very well. What a shot here. Aniket Bhatikar. Well, from where he has come, right from the dressing room, right from the dugout, directly facing the first ball and hits a six. Well, they still have got the batting left. Well, all the spectators must be witnessing that all the batters are back in the pavilion. I also felt so. But everyone is wrong. Cricket has seen new heroes rising onto the great occasions. And here it is. He can rise on this occasion here. Aniket Bhatikar. 79 the score moves on to, which is a pretty good total considering one more over left. This time once again he was going for the pull shot. This was much better ball. But a very good over from Aniket Trivankar. Just one lower full toss ball which was taken to task by Aniket Bhatikar. But he finishes off well. 79 for 5 after the end of 7. This time is a clean bowl. Trying to shuffle across too much on the offside, and Amit Sayed departs. This time Sachin Desai comes and plays a shot in the wide long off region. Now Aniket Bhatikar needs to be on strike for most of the deliveries. He has the capacity to hit a big sixes. We have witnessed one of the sixes. And they reach on to 80 at the moment. Once again, this is played down the ground. Might be running for the second run. They run first quickly and a throw at the keeper's hand. And he makes it in. So 2 runs comfortably taken here, taking the score to 82. So they have managed to go past 80, which is going to be the first target, somewhere around 80, 85.
It's not going to be easy total considering the bowling depth that Kakoda Boys have. Still 3 balls are left. If they can get somewhere around 90, it's going to be a little more comfort for the bowlers of Kakoda Boys. Can they get 1-6 or the boundaries from somewhere? Aniket Patikar on strike. This time he struck. Might be in the air. Might be a catch. And catch taken easily. Just 2-meter power was short. Otherwise, it could have gone for 6. It's a small difference in cricket, but small differences makes a difference in big scores. It is 82 for 7 at the moment, and just 2 balls left. In comes Harish Palekar. And this is wide. So the one extra run given away to Kakoda Boys takes the score to 83. Well, Vicky during the toss expecting to get somewhere around 80 to 85. I think they have got to that total. It's going to be really good fight. Going for the switch hit, and it went straight to the fielder. If he had found a gap, he would have got a boundary over there. But now with that single, score moves on to 84. And Sachin Desai is going to face the last ball of this 8th over. So score that will make both the teams happy. Kakoda Boys will feel that they should have got somewhere around 90-95. But I think it's a good total in the finals. And he goes for the run, and there's going to be a run out. So 85 is the target. Very good recovery by Three Brothers team in the end. It looks as if the team could have posted 90, 95, 100 runs by Kakoda Boys, but I think they kept on taking wickets. Kshitij picked up 3 wickets. It was a crucial spell from him, and that's the reason they got the momentum which was going towards the Kakoda Boys was drifted down, and they paved their way back into this match. So very good total posted in the first innings. Decent total. 85 runs required, and let's see run chase whether it can be chased down by the batting side. I had already mentioned it's going to be a fight between the batters of Three Brothers versus the bowlers of Kakoda Boys. So now it's time for both of them to come and show their best skills, best abilities in these finals. Meanwhile, it's our foremost duty to take the name of the sponsors who have helped us immensely during the course of organization of this big event. First and foremost, Honorable Minister for PWD, Environment and Law and Judiciary, Shri Nilesh Bab Kabran, ex-chairperson of Curchorem Kakora Municipal Council and current councillor of CCMC, Shri Balkrishna Odarkar, Secretary of Goa Cricket Association, Rohan Gams Desai, Varun Bab Kurchadkar, who is a very good social worker, who helps whenever cricket is there, he lends his support. Yogesh Vapkalkar, Omkar Vast, Shekhar Bilkar, who has sponsored the balls, Raj Nadiged, Sundar Naidu, Gauresh Borkar, Mahesh Naik, Wheel Point, owner, Ramesh Pillai, Rasik Kakodkar has sponsored the Best Batsman prize, Rohit Chari has sponsored the Best Bowler prize plus this trophy, Babulal Momin, Tukaram, Ismail Sayyad, Bhai Madgaonkar, Bhavariya Neeraj Sharma, one of the well-wishers has also sponsored prize. Rupesh Mahale as well. Kishan Sawant has sponsored winners and runners-up trophy. Dhillon Sawant has sponsored highest sixes. Rasik Kakodkar has sponsored the best batsman, which I already mentioned. And Rohit Chari as well, best bowler. Amrut Chari and Dilip Sawant has sponsored man of the match prize trophies. And Jai Bhavani Refrigeration and Air Conditioning Engineering has sponsored Star Kamal Catch Award. So these were the sponsors who have helped us during the course of organization of this big Star Boys of Curchorem Champions Trophy.
आमचो सगळ्यांचो बरो मागपी फ्रेंड सिद्धेश बाब काणेकर ज्यो सगळे ज्यो ट्रॉफीज आसा हांगा त्यो ताणें केल्ल्यो आसा ज्यो ज्यो चडश्यो प्लेयर ऑफ द मॅच स्टार कमाल कॅच स्टार फिल्डर स्टार बॅट्समॅन स्टार बॉलर तशेंच स्टार प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंटाची ट्रॉफी आसा ती आमच्या काण्यान म्हणल्यार सिद्धेश बाब काणेकरान केल्ली आसा जाचे जे ऑफिस आसा ते आमी कुडचडे काकोडा हेल्थ सेंटर वता त्या थंय फर्स्ट बिल्डिंगेन ताजें ऑफिस आसा सो तुमकां कोणाक कन्सल्ट करपाक जाय तुमकां कोणाक जर तर अश्यो ट्रॉफीज जाय जाल्यार तुमी डेफिनेटली ताका वचून मेळपाक जाता बऱ्यो सुंदरश्यो ट्रॉफीज ह्या टुर्नामेंटाक लाकडाच्यो ज्यो कार्व केल्ल्यो अश्यो त्यो मागीर तुमकां दिसतल्यो आनी स्टार प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंटाची खास करून एक वेगळी अशी आगळी वेगळी ट्रॉफी ह्या टुर्नामेंटाक तुमकां दिश्टी पडटा जी स्पॉन्सर केल्या सिद्धेश बाब काणेकरान आतां हांव मायक सुपूर्द करता आमचो अशोक बाब नायक जो सिनियर कॉमेंटेटर आयकुया ताजे कडल्यान फुडली जे 4 ओव्हर आसात ह्या मॅचीचे सांगतले अशोक बाब नायक. थैंक यू, धन्यवाद हरीश सर. एक अच्छा टोटल है फाइनल के मैच की अगर बात की जाए तो टारगेट है सामने 85 रनों का जीतने के लिए और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर खेल की शुरुआत होती हुई और गौरेश नागवेकर और घुंगरू गेंदबाजी पर पावर प्ले का ओवर लेकर एक पेरनेम एक्सप्रेस के तेज गेंदबाज इस विकेट पर ओवर पिच गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे ऑन साइड पर गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं पावर प्ले का ओवर एक लॉन्ग गन और एक मिड विकेट दो फील्डर है सर्कल से बाहर काकोड़ा बॉयज और थ्री ब्रदर्स फाइनल का मुकाबला स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम चैंपियंस ट्रॉफी का ये मेगा फाइनल का मुकाबला इस बार ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम का विकास देसाई और साहिल वाइंगणकर ये जोड़ी सामने गौरेश नागवेकर काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से पहला ओवर एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही पुनाजी कलंगुटकर ने बनाए 33 रन 25 रन बनाए विकी नाइक ने आखिरी ओवर अच्छा रहा इमरान मुल्ला का सिर्फ 4 रन दिए 2 विकेट चटकाए छोटे गेंद हुक किया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर विकास देसाई उर्फ भावों के बल्ले से नजाकत भरा छक्का डीजे छोटी गेंद मिली और छोटी गेंद पर कड़ा प्रहार विकास देसाई के बल्ले से 6 रन के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए स्कोर पहुंचा 7 पर अपने रनअप पे चूके वापस निकले गौरेश नागवेकर अगली गेंद लेकर एक लंबे रनअप के साथ लंबे कद के खिलाड़ी तेज गेंदबाज बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हमेशा हिस्सा लेते हैं गोवा हो सिंधुदुर्ग हो महाराष्ट्र हो कारवार हो पेडनेम एक्सप्रेस कानकोन हो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी ब्लाउंडली शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर विकास देसाई के बल्ले से नजाकत भरा छक्का थैंक यू डीजे कैनी डीजे धन्यवाद और अगर एक सिक्सर लगाने में सफल रहे तो सर शेखर काकोड़कर जिनके ओर से 1,500 रुपए का इनाम जारी है लगातार तीसरे सिक्सर के लिए सर शेखर काकोड़कर जिन्होंने 1,500 रुपए का इनाम रखा है देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है बल्लेबाज हावी होता है या गेंदबाज गौरेश नागवेकर इस गेंद के साथ कम बैक करता है 2 लाजवाब शॉट विकास देसाई स्ट्राइक पर और इस गेंद पर अगर विकेट निकाला तो गौरेश नागवेकर गेंदबाज के लिए 500 रुपए का इनाम सर तेजस सावन बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज को बीट किया अच्छी किस्मत गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा नहीं लिया बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए क्रिकेट में
गेंदबाज के साथ बल्लेबाज के साथ गेंदबाज को भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है। बिल्कुल मैदान पर गौरेश नागवेकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, और ये ऑफर बिल्कुल पूरे इनिंग के लिए शुरू है। तेजस सावंत ना इस ओवर के लिए, दोस्तों माफ कीजिए, इस ओवर के लिए, इस विकेट के लिए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। एक अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लेन की, मौका नहीं दिया बल्लेबाज को हाथ खोलने का, लेकिन 85 का टारगेट है सामने पावर प्ले का ओवर। जो 2 शॉट होने चाहिए थे 2 लगाए। विकास देसाई ने स्कोर हो चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान से। अच्छी रही गेंदबाजी थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम के, क्योंकि सिर्फ आखिरी 3 ओवर में 16 रन बने, और खास करके आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन बने, 16 रन बने 3 ओवर में अंतिम। और वहीं पर एक बड़े स्कोर के एक बार लग रहा था कि 100 से आगे निकल रही है, लेकिन वहीं पर रोका गेंदबाजों ने। इसी बीच में संदेश ठाकुर आ चुके, जो और एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, अप कटर लेग कटर, उसी के साथ यॉर्कर, ये उनका बिल्कुल ब्रह्मास्त्र गेंदबाजी में काकोड़ा ब्रदर्स क्रिकेट टीम के ओर से। और संदेश ठाकुर गेंदबाजी पर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर सामने साहिल वांगणकर। बल्ले से निचले हिस्से से लगी गेंद चलेगी स्क्वायर लेग की तरफ, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और एक रन इसी बीच में तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 14 रनों पर। विराट तेंदुलकर हमारे साथ पहले दिन में, दिवेश नाइक वो भी स्कोरिंग के लिए बहुत ही अच्छे स्कोरर, वो भी जुड़ चुके थे। कल के दिन में संतोष गांवकर जो कमेंट्री बॉक्स में नेत्रावली से इस मैदान पर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके थे। और थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे संदेश ठाकुर अपने लंबे रन पर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। छोड़ा जाने दिया इस बार ऑफ स्टंप पर, यह गेंद गेंद चली गई विकेट के पर के हाथों में। बहुत अच्छी लाइन पर संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, स्कोर बोर्ड पर टोटल 14 रन बिना किसी नुकसान से। टारगेट है सामने 85 रनों का मैच को जीतने के लिए, फाइनल का मुकाबला। सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। फुल टॉस गेंद हाफ वॉली पर लेकर गेंद को लगभग ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन तब तक अपने सुरक्षित पॉपिंग क्रीज में दोनों बल्लेबाज एक सिंगल को पूरा करते हुए अच्छी गेंदबाजी हो रही है। सामने साहिल वांगणकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर कप्तान टीम के, थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम के विकास देसाई उर्फ भाऊ। ये टूर्नामेंट बिल्कुल उनके लिए यादगार रहा, क्या शानदार बल्लेबाजी की। कौन बोलेगा कल शाम की बल्लेबाजी उनकी, बिल्कुल बिल्कुल 40+ में बिल्कुल छा गए। सामने संदेश ठाकुर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, ओ हापाली पर लेकर गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर थोड़ी सी आगे गिरी, थोड़ी सी आगे गिरी, थोड़ी देरी हो गई। मैं कहूंगा कि थोड़ा अगर शुरू में स्टार्ट लेते तो ये कैच बन सकता था। इस विकेट पर अगर इस आउटफील्ड की मैं बात करूंगा, ग्रास है बिल्कुल, इस ग्रास पर आप डाइव्स लगा सकते हैं, कोशिश होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मुकाबला फाइनल का था। मैदान पर डाइव्स लगाते तो बिल्कुल बात बन सकती थी। फुल टॉस गेंद फिर से हवा में, पॉइंट पर मौका, और इसी के साथ पहला विकेट चला गया थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम का। डीजे जो लेफ्ट हैंडर बैटर वो आ चुके हैं मैदान पर। एक अच्छा विकेट निश्चित रूप से चटकाती हुई मैदान पर काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम।
काफी निराशा के साथ निश्चित रूप से वापस निकलते हुए। दो बड़े शॉट जरूर लगाए थे, 13 पर खुद के व्यक्तिगत। संकेत मोरजकर न्यू बैटर और निश्चित रूप से एक शानदार शुरुआत सामने गेंदबाजी में संदेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर टोटल 16 पर रुका हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर से गार्ड लेते हुए सर नीलेश नाइक और उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक और पुण्या पालकर, ये त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ। और बाबुश प्लीज और बाबुश और सुजन प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इसे भी ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म। अच्छी गेंद इस बार डीले हाथों से खेला, हल्के से टैप किया पॉइंट पर फील्डर। पहले रन के लिए निकलना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा फील्डर है मौजूद, बिल्कुल सही सोच। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, जिस ओवर में सफलता मिली। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का, और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन। संदेश ठाकुर का एक किफायती ओवर, 1 ओवर कोई मैडल नहीं, 3 रन 1 विकेट। गेंदबाजी का विश्लेषण, 16 रन 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। 2 छक्के लगाकर विकास देसाई आउट होकर वापस। साहिल वाइंगणकर 3 पर, और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर लेफ्ट हैंडर बैटर संकेत मोरजकर। तीसरे ओवर की चर्चा हो रही है मैदान पर, और फिलहाल प्रजेश उर्फ विकी नाइक एक बार फिर से दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर। बाबुश प्लीज मान्यवर कक्ष से संपर्क करें। बाबुश और सुजन, बाबुश और सुजन आप आसपास है तो प्लीज मान्यवर कक्ष से संपर्क करें। आ गया, थैंक यू। विकी नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। प्रजेश उर्फ विकी नाइक। और ढीले हाथों से खेला था इस बार, लेकिन गैप में खेला। कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया साहिल के खाते में, एक रन जो कि स्कोर के खाते में। 17 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर मैच का जारी। 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। सुंदर बड़ी ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी, कौन होगा हकदार? बस थोड़ा समय बाकी है। इस साल की चैंपियन कौन टीम होगी? फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर। ऑफसाइड पर एक फील्डर को बढ़ाते हुए विकी नाइक, ऑन साइड पर एक मिड विकेट बाउंड्री पर सीमा रेखा पर तैनात फील्डर को एक डीप स्केवर लेके एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ऑफसाइड पर कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक थर्ड मैन पर फील्डर विकेट जो कि मिड ऑफ पर एक ऑफसाइड पर फील्डर, उसको थोड़ा पीछे किया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खड़ा कर दिया प्रजेश उर्फ विकी नाइक ने, और अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत ही लाजवाब स्वीप मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। अपना खाता शुरू करते हुए 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर पीछा किया था, अच्छी किस्मत, गेंद ने भीतरी किनारा नहीं लिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल जारी, तीसरे ओवर का 85 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। छोड़ा जाने दिया, ऑप्टम से बाहर कट होकर और बाहर की तरफ निकले, एक ब्रेक इन कटर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। 24 रन 1 विकेट पर। 24 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस।
और एक तगड़ा शॉट मिड विकेट पर, हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे दो तगड़े शॉट इस ओवर में। विकी नाइक पर गेंदबाजी पर बिल्कुल हमला बोल दिया संकेत मोरजकर ने, 12 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर डीप पर बाउंड्री लाइन से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ 31 रन टोटल, 31 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर 10 रन के साथ रन बना रही है थ्री ब्रदर्स क्रिकेट टीम। एक अच्छा रन रेट के साथ जरूर चल रही है, लेकिन एक विकेट बहुमूल्य खो चुके हैं विकास देसाई उर्फ भाऊ के कप्तान आउट हो चुके हैं। और ये दो बैटर मैदान पर, साहिल वांगणकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। ओ सामने, ओ ये मौका था, ये मौका बिल्कुल था, हाथों से छूटा अपने फॉलो थ्रू में। विकी नाइक सामने, एक मिस टाइम शॉट था साहिल वांगणकर का, और ये मौका हाथों से छूटा। अपने आप पर जरूर नाखुश हो गए, नाराज हो गए, मालूम था ये बड़ा विकेट था अपने लिए, और इसी बीच में कोई रन स्कोर के खाते में नहीं जुड़ता हुआ, और स्कोर बोर्ड पर टोटल खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 31 लॉस ऑफ 1 विकेट, 31 रन 1 विकेट पर। एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हो रहा है दोनों के बीच में। आज शुरू के 2 मैच एक तरफी रहे, तीसरा मैच अच्छा रहा आखिरी ओवर तक, और उम्मीद है सभी दर्शकों की कि ये मैच भी बिल्कुल एक कांटे का टक्कर देखने को मिले आखिरी ओवर तक। संदेश ठाकुर एक बार फिर से खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर लेकर, अच्छी सोच है मैं कहूंगा कप्तान की, क्योंकि मालूम है विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सोचकर फिर से एक बार संदेश ठाकुर जिन्होंने, जो कि एक ब्रेक तो जरूर दिलाया था, एक विकेट चटकाया था, उनको वापस लिया, जो कि लाकर गेंदबाजी के मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर संकेत मोरजकर। ओ इस बार बहुत अच्छी गेंद, पीछा किया था ऑफसाइड पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अच्छी किस्मत मैं कहूंगा संकेत मोरजकर के लिए, बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। अपना दूसरा ओवर, टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए 31 रन 1 विकेट पर। ओ ये स्ट्रॉन्ग जोन है बैटर का, संकेत मोरजकर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे सेवन पर 37 रन 1 विकेट की छोटी गेंद मिली, और संकेत मोरजकर बिल्कुल ये मौका कहां छोड़ेंगे छोटी गेंद पर। छोड़ा जाने दिया, तेज गेंद करने की कोशिश, इस बार लाइन पर भटके, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 38 रन पर, 38 लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर जारी है मैच का, 85 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, बॉलर के पास से मिड ऑन पर फील्डर जब तक आते, लॉन्ग ऑन से गेंद को उठाते, फील्ड करते, आराम के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बना, सिंगल के साथ 39 रन टोटल, 39। एक विकेट पर 39 रन, 39 लॉस ऑफ 1 विकेट। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। सामने साहिल वांगणकर, संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट।
अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। कवर पॉइंट पर फील्डर, अंपायर का इशारा, लेग बाइज का एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 40 रन पर। 45 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बाकी है। 9 विकेट हाथों में है और मुकाबला बिल्कुल अच्छा हो रहा है दोनों के बीच में। स्कोर टोटल 40 रन, 1 विकेट पर। लेफ्ट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंडर के लिए लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। संदेश ठाकुर अगली गेंद लेकर। ओ, इस बार टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, ज्यादा शफल हुए थे। थोड़ी सी तेज गेंद थी, पुलर लेन की गेंद के आगे पिच किया तो एक सिंगल जरूर बना स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 41, 41 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। (41) टोटल स्कोर। 44 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामने साहिल वाइंगणकर। कारपेट के साथ खेला, मिड विकेट पर फील्डर, एक सिंगल तो बनेगा। एक सिंगल के साथ थोड़ा सा स्कोर जरूर आगे बढ़ता हुआ। 42, 42 पर। खेल 4 ओवर का, आधे ओवर का समाप्त हुआ। 42 रन, 43 रन अभी भी चाहिए। 4 ओवर का खेल बाकी है। इस लगभग 11 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे। 9 विकेट हाथों में है। तो असलम भाई, पूरी आपकी ऑर्गेनाइजर कमेटी, स्टार बॉयज ऑफ कुरचरेम, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। इतने बड़े टूर्नामेंट में आपने मुझे कमेंट्री के लिए हिस्सा दिया। आप सभी पूरी टीम का, आपका परिवार का मैं अशोक नाइक बहुत आभारी हूँ। हरीश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विराज सर। तो इसी के साथ मेरा सफर दोस्तों आपके साथ यहीं पर समाप्त होता है। रुकता हूँ और आगे का हाल माइक्रोफोन पर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल दमदार आवाज सर, वॉइस ऑफ गोवा सर, बिल्कुल। लेकिन गोवा में सर अब आने वाले समय में बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जुड़ जाते हैं सर हरीश काकोडकर के साथ। आइए सर, एक बार फिर से माइक्रोफोन पर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। So now this is important over here from Goresh Nagwekar Gungru. And that's the reason they need a wicket at this stage. Kakoda Boys somehow just lost 1 wicket, 3 brothers here. So crucial phase of these finals. Oh, that's a good start. That's a very good start. Might be a chance of a run out. He's chancing his arms and gets the second run at the non-striker's end, but they make the second run comfortably. I think it was not wrong from Punaji to shy on these terms. They need a wicket. If these batters keep on batting like the way they have batted after Vikas Desai got out, I think sensible and very measured and calculative in the run chase till this point of time. But one of the best bowlers of Curchorem Champions Trophy with the ball in his hands, Ghungru. There's pace, there's sheer pace. By the time the bat coming down, the ball has already hit his legs. There's the pace that of Goresh Nagwekar. It was missing in the first over as Vikas Desai went after him, got 2 sixes against his name, which he would not have liked. Oh, what a delivery! What an exceedingly good delivery. Not only beaten the batsman, but also beat the keeper over there behind. Ricocheting of the hands of Punaji Kalangudkar and going for the buys. Well, this was like a bullet that was released from the gun. Too fast, too furious here, Goresh Nagwekar in the finals of Curchorem Champions Trophy.
Gungro buzzing fast. Pernem Express once again playing down the ground shot, and that's the only thing that they can do at the moment with the pace that he is delivering with. He was a little injured, injury niggle that costed him a little speed, relaxation, lagging of speed. He was much quicker in the first day when the league matches were held and Kakoda Boys won all their 4 matches. He was giving them the breakthroughs in the first over itself. But still giving 100%. This man, Sanket Moraskar, still holds the key, I feel, for Three Brothers. There's a rank half hawk here. He could have played a pull shot and he could have got at least a boundary. Lucky Goresh Nagvekar over there. Well, Sanket Moraskar will not be fizzled by the speed of this speed gun from Pernem Express, as they call him, Goresh Nagvekar, because Sanket has already represented Goa under 25 in leather ball cricket. So he must have faced many quick bowlers in his career. And I think he will like the ball coming onto the bat. This time did not time it well. Might get just a single. Too much pace here from Gauresh. The speed gun showing somewhere around 125 at the moment. Well, it can be much quicker than that. This finals is really going to be intense. We expected this to happen. Once Vikas Desai was back in the pavilion, then it was even Stevens, because he was par excellent, skillful, and timing was so good. He played innings and continuous innings for Three Brothers to get them into the finals. This is in the air. This might be a catch. Oh, catch dropped here. This was a turning point, Sachin Desai. And this might be working against their favor, Kakoda Boys. This was the moment. We live in this moment. We live to be heroes. But here the catch, by the time it came, he was into the position. This should have been taken. But now there is no point talking about. So score after completion of 5 overs is exactly 50. So 35 runs required in 18 balls. The equation is not difficult at the moment for Three Brothers with 9 wickets in hand. म्हणल्यार आमचे एक बरे सिनियर कॉमेंटेटर जे महाराष्ट्र बांदांतल्यान आयिल्ले आनी ताणें बरी हांगा सुंदर अशी रित्या कॉमेंट्री केल्ली. मोस्ट एक्सपिरियन्स कॉमेंटेटर अशोक नायक सर and Balkrishna Hodarkar is giving a wonderful memento to him as a memory to relive the moment, to cherish the moment of this Star Boys Champions Trophy. So thank you very much, sir, for all your experience and your wonderful words and your experience of the game, telling all the spectators on AB25 and also all the viewers live. In comes Aniket Bhatikar. 35 runs required in 18 balls is the equation. So here comes Aniket Bhatikar. That's going to be an important... oh, that's good fielding. Very good committed fielding here. Saved 3 runs here. I think it's Gungru. He's everywhere right now. That catch, maybe it is lingering into the memory of the supporters of Kakoda Boys. But I think once the bullet goes out, you cannot get it back. So now it's up to taking the wickets here, Aniket Bhatikar. Can he take the wicket of Sanket Moraskar and make this match more lively? If Sanket stays under the wicket, he can single-handedly win this match for Three Brothers. This is in the air. This might be 6 runs. This is 6 runs. Yes, it is timed very well. It has been timed very well. I told you he is going to be the key. He has been into form from the last match. Player of the match in the previous game in the qualifiers. And now once again rollicking in the finals. Score moves on to 57. Sanket Moraskar has decided he is going to go after Aniket Bhatikar. They need a wicket
and need a wicket quickly here, Kakoda Boys. And this might be wide, and one more to the extras column. 2 runs conceded here. Every run is going to be valuable here. Every run will count. Every run will be cherished by the supporters of Three Brothers. You cannot concede such loose balls. I think it needs to be more tighter. The bowling needs to be tighter, and the fielding also needs to be on the toes. If at all the bowlers are not getting the wickets, then I think the fielders should give a wicket here to Kakoda Boys. That's a good ball, and just gets a single. That's very sensible batting. Sahil after Vikas Desai and Punaji Kalangudkar was the highest run getter, was the third player, in fact, to get a crossover for 100 runs in this series. Two catches dropped of Sahil Vaingankar, one by Vicky of his own bowling and second by Sachin Desai. That is really costing dearly here for Kakoda Boys. This is in the air. This is going to be an important catch. Gongru takes it. The turnaround in these finals. Well, if you have witnessed one of the epic finals, this is it. You are living into the moment of Star Boys Champions Trophy, and we are witnessing an epic turnaround here. Sanket Moreskar was playing a classy knock in the finals, and he departs, and the match is alive. Eighteen runs in the last over for Amit Sayyed. It could have been a little better,
But maybe Vicky thinks I can restrict them in the last over, and he gives the responsibility to Amit Sayyed here. That's a poor ball here. Loose ball taken to task. Shot wide outside and goes for 6 runs. The risk is not paying off of Vicky at the moment. .68 is the score. That's a good ball. That's a good ball here. Asking for a wide, but it was well inside. That was a mistake committed by Amit Sayyed. Bowling short, the ball bounced more, and it was easy to play the uppercut shot. These are the things. These are the errors that should be minimized here. And there is a field change here prompted by the bowler because of that shot outside the off-stump bowling, getting the extra cover now, more towards the point region. That's quick. That's really quick here. Vicky! Oh, just falling short. He came quickly, but it was not timed. It hit at the top part of the bat. That was just ballooned outside the 30-yard circle. Well, still 3 brothers will be very, very hopeful here. 16 of 8. 16 of 8. Just 1 6 away. 1 boundary away. Can it come from Imran Mullah? They want a good innings here from Imran Mullah. Maybe a 6, maybe a boundary can get a victory for 3 brothers. That was a short ball. He missed it altogether. 1 per the over. That was a bouncer ball here by Amit Sayyed. Wow. The pressure on Imran Mullah at the moment. And Amit Sayyed is bowling very well. Just conceding 8 runs in this over so far. This is the most important ball of this tournament, of this championship. This is in the air. Might be a wicket. Yeah, dropped it. He dropped it. Oh my God. These are easy catches being dropped, and 1 more for Kakoda Boys. I think this was a sitter. This should have been the important wicket down. Oh. Now, 1 more chance has gone out of the hands, popped out of the hands. Whether it is going to pop them for the runners-up trophy, or whether still their chance is not going to hamper their chance for the championship. Well, I'm still clueless why Vicky is not bowling, but there is no point in talking now. Maybe Niket Bhatikar is the right option, chosen by Kakoda Boys. He can be the hero here if he can defend 15 runs. That's a good ball. That's in the air. Might be a catch. No. Just short. Sahil Vaingankar now has to hit a big one. 14 of 5. What a finals we are witnessing. What a finals. Everybody is on to their feet. This is the first finals. Yes, absolutely right. I've witnessed so many finals, but this is one of the best that I witnessed. Not too many finals. Most of the finals are one-sided, played on this ground. But this is going right down the wire. It is just a matter of 1-6 for 3 brothers. It's just a matter of 1 or 2 wickets here, or 2 dot balls for Kakoda Boys. 14 of 5. This is in the air. This is in the air. Catch taken! Catch taken! Look at Kakoda Boys camp. Look at them.
This is going to be such a finals, thrilling contest, incredible match we are witnessing here. Still, Rohan Salgaonkar, one of the highly rated and popular cricketers in Goan cricket circles. He can still do the job. They have got the batting left. 14 runs required of 4 balls. And this might be a wide. This is definitely going to be wide. Umpire Nilesh Naik. And suddenly you can see somebody is saying thumbs up. Ball a few more from Three Brothers side. So much of crowd here in Curchorem Champions Trophy by Star Boys. 13 runs required of 4. That's a good ball. Low full toss ball is always a good ball here. Aniket Bhatikar can be the hero here. Aniket Bhatikar coming all the way from Sangam. He was picked in the auctions by Vicky. And now he has got to perform for last 3 balls. Can he do the job? 12 of 3. 12 of 3. Still possible. And Imran Mullah. Well, I think when auctions was going on, if somebody can be bidded for 31,000 points after 50,000 points, and if somebody wants to live in this moment, it is this moment to show that 31,000 points were worth. Imran Mullah on strike. 12 required of 3. This time it strikes. It might be 6. Oh, 6 runs. 6 runs it is. Boy, oh boy. Good effort there from Bala. He tried hard. He tried hard. Imran Mullah. That's out of 31,000. This is 15,000. 6 runs required of 2 balls. So 15,000 points have been worth valued here by Imran Mullah. 15,000 remaining. Can he score one more 6? Can he score one more 6? What a finals. What a finals. Nobody wants to predict the winner here. Nobody wants to predict the winner. Can he bowl a dot ball here? All 3 options are open at this moment. 6 of 2. Here comes Aniket Bhatikar running to Imran Mullah. And this is wide. This is wide. There is still a drama in this match. There is still more drama left. 5 of 2. 5 of 2. There's a good shot in the air and dropped. They want to go for the second run. And that's going to be a run out. Oh, finally it's left up to the last ball. Well, not only the pressure on the players, but also pressure on the supporters here. Wow. What a finals. Well, nobody would have imagined that this is going to go in the last ball. 4 runs are required. Imran Mullah on strike. And if at all he wants us to show that that value is worth of 31,000, he has already showed 1-6. It's just a matter of 1 shot. It's just a matter of 1 dot ball for Kakoda Boys. That's how it's close. It's on the knife edge at the moment. And if it's a tie, it's a super over. If it's a tie, it's a super over. I think we are witnessing such sorts of things in IPL as well. So you can say this is the IPL of Curchorem. So supporters coming, supporters of Three Brothers coming on the ground and cheering Imran Mullah, saying you hit that for boundary. Can he hit that for boundary? Can Aniket Bhatikar bowl a dot ball? Here comes the last ball. Curchorem Champions Trophy. The big trophy is at stake. And he bowls a wide ball. Oh my God. Oh my God. He bowls a wide ball. And there is still a lot for me to comment. Still in this one ball, there is a lot to comment. Well,
Super over is also possible. Tie is possible. A win for three brothers. A win for Kakoda Boys. I want to see who is going into this inside the ground on 22 yards after this ball is bowled by Aniket Badigar. Here comes the last ball. And that's a wide. That's a wide. Oh, that's a wide. So umpire has gone for the third umpire review. Anga naga code please. Anga kone naga please. So third umpire वचून कन्सल्ट केल्ले आसा मेन अंपायराक आनी मेन अंपायराचे डिसिजन स्टँड्स. सो वायड जे दिल्ले आसा ते वायड उरता अशें डिसिजन. एक बॉलाक जाय 2 रन.
रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक मातशें भायर सरचें. मातशे जे कोण हांगा आसा तांणी मातशें भायर सरचें. वी हॅव कम टू द डिसिजन. आमी डिसिजनार पाविल्ले आसा कुडचडकार आनी आतां डिसिजन तुमकां सांगता. मातशें बेगीन चला प्लीज. मातशे बाकीचे कोण आसा ते मातशे भायर सरात. प्लेयर्स रेडी रावात. काळोख जाता. मातशे बेगीन. सो फायनली मॅच आता सुपर ओव्हरीन खेळटले. एक ओव्हर दोन्ही टिमीक. सो 3 बॅट्समॅन आणि 1 बॉलर. आता सुपर ओव्हर. सो बोथ द टीम्स आर फायटिंग फॉर दिस ट्रॉफी. जो विनिंग ट्रॉफी आसा तशीच रनर्स अप ट्रॉफी आसा ती आता सुपर ओव्हरीन डिसायड जातली. अँड दे हॅव ऑल एग्रीड. So match will be in super over, which has agreed by the captain and the owners of both the teams. So we are playing super over now. Match begin karat. 3 batsmen of 3 brothers and bowler. सो मातशे जे पळय कोण सपोर्टर्स आशिल्ले बाउंड्री लायनीचेर मातशे रिक्वेस्ट करता मातशे फाटल्यान वचचे. भुरगे जे कोण आसात सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता मातशे. आता सुपर ओव्हरीन ही ट्रॉफी जी जातली ती डिसायड जातली. दॅट्स द फायनल डिसिजन. कन्क्लुजन दोन्ही ओनरांनी आणि कॅप्टनांनी मेळून घेतिल्ले आसा. सो बरें दिसता की एटलिस्ट आमी आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन मॅच आशिल्ली ती सुपर ओव्हरीनच वचपाची शक्यता दाट आशिल्ली. सो तांणी डिसायड केल्ले आसा. मॅच 50-50% आशिल्ली. उत्तेश नायक, नोरू वस्त आनी समीर वस्त हांकांय बी मन काळजांतल्यान उपकार. तशेंच राम आनी बबलू हांकांय बी. कारण खंय तरी आमी एक कन्सेन्ससात पावले की कुडचड्यार येदे व्हडलो टुर्नामेंट घडोवन हाडटात कुडचड्यार चॅम्पियन्स ट्रॉफी ताजी सांगता खंय तरी जावपाक जाय. आनी अशेंच टुर्नामेंट फुडें जर घडपाक जाय जाल्यार खंय तरी ताजी एंड जावपाक जाय. आनी तो एंड पळोवया तो स्वीट जावपाक जाय. आनी कसलीच आमची खंत काळजांत दवरनासतना आमी ही सुपर ओव्हर खेळटा. आनी आतां चॅम्पियनशीप जी जातली, जी ट्रॉफी जातली ती आतां सुपर ओव्हरीन डिसायड जातली. मातशे बेगीन करात. येस बॅट्समॅन रिक्वेस्टिंग बॅट्समॅन मातशे बेगीन यात. ओके बाळकृष्ण ओडारकर आमचो सगळ्या मोगाचो लाडको क्रिकेटर आनी तसोच आदलो चेअरपर्सन. आनी एक प्रायज अनाउन्स केल्लें आसा. प्रायज व्हेरी बरें आसा, इंट्रस्टींग आसा की आतां हे जी मॅच जातली थंय चॅम्पियनशीप जे कोण जिखतले ताच्या विपरीत बेस्ट सपोर्टर आसा ताजे खातीर एवॉर्ड दिल्लो आसा. बेस्ट सपोर्टिंग टीम, बेस्ट सपोर्टिंग टीम आनी सपोर्टर्सा खातीर हे इनाम दिल्लें आसा. जे जिखतले ताच्या ऑपोजीट टीमीक हे ट्रॉफी स्पेशली बाळकृष्ण ओडारकर बाबान दिल्ली आसा. सो आनी ती बी ट्रॉफी बरीच आसतली, मोठी आसतली. सो पळोवया ती ट्रॉफी कोणाक वता. सो लेट्स कॅरी ऑन विथ दीस सुपर ओव्हर.
हांव रिक्वेस्ट करता हर्षद गांवस देसाय मातसो हांगा यो आनी तुका मानाचें स्थान दवरल्लें आसा. बाळकृष्ण ओडरकर तुजो मित्र हांगा बशिल्लो आसा. सो तो तुका रावला. सो हांगच्यान बसून सुशेगाद मॅच पळोवया. नाव इज टायम फॉर दी सुपर ओवर. Here we go for the super over. Gungru is going to bowl. So giving the countdown. 3, 2, 1. Let's go. Vikas Desai Bhau is going to face this first ball. That's a good shot down the ground. That's a good ball. So he's just going to get a single. They want to go for the second run. This is really good running between the wickets. Sanket Moraskar scampers through. Not only because one extra run has been scored, but it gets Vikas Desai on strike. The best batsman undoubtedly of this Curchorem Champions Trophy. Here comes the second ball. This time he goes for that shot. That shot has got him so many sixes. So far at this moment, he is the highest six scorer of this competition by a long distance. So almost reached 18-20 sixes in this tournament. Vikas Desai, can he hit one more against Gungru? The best bowler of this tournament against the best batter. Once again, this might be a single chance of a run out. Oh, and this is going to be a run out. Sanket Moraskar felt that there was a single on here. And Vikas Desai felt he needs to be on strike. So it's 2 for 1 in super over. So now Sahil Wangankar comes onto the wicket. So Vikas Desai on strike. Still 3 balls are left. The score is 2 for 1. Vikas Desai with number 8 on his jersey. Can he get a 6 here? He goes for the big one but doesn't time. And they just get a single that gets Sahil Wangankar on a strike at this moment. It's really a good battle here between three brothers and Kakoda Boys for the super over for fight for the championship. So 3 runs, still 2 balls remaining. Gungru has really bowled well so far in these competitions, and it's just a matter of 2 more good balls. But I've witnessed even 5, 6, 7 runs sometimes can be difficult to get in the super over, because at this point of time, when it's almost close to 6:30, it's difficult to get sixes. This time a dot ball. Appeal here from behind, but I think it's negated by the umpire. The bat hitting the ground rather than the ball hitting the bat. So far it's just 3 runs and it's going to be the last ball of the super over. Goes for the big one. They might be searching for the second run. Bala comes in. And that's going to be a good throw and might be a run out, and it's a run out. So it's finally in that super over they managed to get 4 runs. 5 runs is required for Kakoda Boys to win this championship. So let's see whether 5 runs can be chased down or whether 2 wickets can be taken here by the bowler of 3 brothers. Vicky, मातसो यो आनी बॉल सिलेक्ट कर. The ball is with the umpire. Okay.
5 रनाची गरज. रिक्वेस्ट करता काकोडा बॉयज बॅटर्स मातशे बेगीन येयात. So third batsman is going to be Bala. Let's see who is going to be the bowler. Maybe Sahil Wangankar. So 5 runs required for the championship here. Oh, it's Rohan Salgaonkar. It's not Sahil Wangankar. So Rohan has to defend 4 runs. 5 runs to get here. And Punaji Kalangudkar, who has scored more than 100 runs in this competition, he will be batting. Bhau is still marshalling his troops. He exactly knows what is the strength of this man. They need to get a wicket. Even these 4 runs can be defended. Ball is not going to be easy to hit for 6s at this moment. So the fielders have to be on the toes, asking the fielders to come a little bit inside, not giving the batters 2 runs. Here comes Rohan Salgaonkar. Can he defend the undefendable at the moment? This is a very nicely played a short arm jab for a single. He plays that shot very well. So not much of a pressure on the batters. Maybe Babu might be thinking to get extra fielders inside at this moment to put pressure on Vicky. That opens the field. Once you get less than 6 runs per that super over, that opens the field here, because as captain of the fielding side, he has to stop the singles as well. So it's a catch-20 situation here for Vikas Desai as a captain. Vicky is very smart. He knows that it's not a difficult task to get for the 6s here. Just can do the job with singles. There are just 11 fielders. You cannot get more than that. And there are wide open spaces between all those fielders. So getting single is not going to be difficult at the moment. 3 more runs required in 4 balls. So he sets the field right here as per his going for the switch it, and that's a dot ball. And that's the only way they can neutralize this. They are asking the batters to play a shot and a wrong shot and a false shot at this moment to get a dot ball somehow. That's a good ball. This is straight in the hands. This is a good super over. Fantastic super over here. 3 runs required of 2 balls now. Now what is the field going to be? Whether he is going to keep the same fielders or whether he is still going. So I'll request the organizers, please tell me the decision if this super over becomes tie. Please tell me the decision now. So decision is it is going to be bowl out with 3 bowlers. So now 2 balls, 3 runs required. So the field changes now. They are ready to go for the end. Maybe they just want to get them 2 singles of the 2 balls and ready for the bowl out. Maybe that's the thinking of Vikas Desai at the moment. This is in the air. This might be a catch. Taken! Oh my God, what a turnaround here. What a turnaround.
I told you it's going to be six. Hitting is going to be difficult at this point of time. He clipped it. He whipped it over the mid-wicket region, but it was straight in the hands. Now 3 runs are required of 1 ball. I think captaincy of Vikas Desai must be applauded here. Top class captaincy here, getting the fielders close to the bat, asking the batsman to play the false shot, and then batsman play the false shot, put a dot ball, then 1 ball going straight to the short mid-wicket region fielder. And we are witnessing an epic final. Still the final is continuing, and once again is the same equation: 1 ball, 3 runs. It was the same situation when three brothers were batting. Now it is the same situation when Kakoda Boys are batting. It is 1 ball, 3 runs. This is a never-ending mathematics and calculations here of these finals. Can Bala do it? Kakoda Boys need 3 runs. 2 will make it tie. That will make the match go to super over. In fact, a ball out. Here's the last ball. He goes for the switch hit, and Kakoda Boys win this championship through Bala. It was an epic finals. What a great game. What a match this is. Super over also went in the situation where 3 runs are required. But congratulations to three brothers as well because of their sporting spirit. And the trophy for the supporters sponsored by Balakrishna Hodarkar will go to three brothers supporters for showing the wonderful spirit in the game. So now is over to prize distribution ceremony and requesting everyone, सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता मातशे कडेन येयात. सगळे सपोर्टर्स मातशे रिक्वेस्ट करता मातशे कडेन येयात.
आणि बालकृष्ण अडरकर तशेंच बाकीचे जे आमचे मानेस्त आसा तांकां सन्मानान माचेर हाडून बसका दिवची. हर्षद गांवस देसाय, बाबू भेंडे, शेखर काकोडकर. हांव रिक्वेस्ट करता सगळे सपोर्टर्स श्री ब्रदर्स आणि काकोडा बॉयज मातशे माचे लागीं येयात. रिक्वेस्टिंग द आसा मन हलके करून आणि मनान कोणाचे बद्दल रोष ना दवरून जर खंयच्या टिमीन हांगा तें व्हडपण दाखयल्लें आसा जाल्यार ते थ्री ब्रदर्स आसात. हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी थ्री ब्रदर्साक जोड्यान ताळयो दिवच्यो. ते ताळयो तांकां फावो जाता कारण खंय तरी हाका अंत आसपा जाय आशिल्लो, समाप्ती जावपा जाय आशिल्ली. एक पावल फाटी मारप हाचो अर्थ असो न्ही की आमी हरले, पूण तांकां दिसलें की क्रिकेट कुडचड्यार मुखार पावपा जाय. ह्या ऑर्गनायझरांनी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडला, तो बऱ्या रित्यान घडोवन हाडला. तांकांय बी खंय तरी तांणी इतलो मेहनत घेतिल्ली आसा ती खंय तरी फळाक लागपा जाय हें तांकां दिसलें. म्हणून तांणी थ्री ब्रदर्सांनी डिसिजन घेतलें की आमी सुपर ओवर खेळटले. म्हणून म्हजो तांकां काळजांतल्यान तुमकां उपकार आटयता. कित्याक क्रिकेटी खातीर केल्ली गजाल म्हाका दिसता तुमकां खरेंच परबी फावो जाता. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता काकोडा बॉयसाचे ओनर नाल्यार को ओनर बबलू मातसो माचेर यो, माचेर यो. तशेंच थ्री ब्रदर्साचे उत्तेश नोरू वस्त मातसो माचेर यो बसका घेवपाक. सो फुडले सुवातेर मुखार या. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे जे ऑर्गनायझींग कमिटीचे वांगडी आसा तांकां रिक्वेस्ट करता आमचे जे मानेस्त आसा तांकां फुलांनी तांचो येवकार करचो. सगळ्यात पयलीं बाबूश हाजे लागीं रिक्वेस्ट करता तांणी माचेर येवन आमचे आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे बालकृष्ण अडरकर हांकां गुलाब दिवन तुरो दिवन तांचो भोवमान करचो. काय ना जो आयचे विनर्स आसात ओनर्स को ओनर्स रोहन आज पावलो ना नाल्यार आसता आशिल्लो. सो बबलूक दिवन ताजोय बी भोवमान करचो काकोडा बॉयसाच्या वतीन. आतां म्हाका दिसता आमचे जे मानेस्त आसा तांणी उलोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. हांव डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता टायमींग जाल्लो आसा. बालकृष्ण अडरकर हांणी ह्या वेळार उलोवप करचें. हांव रिक्वेस्ट करता बाबू भेंडे ह्या वेळार सगळ्यांक संबोधचें. सगळ्यांक गुड इवनिंग. येस, स्टारबक्स ऑफ कुर्चोरें हांणी हांव ऑर्गनायज केल्लो 3 दिसाचो टेनीस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट 2023. 3 दीस हो हांगा चालू आशिल्लो आमच्या ह्या SAG ग्रावंडार. 10 टिमी आयिल्ल्यो. एक्चुली हो टुर्नामेंट म्हाका दिसता घडोवन हाडपाक जवळ जवळ 2 ते 3 म्हयने अख्खे हे जे आमचे कमिटी आसा जाता आमची ते वांगडी आसा आमचो असलम तसोच ताजी जे वांगडी हांच्यांनी भरपूर मेहनत केल्ली आसा. मनसूर आसा. सो हो एक टुर्नामेंट घडोवन हाडप म्हळ्यार फकाणां न्ही, कित्याक ताका भरपूर मेहनत करची पडटा. तशेंच डोनर्सूय बी खूब जाय पडटा. आनी हांव सगळ्यांक जे डोनर्स तांणी ह्या टुर्नामेंटाक हातभार लायिल्लो आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज आमी फायनल पळयली आनी एक स्पोर्ट्स स्पिरीट जी आसा ती हांगा दाखयली, दोनूय टिमीन दाखयली. हांव दोनूय टिमीक सगळ्यांनी जोरान ताळयो मारच्यो. काकोडा बॉयज आनी आमचे थ्री ब्रदर्स सगळ्यांक जोरान ताळयो मारच्यो. ह्या टुर्नामेंटाक म्हजे बरोबर आसा एक्स चेअरपर्सन तसोच कावन्सिलर बालकृष्ण अडरकर, हर्षद गांवस, चंद्रशेखर काकोडकर, तशेंच नूरुबाब, तेश आनी बबलू हांकां आमी सगळ्यांनी जोरान ताळयो मारच्यो. कित्याक एक टीम घेवन फुडें वचप खूब डिफिकल्ट, कित्याक 3 दीस हो टुर्नामेंट चलतालो आनी आमी पळयताले. हांव पयरूं आशिल्लो इनॉग्रेशनाक आनी म्हाका आयजूय आपयलो म्हणून आमचे जे स्टार बॉयज क्रिकेटर आसा हांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.
तसोच हांव रिक्वेस्ट करता बालकृष्ण ऑर्डरकाराच्या दिसाचे मुखेल सोरे आणि ह्या वेळार सगळ्यांक आपली 2 उतरां सांगची. स्टार बॉयजान आयोजीत केल्ल्या आयच्या फायनलीक आमचे मदीं हाजीर आसात म्हजो इश्ट आनी कुडचडे काकोरा म्युनिसिपल हाजो कावन्सिलर बाब प्रसन्ना बेंडे, म्हजो इश्ट एडवोकेट हर्षद, आमचे बुजुर्ग बाब शेखर, ह्या सायडीन काकोडा बॉयसाचे ओनर बबलू, तशेंच थ्री ब्रदर्साचे ओनर उत्तेश आनी रोहन गांवस देसाई बी आज ना, आमचे आयलो ना, येवपा पावलो ना. आनी बाब नोरू हाका हांव इश्ट म्हणना, हो म्हजो भाव म्हणटा, कारण हाज्या आवयच्या हातान हांव ल्हानाचो व्हडलो जाला. सो हांव ताका सदांच म्हजो भाव म्हणटा. आनी तुमी सगळे क्रिकेट मोगी ऑर्गनायजर्स, अ वॉर्म वेलकम टू यू ऑल. तुमच्या कोतान आज कोण जिखले? म्हज्या कोतान आज क्रिकेट जिखली, म्हज्या कोतान आज कुडचडकार जिखले. कारण ज्या भशेन दोनूय टिमींनी काकोडकारांनी आनी कुडचडकारांनी ज्या भशेन क्रिकेटीक आपलो मोग दाखयलो, एक खंय तरी कॉम्प्लिकेशन जाल्लें. क्रिकेट ती खेळ तो जाताच कॉम्प्लिकेशन, पूण दोगांयनी एक अंडरस्टँडींग दाखोवन आमकां एक पळोवपाक 6 बॉलांची 12 बॉलांची आनी एक ओवर पळोवपाक मेजवानी जी दिली, ताका लागून तुमकां मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी सल्यूट तुमकां. हो ऑर्गनायज केलो टोर्नामेंट जे स्टार बॉयज एवरी इयर करता, वर्सान वर्स तो इल्लो इल्लो आपलो दर्जा वाडयत वता. ह्या फाटी एक म्हणटात की पंचपक्वान्न जी म्हणटात जेवता आसतना, पंचपक्वान म्हणटात ताजे वयर आनी बरें जेवण आसना, तशी ही क्रिकेट आमकां आज जी ताणें पळोवपाक दिली. कुडचड्या वेल्या काकोडेचेच न्ही, तर काकोडे कुडचड्याचे भायले केपें सांगे वाठारांतले आनी गोंयभरचे सगळे बरे प्लेयर जे आसा तांकां हाडून हांगा खेळोवन आमकां जी एक पळोवपाक मेजवानी दिली, ताका लागून सगळ्यांच्या वतीन हांव स्टार बॉयसाचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतले पर्यंत रावनाका, जाता जाल्यार फुडल्या वर्सा किंवा ताज्या फुडल्या वर्सा आमी इंडियेचे बी प्लेयर हांगा हाडून खेळोवपाचो प्रयत्न करया. सगळे एकवटान रावया, जसो तुमी आज एकवट दाखयलो, ताका लागून दोनूय टिमीच्या ओनर्सांक, कॅप्टन्सांक, प्लेयर्सांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें दाखोवन दिता आमकां आज की ज्या भशेन लास्ट बॉलाक 3 रन पयल्या इनिंगेक जाय आशिल्ले, त्याच भशेन सुपर ओवराकय लास्ट बॉलाक 3 रन जाय पडले. हाजेर दिसून येता की ज्या भशेन आमी शिगमो काकोडकार कुडचडकार एक बरोबर करता, त्या भशेन क्रिकेटीनूय बी हे सेम सिच्युएशन जालें. ताका लागून आमी कुडचडकार काकोडकार एक आशिल्ले आसात आनी हाजे मुखारय आसतले. इतलें सांगून हांव म्हजें देव बरें तुमकां 2 उतरां सोंपयता. देव बरें कर. गुड नायट. सुंदर उतरां बालकृष्ण ऑर्डरकाराची. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आतां फुडले सुवातेर आमच्या जाका जाणी जाणी हेल्प केल्लो आसा ह्या टुर्नामेंटाक, स्टार बॉयसाक दिसलें की सगळ्यांक एक यादस्तीक अशी भेटवण करची. सगळ्यांत पयलीं आपयता DJ कॅनी बाब, जाणें 3 दीस हांगा आपल्यालो सावंड सिस्टम, तांचो कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा जाल्यार ताणें मातशें माचयेर येवचें. आनी हांव जे माचयेर आसा तांकां रिक्वेस्ट करता एक गेस्टाक तांणी हे तांकां भेटोवचें. DJ कॅनी नाल्यार कॅनीचो कोण रिप्रेझेंटेटीव यो माचयेर यो. सो हांव रिक्वेस्ट करता कॅनी मातसो यो. हांव रिक्वेस्ट करता बबलू सावंत हाणें हे कॅनीक भेट करचें. सो फुडले सुवातेर आमकां जे हांगा 3 दीस सुंदरशें जेवण बांगडो आनी सुंगटाचें हुमण बी बरे तरेन दिल्ले तो बाब शेखर बाब फडते. हांव रिक्वेस्ट करता उत्तेश हाणें हे जी भेटवण आसा ती आमच्या शेखर बाबाक दिवची. शेखर बाब आसा जाल्यार, शेखर ना जाल्यार फुडल्या सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता आमचे जे प्रोफेशनल आज आउटफीट हांगा आशिल्ले अमानी इव्हेंट्स आनंद भद्री हाणें माचयेर येवचें आनी आपल्याले जो मोमेंटो आसा तो घेवचो. सो सगळे फोटोज जे आशिल्ले ते प्रोफेशनल रित्यान सोशल मिडियाचेर वताले. तशेंच सगळे जे मानेस्त आमकां आयिल्ले आमचो काबराल सर तशेंच आनी हेर मानेस्त तांकां फोटो दिवन तांचे यादस्तीक अशी भेटवण केल्ली अमानी इव्हेंट्स प्रोफेशनल. तुमकां जर तर जाय जाल्यार तुमी डेफिनेटली अमानी इव्हेंट्स हांकां कॉन्टेक्ट करपाक शकता.
फुडल्या सुवातेर जे लायव्ह कवरेज चालू आशिल्ली ती आशिल्ली AB25 आणि AB25चा रिप्रेझेंटेटिव्ह भरत तरकस जर आसा नाजाल्यार नितेश मातसो माचेर येवचें आणि ही घेवचे नरू वस्त हाजे कडल्यान. फुडल्या सुवातेर आमकां जो सुंदर रित्या स्कोरिंग करता आणि प्रत्येक कडेन स्कोरिंग करता तेजे हँडरायटींग क्लीन असो विराज बाब तेंडुलकर मातसो माचेर यो. रिक्वेस्ट करता बाबू बेंडे आणि ही भेटवण करची. तशेंच फुडले सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता हे जे आसा अंपायरा खातीर सगळ्यात पयलीं पुण्या पालकर माचेर यो आणि रिक्वेस्ट करता चंद्रशेखर काकोडकर हांणी हे पुण्या पालकराक भेट करचें यादस्तीक. फुडल्या सुवातेर अंपायर आमकां लाबिल्ले निलेश नायक हाका दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करता हर्षद गांवस देसाय. आणि लास्ट अंपायर सदगिरी नायक हाका रिक्वेस्ट करता मातशें माचेर येवचें आणि तुजी यादस्तीक भेटवण घेवची बाबा बालकृष्ण अडरकर हाजे कडल्यान. आणि म्हाका दिसता आमचो अशोक बाब नायक हांगा ना सो तो ऑलरेडी गेल्लो आसा. सो कॉमेंट्रीच्या हातून जर तर उरला जाल्यार हांव उरता. सो हांव म्हजी जी यादस्तीक आसा ती पिंटीच्या हातान घेता. आणि रिक्वेस्ट करता मातशें प्रायज सेरेमनी इमिजिएटली चालू करता. जे प्लेयर्स आसा तांणी मातशे म्हाजे कडेन लागीं येवचे. Now is time for the prize ceremony. So हांगा जे आशिल्ली ती खुबशी इनामां आशिल्ली. सुंदरशी ट्रॉफी आसा ह्या टुर्नामेंटाक. जे तुमी पळयल्ले आसा ती ट्रॉफी स्पॉन्सर केल्ल्यो आमच्या मानेस्तानी जो जावन आसा किशन सावंत. किशनान स्पॉन्सर किशना खातीर जोरान टाळयो जावनी. जे फर्स्ट आनी सेकंड प्रायज आशिल्ले ते किशनान दिल्ले. तशेंच मॅन ऑफ द सिरीज एक सुंदरशी ट्रॉफी आसा स्टार प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट ती स्पॉन्सर केल्ली आमचो म्हजो बरो इश्ट सिद्धेश बाब काणेकार जो जे लाकडाचे कार्विंग आसा ताज्या तो बरे एक इनामां दिता प्रायजीस दिता ते ताणें स्पॉन्सर केल्ले आनी ती ट्रॉफी एक वेगळीशी आसा. सो सिद्धेश काणेकाराकय बी म्हाका दिसता जर कॉन्टॅक्ट कोणाक जाय जाल्यार असली ट्रॉफी करपाक जाल्यार सिद्धेश काणेकाराक कॉन्टॅक्ट करचो. सुंदर ट्रॉफी. फुडल्या सुवातेर हांव प्रायजीसाक वळटा. मॅन ऑफ द फायनल माचेर जशें आसात तशेंच मानेस्तांक रिक्वेस्ट करता. हांव रिक्वेस्ट करता उत्तेश हाजे लागीं आणि हे इनाम दिवचें. मॅन ऑफ द फायनल वता पुणाजी कलंगुटकर. वंडरफुल इनिंग्स ऑफ 35 रन्स. That's the reason they posted a total of 84. मातशे बेगीन येयात. रिक्वेस्ट करता मातशे प्लेयर्स जे आसा ते माचेच्या लागीं रावात. फुडले सांगता फुडले जे आसा ते हायेस्ट सिक्सीस आनी म्हाका दिसता ते हायेस्ट सिक्सीसा लागीं सुद्दां कोण नाशिल्लो आनी एकच मनीस आशिल्लो जाणें हांगा गडगड घाल्लो असो प्लेयर. हांव रिक्वेस्ट करता बबलू सावंत श्रमेश सावंत हाणें हे फुडले इनाम दिवचें. आनी हायेस्ट सिक्सीस ऑफ द टुर्नामेंट वता विकास देसाय. वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वन ऑफ द बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ this tournament and from Curchorem area. Zabardast talent Vikas Desai and he deserves this applaud. Sixes म्हाका दिसता सगळ्या सायडीन मारिल्लो विकास देसायान जावं ती लेग सायड जावं ती ऑफ सायड आनी म्हाका दिसता मानेस्तांक दिसले तांणी एक सुंदरसो खेळ हांगा दाखयल्लो त्या खातीर तांणी उठून ताका मान दिल्लो आसा.
नेक्स्ट फुडले सुवातेर स्टार कमाल. हांव रिक्वेस्ट करता काकोडा बॉयज मातशे लागीं यात. प्लेयर्स काकोडा बॉयज मातशे लागीं यात. येस मातशे लागीं यात प्लीज. येस यू आर द विनर्स. तुमकां ट्रॉफी कडेन पयसुल्ल्यान येवपा जाय, लागींच्यान येवपा जाय. बेस्ट कॅच स्टार कमाल कॅच. एक सुंदरशी ट्रॉफी आसा स्टार कमाल कॅच आनी ताका कॅश प्रायजूय आसा. खुबश्यो बऱ्यो फिल्डिंग जाली ह्या टुर्नामेंटाक पूण जे ज्युरी आशिल्ले तांकां दिसलें की खंय तरी एक कॅच आयच्या दिसा इतली डिफिकल्ट आशिल्ली आनी ती कॅच इम्पॉसिबल शी दिसताली. किशन सावंत मातसो माचयेर यो तुका रावल्या. म्हजो गट इश्ट किशन सावंत जाणें ह्यो दोनूय ट्रॉफी स्पॉन्सर केल्ल्यो. मातसो लेट जालो पूण म्हाका दिसता तरी पूण टायमार पावलो. सो ही कॅच स्टार कमाल कॅच जी आसा हांव रिक्वेस्ट करता नोरू वस्त हाणें माचयेर येवचें आनी मुखार येवचें आनी स्टार कमाल कॅच वता संकेत मोरजकार. लॉंग ऑनाच्यान ऑलमोस्ट बॉलरा कडेन मिड ऑना कडेन वचून जी कॅच डिफिकल्ट दिसताली ती ताणें बरे रित्या धरली. एक्चुअली नॉर्मली तो विकेट किपर आनी विकेट किपराक सदांच भायर सायड फिल्डिंग करपाक तितलें इजी आसना तरी पूण ताणें ती डिफिकल्ट कॅच धरली. फुडले सुवातेर बेस्ट फिल्डर हांव रिक्वेस्ट करता बाबू भेंडे. हांव रिक्वेस्ट करता बाबू भेंडे बेस्ट फिल्डर. आनी इनाम बेस्ट फिल्डर वता आनी म्हाका दिसता बेस्ट फिल्डर ओवरऑल कितल्यो बाउंड्रीज आडयल्यो कितल्यो कॅची धरल्यो सो ओवरऑल हिशोब काडिल्लो त्या प्रमाणे खरेंच बरो फिल्डर बाय फार रेटिंगा भितर चड फुडें आशिल्लो असो सोमेश डोडामनी. सोमेश डोडामनी इज द बेस्ट फिल्डर ऑफ दीस टुर्नामेंट. Now is time for star wicket keeper. हांव रिक्वेस्ट करता चंद्रशेखर काकोडकर हांणी हें भेटोवचें. स्टार विकेट किपर वता एकच आशिल्लो. आमी खूब विकेट किपर कन्सिडर केले पूण जाचे खरें ताणें कॅची धरल्यो आनी विकेटी फाटल्यातल्यान रनआउट केले असो म्हणटा तो विकास देसाय. विकास देसाय होता बेस्ट विकेट किपर. ताणें कॅप्टन्सी केल्ली आनी जसो MS धोनी करता विकेटी फाटल्यान त्याच रित्या ताणें कॅच्योय धरल्यो आनी कॅप्टन्सी बरी केली पूण विकेट किपिंगा खातीर ताणें ताका हें प्रायज फावो जाता. फुडल्या सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता किशन सावंत हाणें हें इनाम दिवचें. हें जावन आसा बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट आनी म्हाका दिसना की जे आमी प्रायज आतां सांगतात त्या प्रायजाक लागीं सुद्दां कोण आशिल्लो आनी सगळे जे हांगा क्रिकेट सपोर्टर्स आशिल्ले तांणी एक इतली बरी बॉलिंग पळयली की प्रत्येकाक दिसलें की ह्या भुरग्याक खरेंच इतलो टॅलंट आसा आनी पयसुल्ल्यान आयलो पूण ते प्रायज तो घेवन वतलो. डिस्टन्स खूब आसा तशें तो कितल्या डिस्टन्साचेर फास्ट पेस मारपाक शकता. सगळ्यांक ताणें भारावन उडयल्लो असो बॉलर म्हणटा तो गौरेश नागवेकर. घुंगरू ताका म्हणटात. घुंगरू यो आनी माचयेर तुजे बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट एवॉर्ड घेवन वच. तशेंच बेस्ट स्टार बॅट्समॅन हांव रिक्वेस्ट करता हर्षद गांवस देसाय हाणें हें फुडलें इनाम भेटोवचें. आनी स्टार बॅट्समॅन तुमकां खबर आसा की 3-4 बॅट्समॅनांनी ऑलरेडी 100 क्रॉस केल्ले ह्या टुर्नामेंटाक. बरे कन्सिस्टन्स जर पळयले जाल्यार एक बऱ्यांतलो बरो प्लेयर नामनेचो प्लेयर जाणें कन्सिस्टंटली बरें परफॉर्म करून आपल्या टिमीक फायनली पावयलें आनी फायनलीक जैत मेळयलें. 2-3 नांवां कन्सिडर आशिल्लीं पूण म्हाका दिसता हो प्लेयर ह्या रित्यान सिलेक्ट केल्या कारण ताजो इम्पॅक्टफूल इनिंग्स आशिल्ल्यो स्टार्ट दिल्ली बरी आनी त्या खातीर फायनलीक ते टीम पाविल्ले आनी ते प्रायज वता पुणाजी कलंगूटकार.
Punaji Kalangudkar is with the best batsman award. फायनलीक सुद्धा जबरदस्त परफॉर्मन्स केले पुणाजीन 35 रन्स काढले ओवरऑल कन्सिस्टंटली ताणें रन काडिल्ले काकोडा बॉयज म्हणून म्हाका दिसता काकोडा बॉयसाची स्टार्ट मेळटाली त्या स्टार्टाचेर ते मागीर फुडें वताले आनी ते फुडार वचून ते चॅम्पियन जाले ह्या स्टार बॉयज चॅम्पियनशिपाक. Now it's time for star player of the tournament. सो स्टार प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट जर आमी काडटा जाल्यार खुबशे कॅल्क्युलेशन्स आशिल्लीं आनी त्या प्रमाणे ऑर्गनायझींग कमिटी आनी सगळ्यांनी डिसायड केलां की जर कोणी डिजर्व करता जे इम्पॅक्टफूल सिंगल हँडेडली टॉप क्लास बॅटींग आनी डिस्प्ले केल्लो ज्या रित्यान बरो खेळ केल्लो आनी सगळ्यांक म्हाका दिसता भारावन उडयल्ले त्या बॅटींग स्किल्सान. हाज्या पयलीं आमी ती बॅटींग पळयल्ली आशिल्ली आनी आज सुद्दां परत एकदां ताजें दर्जेदार प्रदर्शन घडलें. तशेंच उत्कृश्ट कॅप्टनशी बी केल्ली आनी म्हाका दिसता सगळ्या डिसायड करतले सगळ्यांक मानतले की विकास देसाय इज द प्लेयर ऑफ द सिरीज. विकास देसाय जाका सगळे मानान भाऊ म्हणटात तो प्लेयर ऑफ द सिरीज आनी ही डिजर्व्स दीस. आनी म्हाका दिसता सगळे माचेर बशिल्ले मानेस्तांकय हें पडटलें की हे प्लेयर ऑफ द सिरीज ताकाच फावो जाता कारण एक मनशान सिंगल हँडेडली खूब फुडें व्हेलें आपल्या टिमीक. बालकृष्ण ओडरकर दितलो पूण बाकीचे मानेस्त मागीर ताका फाटल्यान आसतले. सो विकास देसाय इज द प्लेयर ऑफ द सिरीज. सुंदरची ट्रॉफी जी सिद्धेश काणेकरान स्पॉन्सर केली कॅश प्रायज आसा त्या हाका. तशेंच बालकृष्ण ओडारकर हाणें जी सुपर ओवर जाताली ताच्या पयलीं एक प्रायज घोशीत केल्लें तें म्हणटा ते बेस्ट सपोर्टर्स. म्हणल्यार बेस्ट सपोर्टर्स कशे कोण जे हरता तांच्या सपोर्टरांच ही ट्रॉफी वतली अशें घोशीत केल्लें आनी म्हाका दिसता रनर्स अप जे जाल्ले आसा ते 3 ब्रदर्स म्हणून तांच्या सपोर्टर्सांक ही ट्रॉफी फावो जाता. हांव रिक्वेस्ट करता बालकृष्ण ओडारकर हाणेंच हे ट्रॉफी आसा ती तांकां भेटोवन करची. समीर बाबा वस्त माचेर येता. बाबू भेंडो दितलो. पिंटीक रिक्वेस्ट आसा दिवपाक. आतां म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट करता विकास देसाय विकास भाऊ माचेर यो आनी रनर्स अप जी ट्रॉफी आसा ती पयली कॅप्टन येवन मागीर म्हाका दिसता टीम येवची. सो हांव रिक्वेस्ट करता मानेस्तान सेमीस उरल्या ताच्या पयलीं सेमीस उरल्या आनी आमच्या 25,000 हे कॅश प्रायज सेमीस अशें न्ही तें. सो क्रिस बॉयसाचे कोण आसा जाल्यार मातसो माचेर येवचो आनी हे जे 4th प्लेस आसा दोनी हाका 25,000 अशेंच इनाम आशिल्लें 4th प्लेस आनी 3rd प्लेस. 4th प्लेस क्रिस बॉयस एनी वन देर कोणी आसा क्रिस बॉयसाचो जाल्यार मातसो माचेर यो. आसा अर्जून. सो अर्जून आसा अर्जून कलेक्ट करतलो. आदेश सो हांव रिक्वेस्ट करता मानेस्तान हर्षद बाबान हे इनाम दिवचें. तशेंच आसिया क्रिकेटर्स हांकां रिक्वेस्ट करता 3rd प्लेस येवन कलेक्ट कर. ओके आसिया क्रिकेटर्स म्हणटा ते घरचे घरा उरला. सो आतां हांव विकास भाऊ तुका रिक्वेस्ट करता पयलीं कॅप्टन येतलो तेच म्हणलें हांवें असलम ते दिल्यार बरें न्ही. सो तूच कलेक्ट कर. यू आर द ओनर ऑफ आसिया क्रिकेटर्स. तशेंच आनी एक इनाम घोशीत केल्लें समीर वस्तान जेन्ना एक मॅच जिखयली अनिकेत त्रिवणकर ताणें 5,000चे इनाम घोशीत केल्लें ताका आनी ते 5,000 खातीर हांव रिक्वेस्ट करता अनिकेत त्रिवणकराक बॅग म्हणटा सो बॅग रिक्वेस्ट करता मातशें माचेर येवचें आनी ते प्रायज आपल्याले घेवन वचचें. रिक्वेस्ट करता किशन सावंत हाणें हें इनाम ताका दिवचें.
हांव रिक्वेस्ट करता कॅप्टन आनी ओनर आणि येवन पयलीं हे रनर्स अप प्रायज घेवचें ताच्या पयलीं आमी हे जे इनाम आसा ते अनिकेत रेवणकाराक दितलो बाबा किशन सावंत. सो किशनाक रिक्वेस्ट करता हे प्रायज दिवचे अनिकेत रेवणकर. आणि फुडल्या सुवातेर रनर्स अप विकास देसाय माचेर यो तसोच ओनर माचेर येवन पयलीं ओनर आणि जो कॅप्टन आसा ताणी कलेक्ट करचें. आणि जी ट्रॉफी आसा रनर्स अपाची ट्रॉफी So congratulations to three brothers. They are the runners up of आता प्लेयर्स मातशे येयात. प्लेयर्स मातशे बेगीन येयात आनी ते माचयेर सकयल बसपाक मेळटा थंय रावात. मातशे बेगीन येयात. तशेंच हांव काकोडा बॉयज प्लेयर्स आनी ओनर मातशे रिक्वेस्ट करता मातशे लागीं येयात माचयेच्या. कॅप्टन विकी तशेंच बाकीचे प्लेयर्स मातशे माचयेच्या लागीं येयात. सो थ्री ब्रदर्साक परबी स्टार ब्रदर्स चॅम्पियन्स जी ट्रॉफी जाल्ली ताचेर रनर्स अपाचें इनाम फावो जालां थ्री ब्रदर्स ह्या टिमीक. सो आतां कॉंग्रॅच्युलेशन्स थ्री ब्रदर्स देर ओनर्स. ना आतां जिखता चॅम्पियन्स काकोडा बॉयज. रिक्वेस्टिंग कॅप्टन विकी नायक टू प्लीज कम फर्स्ट. विकी नायक आनी ओनर बबलू आसा मातसो मुखार यो. हर्षदान घे म्हणला बबलू. सो हर्षद गांवस देसाय आनी विकी नायक हे प्रायज घेतले. सावंत रोहन गांवस देसाय
आणि ताजी टीम सगळ्यांक परबी गुड नाईट शुभरात्री शब्बा खैर. माझो टाइम जालो. देव तुमकां सगळ्यांक बरी रात दिवं.